निकल हो गया चलिए निकल नहीं। आज देखिए कैसे हम कैपेसिटेंस को इक्विवेलेंट फॉर्म में निकालेंगे। जैसे आपने स्कूल ड्रेस पहने रख देंगे। कैपेसिटेंस आज हम बात करेंगे कैपेसिटेंस इन द फॉर्म ऑफ सीरीज एंड इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल। जैसे कि आपने क्लास टेस्ट में पढ़ा था रेजिस्टेंस को आपने सीरीज में डिफाइन किया था और पैरेलल में डिफाइन किया था। यहाँ आप ध्यान से लिखिएगा। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे और इस डायग्राम को एक बैटरी में जोड़ देंगे। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एंड बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल आपको V सपोज करना है और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल आपको 0 सपोज करना है। इसके बाद आपको अलग अलग टाइप के मटेरियल लेने हैं। अब ये बॉडी आपकी पूरी आइसोलेटेड होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कैपेसिटर जो बताया है कि अगर हम एक बॉडी का चार्ज पॉजिटिव क्यू ले लेते हैं तो इसके सामने वाली बॉडी का चार्ज अपने आप माइनस क्यू हो जाता है। तभी इसके बीच की एनर्जी क्या होगी? बाउंडेड होगी, अदरवाइज बाउंडेड नहीं होगी। इसके बाद में अगर कोई दूसरा मेटल लेकर कपड़े लगाते हैं तो ये आइसोलेटेड बॉडी बननी चाहिए। ये आइसोलेटेड बॉडी अलग हो जाएगी और ये आइसोलेटेड बॉडी अलग। अब अगर इसमें माइनस चार्ज है तो इस पे अपने आप क्या लगेगा? अगेन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके बाद में एक प्लेट आप जैसे ही यहाँ लगाएंगे इसके पास माइनस क्यू चार्ज। इन दोनों का टोटल चार्ज कितना है? 0। इन दोनों का टोटल चार्ज कितना है? 0। और इन दोनों का भी टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर इसके बाद हम एक और मेटल लगा देते हैं यहाँ पर, यहाँ पर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आपको इस बॉडी को बैटरी से ऐड कर देना। अब आपको ध्यान से देखना है कि इस बैटरी से चार्ज की ट्रांसफर, अब चार्ज क्यू अगर ट्रांसफर हो रहा है तो इस पूरे सीरीज सिस्टम में आपको टोटल चार्ज यहाँ पर भी क्यू मिलेगा, यहाँ पर भी क्यू मिलेगा और टोटल चार्ज यहाँ पर भी क्यू मिलेगा। और ओवरऑल दोनों बॉडी का चार्ज कितना है? 0। इस बॉडी और इस बॉडी का टोटल चार्ज कितना है? 0। यहाँ का चार्ज कितना है? 0। यहाँ का चार्ज कितना है? 0। अब इस सीरीज सिस्टम में टोटल चार्ज आपको क्यू ट्रांसफर होता हुआ दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर आपका पोटेंशियल सेम नहीं होगा। आपको सबसे पहले यहाँ लिख लेना है चार्ज क्यू आपका फर्स्ट बॉडी, सेकंड बॉडी एंड थर्ड बॉडी तीनों में क्या है आपका? सेम। बट ये जो आपको पोटेंशियल है, जैसे ही ये बॉडी फर्स्ट के पास जाएगा इसका पोटेंशियल ये यूज कर देगा और उसका पोटेंशियल कुछ डिक्रीज कर जाएगा। फिर जैसे ही सेकंड बॉडी के पास जाएगा कुछ पोटेंशियल ये यूज कर देगा और जैसे ही यही पोटेंशियल फिर आगे जाएगा तो पहले पहली बॉडी ने यूज किया, फिर दूसरी बॉडी ने यूज किया, फिर तीसरी बॉडी यूज करेगी और ओवरऑल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप 0 लिख सकते हैं और यहाँ पर भी आप पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल हमेशा हायर से लोअर लेवल की ओर ट्रैवल करेगा। यानी ये आपका हायर सर्किट है और ये आपका लोअर सर्किट है। तो यहाँ से आपका पोटेंशियल ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा और घूमते घूमते आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पोटेंशियल का जो रेशियो है वो V1 रेशियो V2 रेशियो V3 के फॉर्म में है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं आपका पोटेंशियल क्या है बेटा? यहाँ डिफरेंट है। सभी बॉडीज में आपका पोटेंशियल डिफरेंट है। जब आप समझ आएगी आप चार्ज यहाँ पर भी क्यू लेंगे, चार्ज यहाँ पर भी क्यू लेंगे, चार्ज यहाँ पर भी क्यू लेंगे। अब आपको इस बॉडी के कंपैरिजन में एक दूसरी बॉडी ऐसी बनानी है जिस पर चार्ज क्यू हो, ओवरऑल चार्ज, और जिसका टोटल पोटेंशियल V हो और टोटल कैपेसिटी इन तीनों की कैपेसिटी के बराबर हो। तो अभी हमने कैपेसिटी की बात की नहीं है। चार्ज इसके पास क्यू, इसके पास क्यू, इसके पास क्यू और पोटेंशियल V1 रेशियो V2 रेशियो V3। अब ये बॉडी अलग है तो इसकी कैपेसिटी हमने मान लिया C1, ये बॉडी अलग है तो इसकी कैपेसिटी C2 मान लिया और ये बॉडी अलग है तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? C3 हो जाएगी। अब आपका जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है वो है C = Q/V। तो देखिए यहाँ से आपको रिजल्ट मिल रहा है C प्रोपोर्शनल 1/V। यानी कि अगर पोटेंशियल का रेशियो V1 रेशियो V2 रेशियो V3 होगा तो आपके कैपेसिटेंस का रेशियो क्या हो जाएगा? 1/C1
रेशियो 1/C2 रेशियो 1/C3। जस्ट इसके अगर V हमारा ऊपर है तो C क्या है नीचे, तो पोटेंशियल का रेशियो V1 रेशियो V2 रेशियो V3 बनेगा और कैपेसिटेंस का रेशियो क्या बनेगा 1/C1 1/C2 1/C3। अब इसी को हमें प्रूव करना है, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, आप एक बॉडी अलग से बना लीजिए, इसको भी पोटेंशियल सेम दे दीजिए, जहाँ आपका पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल। अब आप यहाँ पर एक नया कैपेसिटेंस लगाइए जिसकी कैपेसिटी इन तीनों मटेरियल की कैपेसिटी के बराबर हो, यानी कि C1 C2 C3 इन तीनों की कैपेसिटी को अगर हम ऐड कर दें तो इस बॉडी की कैपेसिटी के बराबर हो जाए। यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज क्यू और इसके पास नेगेटिव चार्ज। अब आपको यहाँ पर पोटेंशियल भी लिखना है और यहाँ पोटेंशियल जीरो, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ जीरो, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल अभी यूज नहीं हुआ। जैसे यहाँ हमने लिखा पोटेंशियल भी, तो अभी भी हमारा पोटेंशियल अनयूज है। जब ये पहली बॉडी में जाएगा तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी V1, जब दूसरी बॉडी में जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी V2, और जब यही पोटेंशियल तीसरी बॉडी में जाएगा तो V3 यूज हो जाएगा और बाद में पोटेंशियल क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो आपको इसकी कैपेसिटी को शो करना है C। अब इसके पास भी टोटल चार्ज लिखना है बेटा Q है, टोटल चार्ज इसके पास भी Q, टोटल चार्ज इसमें भी Q ही फ्लो कर रहा है और टोटल पोटेंशियल इसका भी क्या है V, और इसका इक्विवेलेंट इसको हम लिखेंगे CE, यानी कि ये जो कैपेसिटेंस है वो इन तीनों कैपेसिटेंस के इक्विवेलेंट है। अब ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर आपके पोटेंशियल का रेशियो क्या है V1 V2 V3। तो अगर हम कहें कि इन तीनों पोटेंशियल की वैल्यू किसके बराबर है V के बराबर है, तो हम यहाँ यही तो लिखेंगे V इज इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ध्यान से देखिए अपना फॉर्मूला C इज इक्वल Q अपॉन V। अगर हम ये फॉर्मूला इसके लिए बनाए तो हमारा C इक्विवेलेंट क्या बनेगा CE इज इक्वल Q अपॉन V बनेगा। बात समझ में आई। अब अगर V1 के लिए बनाए तो V1 के लिए क्या बनेगा, यहाँ से देखिए V1 ऊपर जाएगा और C1 कैपेसिटी नीचे आएगी, तो यहाँ लिख लेंगे हम V1 इज इक्वल Q अपॉन C1। V2 के लिए लिखेंगे तो V2 इज इक्वल Q अपॉन C2। V3 के लिए लिखेंगे V3 इज इक्वल Q अपॉन C3। इन तीनों की वैल्यू उठा करके आपको कर दीजिए और B की वैल्यू को यहाँ से आपको लेना है, तो B की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से B इज इक्वल Q अपॉन CE। ये आपका C क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इन तीनों बॉडीज का। यहाँ पे आप लिखिए Q अपॉन CE इज इक्वल, यानी कि आप Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। अब हमने आपके सामने तीन बॉडी ली है, इसलिए हमने Q अपॉन CE इज इक्वल Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 लिखा है। हमारा जो पोटेंशियल है वो भी तीन रेशियो में है, V इज इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर हमारी बॉडी की नंबर्स पड़ जाती यानी हम 4 टर्म में लेते 5 टर्म में लेते या n टर्म में लेते, तो ये फार्मूला n टर्म के लिए भी सेम एज इट इज वर्क करेगा और इनको कॉमन ले सकते हैं चार्ज को। यहाँ लिखेंगे Q इज इक्वल CE इज इक्वल Q कॉमन आया ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q Q आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ओवरऑल फॉर्मूला क्या बन गया, आपका ओवरऑल फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन CE इज इक्वल 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये आपको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देना। ये आपका C इक्विवेलेंट फॉर्मूला बन गया किसके लिए सीरीज के लिए। यहाँ हमने जो फॉर्मूला अभी पढ़ा है वो किसके लिए पढ़ा है सीरीज के लिए, जो हमारे सारे कैपेसिटेंस सीरीज में ऐड किए जाएंगे और जब हम उनको पैरेलल में ऐड करेंगे तो उसका फॉर्मूला अलग बनेगा। अब आप ध्यान से इस फॉर्मूले को देखिए, क्लास 10th में जो आपने रेजिस्टेंस पढ़ा था ये उसका रेसिप्रोकल है। आपका सीरीज में जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा R इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 Rn तक, लेकिन जो कैपेसिटेंस होता है वो उसका जस्ट अपोजिट होता है। कैपेसिटेंस क्या आएगा 1/CE इज इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बात समझ आई, आ जाएगा ओके।
समझ गया क्या? सीरियस कर पीछे बता आपको बोलोगे अब हम इसी तरह का एक और डेरिवेशन फाइंड करेंगे पैरेलल। तो अपने कैपेसिटेंस को पैरेलल फॉर्म में ऐड करेंगे। आपको सबसे पहले एक बैटरी लेनी है और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बना देना है, उसके बाद निगेटिव टर्मिनल बना देना। इसका पोटेंशियल आपका V हो जाएगा और निगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट्स को अभी ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि इसका पोटेंशियल हमने V क्यों लिखा है, इसका पोटेंशियल हमने 0 क्यों लिखा है। हमने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं और आपको एक पॉइंट को ये मानना पड़ेगा या दूसरे पॉइंट को इनफाइनाइट मानना पड़ेगा, तो आप इस चार्ज को ए से इनफाइनाइट तो ट्रैवल करा सकते हैं, बट इनफाइनाइट से ए ट्रैवल नहीं करा सकते। तो इनफाइनाइट का पोटेंशियल आपने क्या सपोज किया था, जंक्शन 0 सपोज किया था। तो आप अगर इस चार्ज को इधर से इधर ले जा रहे हो तब तो पॉसिबल है, बट आप इस चार्ज को इधर से इधर नहीं ला सकते, इसलिए आपने दूसरे टर्मिनल का पोटेंशियल क्या सपोज किया है, 0 सपोज किया। बात समझ में आई? आपकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होगी, बट आपको एक पॉइंट इनफाइनाइट सपोज करके चलना है। आपने जो पोटेंशियल की डिफिनीशन पढ़ी है, आप एक ही डायरेक्शन से जा सकते हैं, इनफाइनाइट से आप किसी भी चार्ज को ट्रैवल करा के नहीं ला सकते, इसलिए आपको नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल क्या सपोज करना है, 0। क्यों? क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल आपके लिए कैसा बिहेव करेगा, V इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगा। समझ आई? इसलिए आपको इसको पॉजिटिव मानना है, इसको नेगेटिव, और इसका पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल 0। जैसे हम लिखे VA माइनस VB, तो B पॉइंट आपका इनफाइनाइट पर है, तो इनफाइनाइट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है। आपकी ये वायर ऐसे लग जाएगी। अब इस बार आपको पैरेलल में ऐड करना है, वायर को आपने आगे बढ़ाया, यहीं से आपने एक कैपेसिटेंस ऊपर लगा दिया, दूसरा कैपेसिटेंस आपने बीच में लगा दिया, और तीसरा कैपेसिटेंस आपने फिर यहाँ लगा दिया। वायर को आपको कनेक्ट करना है, ये वायर यहाँ से ऐड हो जाएगा, ये वायर इससे ऐड हो जाएगा, और ये वायर इससे ऐड हो जाएगा। ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर पोटेंशियल V लिखते हैं और यहाँ पर पोटेंशियल 0 लिखते हैं। अब इन तीनों कैपेसिटर को, फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर और थर्ड कैपेसिटर, तीनों कैपेसिटर को पोटेंशियल क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। पर यहाँ से आने वाला जो चार्ज है, अगर हम चार्ज को क्यों माने, यहाँ पर एज इट इज रहेगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव। नीचे वाले टर्मिनल में भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। ओवरऑल इन प्लेट से बीच का चार्ज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इनके बीच एनर्जी बाउंडेड होनी चाहिए, तभी आपका आइसोलेटेड सिस्टम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब आपने इन तीनों को सेम चार्ज दिया। अब जैसे ही चार्ज यहाँ पर आएगा, ये क्यू चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसमें से थोड़ा सा चार्ज Q1 इसके पास चला जाएगा, थोड़ा सा चार्ज इसके पास चला जाएगा, और थोड़ा सा चार्ज इसके पास चला जाएगा। यानी कि इस बार पैरेलल सिस्टम में आपका जो चार्ज है वो Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 के फॉर्म में, वहां सीरीज फॉर्म में आपका पोटेंशियल क्या था, V1 रेशियो V2 रेशियो V3 था। अब आपका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, Q बराबर CV। कहां से, आपका जो रियल फॉर्मूला है वो C इज इक्वल क्या है, Q बाई V है। या आप इसको कैपिटल लेटर पर लिख सकते हो चार्ज को, क्योंकि आपने डायग्राम में कैपिटल लेटर लिखा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं C इज इक्वल Q अपॉन V। एज इट इज यहाँ पर भी लिख सकते हैं Q इज इक्वल CV। तो देखिए हमने इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट किया, V का मल्टीप्लाई ऊपर करा दिया, तो Q इज इक्वल क्या बन जाएगा, CV। अब अगर हम पोटेंशियल हमारा सबको सेम मिल रहा है, तो पोटेंशियल हमारा ये कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ से रिजल्ट क्या आया, Q प्रोपोर्शनल C, यानी कि हमारे लिए कैपेसिटेंस का रेशियो भी एज इट इज होगा, C1 रेशियो C2 रेशियो C3। समझ में आई? अब इसी के कैपेसिटी के बराबर जितनी कैपेसिटी इन तीनों की होगी, उतनी ही कैपेसिटी का आपको एक नया डायग्राम बनाना है, यानी कि इसकी कैपेसिटी C इन तीनों की कैपेसिटी के बराबर होनी चाहिए। और जितना पोटेंशियल आपने यहाँ दिया है
उतना ही पोटेंशियल आपको इस डायग्राम को देना है, और जितना चार्ज आप यहाँ दे रहे हैं उतना ही चार्ज आपको यहाँ देना है। तो अगर हम यहाँ सीई के फॉर्म में फॉर्मूला लिखे हैं तो हमारा Q इज इक्वल फॉर्मूला क्या बनेगा, सीई इंटू वी, यही बनेगा। और अगर हम टोटल चार्ज की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है Q1 Q2 और Q3 के रेशियो में, तो अगर हम ओवरऑल चार्ज निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, Q इज इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q की प्लेस क्या लिखोगे, सीई इंटू वी, ये बन जाएगा सीई। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है आपको, तो यहाँ पे आपने इस फॉर्मूले से इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सीई वी लिख दिया, और Q1 इसके अकॉर्डिंग यहाँ के डायग्राम से यहाँ पे Q1 की वैल्यू क्या आएगी, C1 V, क्योंकि आपका पोटेंशियल तीनों के लिए क्या है, सेम है। फिर दूसरे वाले के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा C2 V, तीसरा डायग्राम है C3 V, तो आप इन तीनों की वैल्यू यहाँ शो कर देंगे। Q1 इज इक्वल C1V, Q2 is equal C2V and Q3 is equal C3V। इस बार कॉमन क्या आएगा बेटा, पोटेंशियल कॉमन आएगा, तो आप यहाँ लिखेंगे CEV is equal V ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल हो जाएगा, आपका C इक्विवेलेंट आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3, और आप ये फॉर्मूला एंड टर्म के लिए भी यूज कर सकते हैं। सपोज दैट अगर हम एंड टर्म तक पैरेलल फॉर्म में कैपेसिटेंस को ऐड करते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनता है CE इज इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 डेल्टा गैस प्लस CN तक। तो ये देखिए, अब ये रेजिस्टेंस में जब हमने पैरेलल को कैपेसिटेंस में ऐड किया तो क्या आता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, लेकिन यहाँ पैरेलल में क्या आ रहा है, CE इज इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3 आ रहा है। आपको न्यूमेरिकल लगाते समय ध्यान देना है, न्यूमेरिकल लगाते समय आप ध्यान क्या देंगे बेटा, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में आपके पास दो ही कैपेसिटेंस होंगे, तो जब आपके पास सिर्फ दो कैपेसिटेंस हो तब हम फॉर्मूला क्या बनाएंगे, आपको हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके न्यूमेरिकल लगाते समय टाइम को बचाया जा सके, क्योंकि ज्यादातर आपके कई सारे कैपेसिटेंस नहीं होंगे, सिर्फ कितने कैपेसिटेंस लगे होंगे, दो कैपेसिटेंस लगे होंगे, तो आपका जो इक्विवेलेंट आएगा आप उसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 1/CE इज इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2, एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 1/CE इज इक्वल एलसीएम आपका आएगा C1 इंटू C2, C1 से C1 कैंसिल, ऊपर क्या आ गया C2 से C2 कैंसिल, ऊपर क्या आएगा C1। अगर हम इस पूरे को रिवर्स करके लिखते हैं तो CE इज इक्वल C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। आपके पास अगर दो कैपेसिटेंस है आप अब इससे भी इजी बनाया जा सकता है। मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ गया जिसमें C1 और C2 दोनों की वैल्यू सेम है, तब आप क्या करोगे, तब आपका सवाल एक सेकंड में लग जाएगा। अगर आपके पास सिर्फ दो कैपेसिटेंस है और आपके दोनों कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, सेम है, तो जरा ध्यान से देखो इस फॉर्मूले में, अगर हम CE इज इक्वल C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 लिखे, अब अगर हमारे दोनों कैपेसिटेंस सेम है तो हम लिख सकते हैं C1 इज इक्वल C2 इज इक्वल C, तो अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो C के बराबर। अब ये जहां आपने C1 C2 लिखा है इसकी प्लेस में आप क्या लिखिए, C लिखिए, ये बन जाएगा CE इज इक्वल क्या जाएगा, C इंटू C अपॉन C प्लस C, CE इज इक्वल C स्क्वायर अपॉन 2C, C से C कट गया, C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C/2। आपको सवाल हल ही नहीं करना है, C/2 जितना आपका कैपेसिटेंस दिया है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए आंसर, और अगर आपके दो अलग अलग कैपेसिटेंस है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, CE इज इक्वल C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। क्या समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम इसमें, ओके।
Let's work out some numericals on electric potential due to dipoles. So here's the first one. We are given a dipole, there's a point dipole, tiny dipole, whose moment is given to be 3 times 10 to the minus 8 coulomb meter. This is not centimeter, this is coulomb meter. And we are asked to calculate what the potential is going to be at distance of 2 meters from that dipole along the axis. So how do we do this? Well, in a previous video, we already derived what the expression for the potential due to a dipole anywhere is. So let me quickly show you that. We saw that if you have a dipole, let's say there's a negative charge, there's a positive charge, separated by some distance we used to call 2a. And if you want to know what the potential at some point P at a distance r from the center of the dipole, then we saw that that expression is going to be k q into 2a cos theta, where theta is this angle, theta, divided by r squared. And how did we derive that? Well, we calculate what the potential here is going to be due to this charge, potential here is going to be due to this charge. We added them, and then we did some mathematics where we said, okay, let's assume that P is to be very, very far away. And if you need some clarity or you need a refresher on how did we derive that, where does it all come from, it'd be a great idea to pause this video. It'll be a great idea to go back and watch our video on the derivation of electric potential due to dipoles. But anyways, let's continue. What's given to us is we're not given q, we're not given the distance, we're given the dipole moment, and we're given some vector. What is that? Well, remember that this product itself is what we call this product of charge and the distance. That itself is what we call the dipole moment, which we represent as P. And what does that direction say? The dipole moment is taken to be a vector, and its direction is always from the negative charge to the positive charge. So this is your negative charge, this has got to be your positive charge. So over here, dipole moment is this way. Okay? And so, to think about that angle, the theta is the angle between the dipole moment vector and the vector that points towards P. The r vector and the dipole moment vector. That's our angle. Alright, so why don't you pause the video and see with this now, can you go ahead and solve this particular problem? Alright, so let's do this. So what is k? K is that familiar 1 over 4 pi epsilon naught, whose value is 9 times 10 to the power 9. And I don't know the charge or 2a, but I know the total product, that's dipole moment. That's given to me as 3 times 10 to the power minus 8. And what is cos theta over here? What is theta? Well, theta is this angle. In our case, notice, if I were to draw that vector from here to here, that angle is 0. The two are aligned, so cos 0, so right there, cos 0 divided by r square. R is this distance, 2 meters. So 2 square is 4. It's in meters, so I don't have to do any conversion. And therefore, all I have to do now is solve this. So I get cos 0 is 1. So this will be 27. This will be 10 divided by 4. So that's 270 by 4. That gives me 4 6 are 24, 3 carries 30, 4 7s are 28, 2.5. And there you have it. 67.5 volt. That's the potential here. We're getting a positive sign. Does that make sense that it's positive? Yeah, because the point is closer to the positive charge and a little farther away from the negative charge, so it makes sense that we're getting a positive voltage. Let's try a second one. Again, we're given dipole. This time we have charges given, the distance between the dipole is given. We have to find the potential at point P at a distance 10 meters from the dipole. And again, notice that this is a point dipole. This distance is much smaller compared to this, so we can use the far away approximation, the same thing that we did here. So again, can you pause the video and try solving this one on your own? Alright, let's do this. So we'll just substitute this value. So you get Vp is equal to K is 1 pi 4 pi epsilon naught, that's 9 times 10 to the power 9. Q is the charge that's given, and remember, we just have to calculate,
put in the magnitude of the charge. The sign is already baked in when we derive the formula. So just the magnitude. So 3 times 10 to the power minus 6. Minus 6 because it's a micro. Micro is 10 to the minus 6. And times 2a. Now, one of the mistakes I used to make while substituting over here is 2a, I used to put 2 times, say, 1 millimeter, but it's not. This itself is 2a. Remember, 2a is the distance between the two charges, okay? So 1 millimeter itself is my 2a. So it's 1, and a milli is 10 to the minus 3. So let's take care of our, 10 powers. Times cos theta. What is cos theta? Well, there's a 60, so we might write cos 60. That's wrong. It's not cos 60. Can you pause and think a little bit about why it's not cos 60? All right, let's see. What is theta again? Remember, theta is the angle between the dipole moment vector, which starts from negative charge to the positive charge, and the r vector. So over here, what is our dipole moment vector? So dipole moment vector is from negative charge to the positive charge. It's downwards, this way. This is our dipole moment vector, and our r vector is this way, towards p. And so note the angle theta is this angle. And that's not 60. The whole angle is 180, so this is 180 minus 60. So that's our theta, 180 minus 60. So let's correct that. So that gives us 180. I can just write 120, but I like to calculate this way using our what do you call it? LR angles? Yeah, LR angles. I think that's the term. But anyways, so divided by r square. What is r? R is 10 meters, so it's gonna be 10 square. That's 100. So let's see. We just now have to plug in. So 9 times 3 is 27. Times this, and this cancels out. See, 10 to the power 9 minus 6 minus 3 minus 9. That nicely cancels out. What is cos of 180 minus 60? Well, I remember the LR angles thing. If cos of 180 minus theta is since this is in the second quadrant, I write ASTC. So in second quadrant, cos is negative. So it's going to be minus cos 60. So this is going to be minus cos 60. And cos 60 is half, so I'll get minus half over here. Divide by 100. And that's going to be 27 by 2, which is, what is that? 18.6. No, 13.5. So it's negative 13.5 divided by 100. So that's minus 0.135 volt. And so let's think about, does it make sense that we're getting a negative sign over here? Yeah, because this time notice that point P is a little closer to the negative charge compared to the positive charge. So even if we had wrongly substituted this as cos 60 and gotten a positive value, we could just look over here and say, hey, that's supposed to be negative. And then I could have like realized why am I getting a positive value, and I could have gone back and corrected myself. We've defined electric field strength as the amount of force acting on a coulomb of charge, force per coulomb, so newtons per coulomb, right? Now in this video, we will look at a new way of defining electric field strength in terms of potential difference. So let's start by something that we already know. Let's use this definition. So let's take an example. Imagine we have a uniform electric field towards the right, created by some sheet of charge, let's say. And let's say that the strength is 100 newtons per coulomb. Let's start by asking ourselves, what is the meaning of this statement according to this definition? Well, it basically means that if I keep a coulomb of charge in that electric field anywhere, it's uniform, then that coulomb would experience 100 newtons of force, 100 newtons per coulomb. Similarly, what would it mean if I had, let's say, another electric field, say upwards? And let's say this electric field was 500 newtons per coulomb. What would be the meaning of that? Well, this would mean over here, if I now bring that 1 coulomb of charge and keep it over here, then that coulomb would experience 500 newtons of force, 500 newtons per coulomb. Okay, now let's think of this in a different way. And for that, here's my question to you. Imagine I let go of this charge. So I keep my charge over here. I'm holding it right now. Let's say I let go of that charge. What's going to happen?
Well, it's experiencing a force towards the right, and so it'll accelerate towards the right. And as it does that, it's going to gain speed. It's going to gain kinetic energy as it goes towards the right, which means it's going to lose potential energy. It's just like a ball falling down. As it gains speed, it loses potential energy, right? So that means as it goes forward, it gains kinetic energy, it loses potential energy. What I want you to try and figure out is how much potential energy this coulomb of charge would have lost if it went forward, or when it goes forward by exactly 1 meter. So can you pause and calculate how much potential energy it would lose by the time it would have traveled exactly 1 meter? So can you pause and try and figure this out? All right, let's see. So let's start by asking ourselves, how do we calculate how much potential energy is lost or gained? Well, that is calculated by the work done. The potential energy lost or gained is the work done by the electric field. And so how much is the work done over here? So the work done over here, let me write that somewhere here. So the work done over here is force into displacement, 100 into 1, that's 100 joules. 100 joules, and that work is done for 1 coulomb of charge. So work done is 100 joules per coulomb. And that means this coulomb will lose 100 joules of potential energy by the time it travels 1 meter. Does that make sense? And all of that 100 joules will get converted into kinetic energy. Another way of saying that is we could say, as I go forward by 1 meter, we will lose 100 joules per coulomb, 100 joules of potential energy per coulomb, meaning 100 volts. Joules per coulomb, let me raise that and let me write this as volts. 100 volts as I go forward 1 meter. So I could say 100 volts per meter. Does that make sense? Think about it. For every meter that I travel forward, I would lose 100 volts of potential in this electric field. Okay. Now, similarly, what can you say about this electric field? How many volts would we lose if you go 1 meter forward? All right. Well, the calculation will be very similar. If I go 1 meter forward, so let's say this is 1 meter, the work done by the electric field would be 500 joules. So 500 joules per coulomb. So 500 volts for every meter you go forward. So in this electric field, we will lose 500 volts, much higher, 500 volts per meter. And this is our new way, or new definition of our electric field strength. So our electric field, this number is telling us how much potential gets dropped for every meter you go forward along the field. Okay? And so now, let me move this a little down. Okay, let me move this over here. All right. So now we can also say that this electric field equals 100. Instead of calling it newtons per coulomb, I can also say volt. 100 volt per meter. And what does it mean when I say electric field is 100 volt per meter? It's saying that in this field, for every meter you go forward, you lose 100 volts. Similarly, I can now write this as 500 volt per meter. Although there is a volt over here, this is not potential, this is field, volt per meter. And what is this saying? This is saying, oh, this is a much stronger field. For every meter you go forward, you lose 500 volts of potential. So what's our new way of defining electric field strength? We can say it is a measure of how much potential drops per meter as you go forward in the electric field. Okay? And how do we write that mathematically? So let me write that over here. How do we write this mathematically? We could say electric field equals potential drop, which we can write as delta V, per meter, which you can write as per distance. So per delta R or delta X, whatever you want to call that. Delta R or delta X. And what's the unit? It's volts per meter. So a new way of looking at electric field. Now one thing we need to be very careful, this is not complete equation yet. One thing to be careful is, remember,
the number is saying how much potential you're losing as you go forward. Remember, it's a drop, okay? And how do we take care of that in the mathematics? Mathematically, when we write it, if I just write delta V, it represents how much potential is gained because it's a positive number. But we are saying it's how much potential is lost. And it's for that reason we put a negative sign over here. So the negative sign is basically saying it's a measure of how much the potential drops. Think of it this way. If your electric field, let's say, is positive, let's say right side is positive. If your electric field was positive, and let's say you also move in the positive direction, delta R is also positive, what would happen to your potential? Would you gain or would you lose? You're losing. That's what we're saying, right? You're losing. And therefore, this needs to be negative. So it's saying that if both these are positive, then delta V has to be negative. And therefore, that's why we have a negative sign. And of course, in a future video, we'll solve some numericals and this will make more sense. But long story short, electric field is a measure of how much potential gets lost for every meter you go forward. Now, before we conclude, there's one last thing I want to mention of how do we write this, how do we say this technically? So whenever you're calculating how much something is changing, with respect to distance, or how much something is changing per meter, we give it a name, we call that a gradient. So let me write that. This is called gradient. Okay, so if I said something like temperature gradient, it means it's a measure of how much temperature is changing for every meter you go forward. So this is potential gradient because it's a measure of how much potential is changing for every meter you go forward. So our right hand side is potential gradient. Let me shift this, sorry, there's a little space, so let me try and make this. So this, whatever we're writing, whatever we're calculating is potential gradient. Potential gradient. And therefore we can now say that electric field, this is what you will see in your textbooks, electric field is the negative potential gradient. If I just say potential gradient, it means how much it's increasing. So I have to say how much it's decreasing, how much potential is decreasing. And so we can now say electric field is a negative potential gradient. Sounds very cool to say that, but hopefully now this makes a lot of sense. Basically means how much potential is losing for every meter you go forward. We've learned how to visualize electric field by drawing field lines. In this video, let's explore how to visualize electric potentials. And the way to do that, or at least one way of doing that, is by drawing something called equipotential surfaces. So what exactly are these? Well, as the name suggests, these are surfaces, and these are three-dimensional surfaces over which the potential at every point is equal. Equipotential surfaces. Let me give you an example. So if we come over here, let's say from this charge I go about 2 centimeters far away over here. There will be some potential at that point. Let's call that as 10 volt. Let's imagine that to be 10 volt. Now if I went 2 centimeters over here from the charge, what would the potential there? It should also be 10 volts. What about 2 centimeters from here? That should also be 10 volt. In fact, I could draw a circle of 2 centimeters, and 2 centimeters is just an example, okay? And everywhere on that circle, the potential would be equal, 10 volt. So that circle would be an equipotential surface. And since it's a three-dimensional, you have to imagine this actually is not a circle, but it's a sphere. So let me just draw that nicely. So I could draw a sphere, let's see, here it is, a sphere. You have to imagine this is a three-dimensional sphere, where on every point of it, the potential is 10 volt equal. And so this would be my 10 volt equipotential surface. Can I draw more? Of course. If I go a little farther away, maybe 2.5 or 3 centimeters far away, can draw another sphere. That would be another equipotential surface. Let me draw that. If I go farther away, the potential will decrease, right? So let's say this is another equipotential surface. Why is this equipotential? Because on every point of it, the potential is equal, and it's equal to 7 volt. Can I draw more? Yes, more spheres. Every sphere you draw will be an equipotential surface. In fact, if I go a little farther away and I draw another one, I might get a 9 volt equipotential surface. If I go a little farther away and I draw another one, I might get an 8 volt
equipotential surface, and so on and so forth. Now before we continue, you may immediately notice that the surfaces are closer here and they're going farther and farther away. Why is that? Well, it's got something to do with the strength of the electric field. Close to the charge, the field is very strong, and that's where the equipotential surfaces would be closer to each other. As we go far away from the charge, the field weakens, and so the surfaces go farther and farther away from each other. But why? Why is it that if the field becomes weaker, the equipotential surfaces go farther away? Can you pause and think a little bit about this? Alright, here's how I like to think about it. Consider a tiny test charge kept over here on the 10-volt equipotential surface. What will happen if I let go of it? Well, the electric field will push it and it will accelerate and it will move from this equipotential to another, the 9-volt equipotential. Now because the force over here is very strong, because you are in a strong electric field region, it will accelerate very quickly. It will gain kinetic energy very quickly. And as a result, it will lose potential energy very quickly. And it's for that reason, in a very short distance, it would have reached from 10 volt to 9 volt equipotential surface. However, what would happen if I were to keep that same test charge over here? Well, now the field is very weak, or weaker compared to here, and so the force acting on it is very weak, and so it will accelerate slowly. And so it's going to take more distance for it to pick up the kinetic energy. And so it's going to lose potential energy more slowly, and as a result, it's going to take a longer distance before it reaches, it loses 1 volt now. And so what do you think will happen for the 6 volt equipotential? It will take even larger distance to reach 6 volt, and so it will be even farther away. Does that make sense? It's kind of like if you take a ball and drop it on, say, Jupiter, where the gravitational field is very strong, then it will accelerate very quickly, and so it will gain kinetic energy very quickly, so it will lose potential energy very quickly. But on the other hand, if you were to drop that same bowling ball on, say, Moon, because the gravitational field is very weak, it's going to accelerate very slowly, gain kinetic energy very slowly, and so therefore lose potential energy very slowly. So the weaker field, in weaker fields, you lose potential very slowly, and so the potential surfaces are farther away. Alright, let's take another example, and I want you to take a shot at drawing equipotential surfaces. Let's say we have a long, infinitely long sheet of charging, big sheet of charge, which has, let's say, negative charge. Then we know, we've seen before, it produces a uniform electric field. Can you think of what the equipotential surfaces here would look like? Can you try drawing a few equipotential surfaces? Pause the video and think about this. Use the same approach as we did over here. Alright, just like over here, let me go at some distance, say about 2 centimeters from this sheet. It'll have some potential because it's a negative charge. Maybe there is some, I don't know, negative 10 volt potential. Now if I go 2 centimeters from here, I should get exactly the same potential as here. And the same would be the case over here as well. Ooh, that means I can connect all these lines. And if I do that, now my equipotential surface would look somewhat like this. So this would be my minus 10 volt equipotential surface. I can draw another, if I go a little bit farther away, maybe I will get another, let's say minus 9 volt equipotential surface. If I go farther away, maybe I'll get another minus 8 volt equipotential surface, and so on and so forth. Over here, I hope you agree that the equipotential surfaces will be equidistant because the field lines are all, the electric field is uniform. And again, just to reiterate, this is not a line, this is a surface. So you have to imagine this in 3 dimensions. Help you visualize that. If you could see this in 3 dimensions, so if you look at them in 3D, you can now see that now the equipotential surfaces are plane surfaces. So over here we got spheres, over here we're getting plane surfaces. Alright, but here's the question. These were simple cases. What if we have to draw equipotential surfaces in general? What if I have some random electric field line due to like some complicated network of charges? Something like that, I don't know, just randomly drawing. How would we draw equipotential surfaces then? We may not be able to use the same approach like here, but what we can try to do is see if there is some geometrical relationship between electric field lines and equipotential surfaces. So let's come over here. Can we see any relationship between these field lines and the potential surfaces? If you look very closely, you can see that
these equipotential surfaces are perpendicular to the field lines. That makes sense, right? Because in general, over here the field lines are forming the radius, and the radii are always perpendicular to the spheres or circles. So over here we are seeing that the two are perpendicular to each other. Let's look at over here. Hey, here also we are seeing that the field lines are perpendicular to the equipotential surfaces. Interesting. So can we say that this is true in general? That equipotential surfaces and field lines must always be perpendicular to each other? We can't just say that using two examples. We could say that might be a coincidence. So is this true in general? Well, if you and I were in the same room, maybe we would have an interesting dialogue over here, but I don't want to take too much time, and I'll go ahead and tell you that turns out that this is true in general. So let me just write that down. Equipotential surfaces are always perpendicular to electric field lines. I can just say perpendicular to field or field lines. Always, regardless of how complex the field lines are. And again, the final question for us in this video is why this is true. And I want you to again pause and ponder upon this. This is a deep question, but I'll give you one clue. Think in terms of contradiction. What would happen if the equipotential surfaces were not perpendicular to the field lines? What gets broken? Think a little bit about that. Like I said, it's a deep question. Don't expect it to get right away, and it's okay if you don't get it right away. But the idea is just to think a little bit about it before we go forward. All right, let's see. There are multiple ways to think about this. The way I like to think about it is, again, bring back my test charge. So here's my test charge. Now imagine we move this charge along the equipotential surface, say from here to here. Now, because it's an equipotential, at every single point the potential is the same, that means the potential energy of this test charge will remain the same as you move it. Right? Let me write that down. No change in potential energy, no change in potential energy as you move along the equipotential, by definition. Right? Okay. What does that mean? Well, if the potential energy is not changing, it automatically means no work done by the electric field. No work by the electric field. Now think about it for a second. Why should this be true? Because whenever electric field does work, whether positive work or negative work, very automatically potential energy would change. For example, let's bring back gravity, because gravity helps in understanding this. What happens when you drop a ball? Gravitational field does positive work. What happens to the potential energy? It loses it. What happens when you throw a ball up? Gravity does negative work. What happens to the potential energy? It gains it. So notice, whenever gravity does work, this ball would either lose or gain potential energy. Same would be the case over here. If electric field did work, the charge would have gained or lost potential energy. But we are seeing that it is not changing its potential energy. Means that as you go from here to here, electric field must be doing zero work. But how is that possible? Electric field is definitely pushing on the charge, it's putting a force on the charge, and the charge is moving. So how can work done be zero? Work done can only be zero if the force and the direction of motion are perpendicular to each other. So, in short, as you move a test charge along the equipotential surface, its potential energy should not change. That can only happen if the electric field does no work. And that can only happen if and only if electric fields are perpendicular to the equipotential surfaces. Now, if you find this a little hard to digest this right away, it's completely fine. It took me also a long time to do that. So keep pondering, keep thinking about it. It'll eventually make sense. So long story short, this basically means if you have been given some random field lines and if you want to draw equipotential surfaces, just start drawing them perpendicular to the field lines. This is how you might do it. And of course, nobody's going to ask you to do that, but we usually use computers to do that, but that's the idea. But equipotential surfaces must always be perpendicular to the field line. All right, let's summarize. And I want you to summarize. And the way to do that is I'm going to ask you 3 questions and see if you can explain it to a friend. What are equipotential surfaces? That's question 1. Second question, why over here these surfaces are going farther and farther apart from each other, but over here the surfaces are equidistant? And third one, why are equipotential surfaces always perpendicular to the field lines?
Hello. जहाँ गोदरेज होम लॉकर हो उस घर की खुशियाँ कोई नहीं चुरा सकता। गोदरेज होम लॉकर्स, खुशियों के रखवाले। अब होगा मंडे स्पेशल। आईडी पराठा, मलाबार पराठा, पराठा रोल, अच्छा पराठा, घर जैसा पराठा। बने रोज फ्रेश, बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स के। आईडी पराठास, yum up anything. We're given an electric field towards the left, a uniform field which has a magnitude of 100 volts per meter. And we're given 3 points, A, B, and C, and we're asked to figure out what is the potential difference VA minus VB and VB minus VC. So the whole idea behind this problem is we need to find a way to calculate potential differences from electric fields. Now in a previous video, we've seen what that connection is. We saw something, we realized that electric field is a negative potential gradient. Now, if you don't know what that means and you're not familiar with this connection, feel free to pause this video, go back and watch that video, revise the concepts and come back over here. All right, if you're cool with that, let's go ahead with this. Let's start solving the first one. What is the potential difference VA minus VB? How do we do that? Well, one way is we can use the formula, and we'll do that a little bit later, but I want to try and solve this logically. And for that, I ask myself, what does this number even mean? This number says that if you move along the field, and for every meter you go forward along the field, you will lose 100 volts of potential. That's what this number means. And if you're wondering, why do we lose potential as you go along the field? Well, if you keep a positive charge somewhere over here and let go of it, what happens? Well, it'll accelerate along the field, meaning it will gain kinetic energy along the field, which means it will lose potential energy along the field. Just like in the case of gravity, as things fall down, they lose potential energy along the field. So I know that if you go for every meter along the field, you lose 100 volts. Or every meter in the opposite direction of the field, you gain 100 volts. Which means if there are 2 points which are 1 meter apart, I know that their potential difference will be 100 volts. So that means I just need to figure out how far apart these two are, and then I can calculate. So can you pause the video right now and see if you can, just using this information, figure out what is the potential difference between these 2 points. Give it a try. All right. So the first thing that comes to my mind is I just have to figure out what the distance between these 2 points are. If I know this distance, and let's say I find out that distance to be, and you can use coordinate geometry to figure that out, but let's say you get some number, if, for example, say 10 meter, okay, just an example. Then that means for every meter I gain 100 volts. So for 10 meters I would gain 10 times 100, so 1000 volts. So would that be the answer? No. That will not be the answer. You can't do it this way. Can you pause the video and think about, okay, another thing, why you can't do it this way? All right. So this number that you gain or lose 100 volt per meter only works when you move in the direction of the electric field or in the opposite direction. Basically, you have to move parallel to the electric field. Only then you can say per meter you gain or lose 100 volts. So you can't move this way. So then how do I go from A to B? The way I like to do it is, one of the ways to do it is, you can go from A to B along the field first, and then you go up this way. I'll tell you why. From here to here, I can use this number. I can figure out how far this distance is, and then I can use this number to figure out what the potential, how much potential I'm gaining because I'm going in the opposite direction. And now I'm going from here to here. Notice when I go this way, I'm moving perpendicular to the electric field. And we've already seen before that if you move perpendicular to the electric field, there'll be no change in potential. In fact, these 2 points lie on an equipotential surface. Remember, equipotential surfaces are always perpendicular to the electric field. So long story short, from here to here, there is no change in potential. Okay? So that means all I have to figure out is what is the potential at this point. I just need to figure out what is the potential difference between these 2 points. That's the same as the potential difference between these 2 points, because this and all the points lying on this plane would be at the same potential. Does that make sense? So I just need to figure out what this distance is. And I can do that by looking at the x coordinate. So this is -1.
This is plus 4. So what is the difference between these 2 points? That's 4 minus minus 1. That is 4 plus 1. So that's 5 meters. And you can pause and you can just check that's right. So this is 5 meters. And so now I can use this number. I know for every meter I go forward, I gain 100 volts. So how much would I gain if I go 5 meters forward? I gain 500 volts. So immediately I know that this point, which is the same as this point, potential wise, is 500 volts more than this point. So let me write that mathematically. VB is 500 volts more than VA. And therefore, what I need is VA minus VB, so I can just rearrange this and I'll get VA minus VB as negative 500 volt. And we're done. आज सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड और व्हर्लपूल का मैच है वर्सेस पूरे दिन के जिद्दी सूखेदार। न्यू सर्फ एक्सेल मैटिक की एसपीपी और व्हर्लपूल की 6 सेंस ब्लूम वॉश टेक्नोलॉजी निकाले जिद्दी सूखेदाग मशीन में जिद्दी सूखे दागों के लिए। कहने को है क्या ढूंढ तुझे सुबह मैं और तू क्यों ना अभी जरा जरा चख ले मजा ले। Lay's great flavor, perfect crunch. And we're done. There we go. That's the answer. Okay, now before we go forward to the next one, let's just convince ourselves we get the same answer by using the formula. This will be an excuse for us to get used to the formula. In a previous video, we also derived the formula. We saw that electric field, what is the connection between this and the potential difference? Electric field is the negative potential gradient, which means it's the negative difference in potential between 2 points divided by the distance between the 2 points. And again, this distance is only along the field. Okay? So can you again pause the video and see, by substituting, you end up with the same answer. So give it a shot. All right. So if you rearrange, you get delta V equals minus E times delta R. Now, when you're talking about delta V and delta R, especially delta V, we need to be very careful about which is our initial point and which is our final point, right? Because when we're talking about change, initial and finals are important. Now, over here, we went from here to here, but you don't have to. You could have gone backwards as well. But just to keep things simple, I'll call this as my initial point, and this as my final point. This point and this point are the same, by the way, like we just saw. Potential-wise, they're same. All right, so what is delta V now? Delta V is final potential minus the initial potential. So this would be VB minus VA. And that's why it's important. If you had called this as your initial point and this as your final point, you would call this VA minus VB. It would be opposite. This equals negative. What is the value of electric field? Now we know the magnitude is 100, but what about the direction? It's in the opposite direction of the positive X. And that's important when you're substituting over here. So that means this is negative 100 volt per meter. So negative 100 volt per meter times, what is delta R? Delta R is you're going from here to here. So you're going in the positive direction. So that's plus 5. So 5 meter. So meter cancels. And see what we end up with. We get 500 plus 500. So you get 500 volt. So VB minus VA is 500 volt, means VA minus VB is negative 500 volt. So you get the same answer. So you get the same answer. All right. Can you think about what would be VB minus VC? Again, can you pause and try? All right. So because point B and C lie on the exact perpendicular, that is the equipotential surface, they have the same potential, which means the potential difference between them must be 0. And so whether you take VB minus VC or VC minus VB, it should be 0. And again, I can ask, can we use the formula to arrive at this? Yes. This time delta R for them is 0. Because remember, delta R is the distance along the field. The distance along the field is 0. Are you getting that? Along the x direction, they have the same coordinate, and therefore delta R is 0, and therefore you would get the same answer here. All right, let's try one more.
Okay, in this case, we are given an electric field pointing downwards with a magnitude of 30 volts per meter. We're given a point A whose coordinate is given to us 3, 10, and there is a point B such that their potential difference is given to us this time. And so our goal is to find what the coordinate is. Again, can you try doing this yourself first? All right. So again, the first thing I want to try and do is see if I can do this logically. Now I know that the first thing I'm looking at is I'm trying to figure out whether B should be above A or B should be below A. It's given to me that VB is more than VA, right? It's a positive number. That means VB has a higher potential than VA. And so I'm just asking myself, if I go down along the field, potential will drop. Oh, so it has to be above. So B has to be somewhere over here. Somewhere over here. Okay, so that's the first thing I'll figure out. Now I know that for every meter I go up, I will gain 30 volt. But for us, I just have to gain 10 volt. So I ask myself, how many meters should I go up? Well, I like to do it this way, I like to write it down. So I know for 1 meter, if I go up, I know I gain 30 volt. 30 volt. But it's given to me that I just have to gain 10 volts. So how many meters should I go? Well, it's 1/3, and therefore it should be 1/3 over here as well. So 1/3. So I divide this by 3, I get 10, right? So I divide this by 3, and so 1/3 meter, so that is 0.33 meter. So this distance should be, set that down, 0.33. So now comes the question, what is the coordinate of this point? So this point would be, well, the x coordinate would remain the same. The x coordinate is not changing, so that's 3. The y coordinate would be now 10 plus 0.33, so it would be 10.33. There'll be a bar. I can put a bar over there. Now, one thing, just like we saw last time, this is not the only point that has 10 volt higher than point A. I can in fact have any point along this line perpendicular, because all of these points on this line are equipotential. So point B can be here also. Point B can be this one. So point B can have any value of x coordinate, because this is a uniform field, it can have any value of x coordinate, but its y coordinate has to be 10.33, which means the actual answer that we need to give if somebody asks us this question is we could say, hey, it can have any value. It's not that we don't know the value of x coordinate. We're saying it can have any x coordinate it wants. So I'm just going to put x over there. Pick any point you want. And y coordinate has to be 10.33. So this is our answer. And I encourage you to try and check this using the formula yourself. Suppose we are given what the electric potential at every single point in space is. It's given by this function, let's say. And this equation is basically saying you put in the value of any coordinate you want, and then it will tell you what the electric potential at that point is going to be in volts. Our goal is to figure out what the electric field vector is going to be at every point in space. How do we do that? Okay, so to do this, we need to find some connection between electric field vector and the potential function. And we've explored something like this in our previous videos. We've seen that electric field is the negative potential gradient. And what it's basically saying is that imagine you have an electric field, and let's say you want to find what the strength of that field is at point A. Then it's saying that all you have to do is take a step forward to say point B, step some distance forward, and you find out how much the potential has dropped. The potential will drop if you move in the direction of the field, right? And that potential drop is delta V. That ratio then, the negative ratio, how much the potential is dropping per meter, that itself will tell you what the strength of the electric field is. And if you're not familiar with this, we've talked a lot about this in great detail in previous videos. Feel free to go back and check that out. But there are a couple of problems if you try to directly use this over here. One is, this will only work for uniform electric fields. I mean, think about it. If you want to step forward and then calculate how much the potential has changed and divide by delta R, value should stay same everywhere in between. But in our case, the electric field
may be changing. In fact, it might be a non-uniform. That's what I mean. Changing means it may be a non-uniform electric field. Let me draw that. So let's say our electric field is a non-uniform. Then what do we do? Now, as the moment I step forward, immediately electric field might have changed. Then if I do this, I will get an average value of the electric field between point A and point B. I don't want that. I want the electric field at A. How do I do that? Well, we can do something that we've done a lot of times before in physics. We can use calculus. We can say, imagine, instead of taking a big step forward, take an incredibly tiny step forward. Imagine point A and B are incredibly close to each other. So close that practically electric field value is going to be the same. In that case, this distance delta r becomes an infinitesimal, and we often write it as dr. And then you calculate what the change, how much the potential drops. That will be an infinitesimal drop, and it'll be dV, and then you do a negative dV over dr, and that will give you the electric field at that point. And so now, the only change we have to do is make dV over dr, and now this will work for any field. But there's a second problem. See, I don't even know what direction the electric field is at this point. So how do I know in which direction I should move to calculate this gradient? Because I should always move along the field or in the opposite direction. I don't even know what direction the field is. So how do I know? Should I move to the right, left, up, down? How do I know that? Well, what we can do is we can ignore whatever we can say, it doesn't matter what direction the electric field is. Let's calculate the x and the y and the z component separately. So here's what I mean. Okay, so I don't know what the direction of the electric field is. It doesn't matter. What I will now do is I'll take a small step only in the x direction. So let's say our right side is the positive x. So this then would be, our dx. So this is going to be our dx. And as a result, there will be some change in potential. And now let me calculate that gradient. So if I calculate that gradient, negative gradient, dV divided by dx, what does that give us? I am now calculating how quickly the potential, or how much the potential has changed per meter along the x direction. So that gives me the electric field strength along the x direction, meaning it tells me the x component of the electric field. So to calculate the x component, I have to differentiate voltage function or potential function with respect to x. But we have to be very careful. See, it's under a condition. The condition is dx is the only variable that's changing. I am not moving, there is no dy, I'm not moving in the y direction, I'm not moving in the z direction, I'm only moving in the x direction. So the condition is dy is 0, there is no change in y, and dz is 0. And why is that? Because I want to calculate the component only in the x direction. So for that, I should make sure that I'm not moving in the y, I'm not moving in the z. Does that make sense? And so that will give me the x component. And similarly, what I can now do is move a small step in the y direction and calculate what that dV is, and then take the gradient. And what will that give me? That will now give me the y component of the electric field. So to calculate y component, I should differentiate voltage, potential function, with respect to y. But again, it's under the condition that now I'm only moving in the y direction. Okay? Because I want to calculate the y component, I have to only move in the y direction. That means now my dx should be 0. Is that making sense? My dx should be 0 and my dz should be 0. And I know this is a little abstract, it might take some time, but I can repeat this. Why am I making sure my dx and dz was 0? What would happen if they were not 0? If my dx was not 0, so let's say dx had some value, then that means I did not move this way. I might have moved at some angle. And if I move at some angle, then I'll get the electric field component along that direction. I don't want that. I only want along the y direction. So I only need to travel this way, meaning dx should be 0, dz should be 0. Is that making sense? The same thing I can do along the z direction, and that'll give me the z component of the electric field. Oops, dz, making sure dx is 0 and dy is 0. And once I have the three components, I can put together and I can use I cap, J cap, and K cap and write down what my electric field is going to be.
So can you now at this point pause the video and maybe take a breather of what we've all done and see if you can now use this, use your calculus, use your differentiation to figure out what the electric field is going to be. So pause and give it a shot. All right, let's do this. So let me make some space in between and start by finding what the Ex is, the X component of the electric field. Now we have to do this, and let me show you the notation that we use, a shorthand notation to write this whole thing. The way we write that is we write negative, instead of writing D, we write dou V over dou X. It's just a notation, okay? Don't get scared by that. All it's saying, mathematically all this is saying, is that you're only differentiating this function V with respect to X. And if there are any other variables like Y and Z, and if there are any other variables, they are not changing. That's what it means to say dy is 0. Y is not changing. Dz is 0. Z is not changing. That's how you should differentiate it. Okay? You may be wondering, what's the difference? And you will see. Let's do this. You will see now what's the difference between dou and this. Okay? So I'm going to do normal differentiation, nothing different. So normal differentiation, how would you do this? So you have the first term, if you differentiate, say uv, so first term, x into differentiation of y with respect to x, so I'll just write it as dy over dx. Let's do normal differentiation first, plus the second term into differentiation of the first term, which gives me 1, minus, let's differentiate this now, I get 2 times, 2 comes down, so you get 4 y, and you have to use the chain rule, to dy over dx. I haven't done anything funky now. Regular differentiation. Okay, I've used chain rule wherever required. Alright, but now remember, dy and dz are not changing, they are 0, which means this goes to 0. dy is 0. Again, dy is 0, which means this term goes to 0. When you apply this, this is what we mean by dou v over dou x. Okay, so any dy and dz terms, they go to 0. And this kind of differentiation is called partial differentiation or partial derivatives, because you're only differentiating with respect to, we're only making sure changes are happening for x and not y. Okay, so what do you get? So let's see, we get ex equal to, this term goes to 0, this term survives, this is the only term survives, so I get minus y. So this is my x component value. So now let's do the y component, and I encourage you to try that. What's y component going to be? Again, it's going to be negative dou v over dou y, but let's start by doing normal differentiation, and I encourage you to pause and try this. All right, so again, we use uv rule. So first term into differentiation of the second term, differentiation of y with respect to y is 1, plus the second term into differentiation of the first term, differentiation of x with respect to y is dx over dy. Be careful what you're differentiating with. You're differentiating with respect to y now, minus 4y. And now let's use this. Dx and dz is 0. So dx is 0, that means this goes to 0. So now this is partial derivatives, whatever you're getting now, okay? So ey is going to be, let's see, this term survives, this term survives, so I get negative x plus 4y. This now is your y component of the electric field. And before we go to z component, let me show you a faster way of doing this instead of just doing the whole thing. A faster way of doing this is, we could say, look, in this differentiation, y and z are not changing, so you can treat them as constants. So while calculating the x component, just differentiate this with respect to x and treat y as a constant. Now if I do this in my head, in the first term, y is a constant, so when I differentiate, this will go to 1 and you'll get y. I'll get y. And this will become 0 because it's a constant. So I only get y, and then the negative sign comes. Does that make sense? Similarly, when I'm differentiating with respect to y, treat x and z as constant. There is no z over here, but treat x as constant. So when I differentiate the first term, x is a constant, so I'll get x, and I'll get minus 4y. And then the negative sign basically comes from the outside. And that's how you do this. So what will be the value of Ez now? You have to differentiate only with respect to z, assuming x and y to be a constant. Well, there is no z term. The whole thing is a constant for us. What's the differentiation of constant? You get 0. And so Ez is 0.
And it kind of makes sense. If there is no z term in this, that means when I take a small side step in the z direction, the voltage doesn't change at all in the z direction. And that means that there is no z component of the electric field. So finally, what is the electric field vector? Let me make some space. Let me move down. All right, so now that I know all the three components, I can now say that my electric field vector at any point in space, x, y, z, I will not write that, any point in space is going to be the Ex, which is negative y, I cap. Okay, let me do it step by step, so there'll be no confusion. It's going to be Ex, I cap, plus Ey, j cap, plus Ez, z component, times k cap. It's Cartesian. Okay, what is Ex? Ex is negative y. So negative y times I cap. Plus, what is the y component of the electric field? It's negative x plus 4y. So minus x plus 4y times j cap. And what is Ez? That's 0. So this is my expression for electric field. And now if you give me any coordinate of x, y, and z, I can just substitute over here and I can find electric field at any point in space. So long story short, if you want to calculate electric field vector from a potential function, you have to separately calculate the three components by doing partial derivatives. And what that means is you differentiate only with respect to x, keeping y and z constant, and so on and so forth. And then once you have the three components, you put them all together, and then you get the total electric field vector. In this video, we're going to figure out how the equipotential surfaces are going to look like when we have multiple charges, say positive and another positive, or a positive and a negative, or a negative and negative charges. Now, just a quick recap, we've already defined in previous video what equipotential surfaces are. These are three-dimensional surfaces which have the exact same potential everywhere on top of it. And an example would be for us, a point charge, the equipotential surfaces would be spheres. And one of the amazing properties of these surfaces we've seen is that these surfaces are always perpendicular to the field lines everywhere. And if you're not familiar with this concept or you need a refresher, feel free to go back and check our previous video out. But anyways, now let's bring in another positive charge, and our goal is to figure out logically, using this property, we're going to use this property, how the equipotential surfaces is going to change. So if I bring in another charge, so let's say here's another charge over here. You know by now that the presence of this charge is going to change the field lines, right? You may have seen earlier that the field lines are going to sort of change. Maybe these field lines are going to push on each other, and so the field lines are going to move upwards like this over here. These field lines are going to move over here, and so on and so forth. And because the field lines change, and because the equipotential surface should always be perpendicular to the field lines, that means our equipotential surfaces are also going to change. So the question is, how would it change? We can't draw an exact thing, but we want to get an intuition for how it may change and what the rough surface would look like. So let me draw the new field line properly over here. Here's what our new field looks like, somewhat like this. Okay. Now what I want to do to figure out what the new equipotential surface looks like is I want to look at one of these field lines and compare it with what it was before, and then see how the field potential surface should change. This surface should change. So let me get rid of all the field lines and just compare with one of the field lines over here. So if I zoom in, okay. So this was our earlier equipotential surface when the field line was like this, and this was 90 degrees. This was perpendicular. Let me use white. This was perpendicular. But now notice once it has curved, this is no longer perpendicular. So to make this perpendicular, you can kind of imagine this part of the equipotential surface must be somewhat, so let me draw that. Okay, somewhat like this. Somewhat like this. Can you see that? Then it'll be again 90 degrees. And the same thing would happen somewhere downwards. So if I draw one more field line over here, then this equipotential surface, this part of the equipotential surface should also, to
make sure it stays 90 degrees, should bend somewhat like this, so that this would stay 90 degrees. And immediately from this, you can kind of see that our new equipotential surface would kind of look somewhat like this. So you can kind of see that it'll be bulged out towards that other positive charge. Can you see that? Okay, now let's see what happens somewhere else. So let me show you one more field line over here. Now let's look at what happens over here. Well, again, notice it's no longer 90 degrees. To maintain that 90 degrees over here, this part of the equipotential surface should be somewhat like this, so that this will be 90 degrees again. And finally, if I draw one more, something very similar at the bottom, you're gonna get something very similar over here. It should be like this to maintain that 90 degrees. And now if I complete this figure, you can see it's gonna be a little bit squashed behind. Oof. Oh, so can you see what the picture looks like? It's kind of like gonna be an egg-shaped equipotential surface. Now this doesn't look very nice, so let me zoom back out. This doesn't look very nice, but if I get rid of it, this somewhat like this. This will be the new equipotential surface. Let me get rid of that. And so if I get rid of our, let me get rid of this. All right, there we go. This is what the new equipotential surface looks like. So it's kind of like bulged. It's kind of like egg-shaped, but it's kind of like bulged towards this one. And the same thing would happen over here. Same thing would happen over here. And so notice what has changed. So let's try and compare what it was before to what it is now. So if I compare, earlier, if I only consider individual charges and I don't consider the effects on each other, it would be spheres. But when I do consider the effects on each other, look at what happens. This was before, this is now. So it's kind of like the equipotential surface is trying to merge with each other, kind of like a drop of water. Can you see that? Okay. And in fact, if I draw more equipotential surfaces, they will indeed merge with each other. You can see they're slowly merging, and if I go very, very far away, it's pretty much going to look circular. I have a simulation over here. Let me show you. In this simulation, we can visualize equipotential surfaces. So let me put a positive charge over here, and we get spherical equipotential surfaces. The brightness represents how strong the field is over here. But what's important is spherical, because there's only one charge. Let me put another charge over here, and you can see another spherical. You can imagine they're very far away, and so they're kind of not interacting with each other. So keep them very far away. But now let's see what happens when I bring them close to each other. Ooh, can you see that egg shape being formed over here? Look at that, look at that, look at that. That's the egg shape being formed. That's exactly what we saw. And I can now keep them over here and draw a few equipotential lines, and let's see what happens. Let me go ahead and draw that. And there you go. Close to the charges, it's pretty circular because they're extremely dominant. As you go farther away, it's kind of egg-shaped. And then they slowly merge. And if you go very far away, it's going to become more and more circular. Because if I go very far away, it feels like these two charges are very close to each other. It feels like a single charge. And so the equipotential surface of a single charge is pretty much spherical. Okay, here's a question for you. What's going to happen if I made one of those charges much stronger than the other? So let me show you. So here is, I'm going to add more charges over here. More charge. This is 2, 3 charges. Say 4 charges over here. Okay. What's going to happen if I bring them close to each other? Can you kind of visualize what the new equipotential surface is going to look like? All right, let's see. I can just do that. And again, we can see it's egg-shaped and it's merging. But you can kind of imagine this is huge. This is small. And so now if I were to draw the equipotential lines, you can see the difference. Because this is more dominating, it is more circular, but then this is becoming very quickly egg-shaped, and then finally they merge together and you get circular. A quick question for you. Instead of 2 positive charges, what if I'd kept 2 negative charges? What do you think is going to happen? Do you think things are going to change, or things are going to remain the same? Can you pause and think about it? Here's the thing. If I've kept 2 negative charges, the field lines are going to look pretty much the same, except that the lines are going to just reverse in its direction, right? And therefore, nothing much would change. So the equipotential surface should look exactly the same. So let me get rid of these charges. So here's one negative charge, here's another negative charge. You can imagine blue to be that of a negative potential. Again, spherical equipotential surfaces, if I bring them close, notice they merge. And
everything you saw for two positive charges would be the same for two negative charges. So it'll be the same for like charges. Now comes the question, what happens if you have one positive, one negative? Ooh, that's interesting. So going back to our drawing board, what if one of these charges were negative of equal magnitude? So it's a dipole. How will the equipotential surfaces change? Can you, again, pause the video and think about how the field lines would change, and as a result, how the new equipotential surfaces would look like? It won't be like these. So pause and think about it. All right, okay. So let me get rid of these surfaces. Now the big change is going to be, instead of field lines curving away from each other, they're going to start curving towards each other. Field starts from positive and goes into negative. Let me show you that. Somewhat like this. Which means now on this side we'll get the equipotential surface to be flatter on this side, and on this side it'll be sort of bulged. Not exactly bulged, but so it'll be the other way around. So let me show you what I mean. Somewhat like this. Does that make sense? And if I were to draw more equipotential surfaces, you can see as it comes closer and closer to the center of the dipole, it's going to get flatter and flatter. In fact, right at this point, you can see the field lines are all parallel to each other, and so you'll get a plane sheet over here. So let me show you that. This is what it would look like. And these would never merge with each other, ever, because one is producing a positive volt potential, one is producing a negative potential. In fact, I hope you can see right in between the potential is going to be zero. That's why I've drawn a green over there. It's kind of like neutral potential. And again, we can go back to our simulation. So this time, we'll bring in one positive charge, one negative charge, and you can kind of see that extension happening on the other side. You can kind of see flattening over here. Let me draw the equipotential surfaces. There you go. Not exactly like what we drew in our drawing board, but you can kind of see it's becoming flatter over here. And again, what if I made one of the charges stronger and one of the charges weaker? If I made the positive charge a little stronger in magnitude, you can kind of see it's gonna, this positive would start dominating over this negative. And again, let me show you that. So let me add more positive charge over here. You can kind of see the positive starts dominating. And again, let me draw the potential surfaces. And there you go. This is very interesting. Over here, you see a similar trend. It's getting extended on the opposite side like we saw before with the dipole, but you see more effect over here compared to this one because this is dominating. But if you go far away, they eventually merge. Why is that happening? Why is it merging? One's positive and one negative. Ooh, that's because if you go far enough, the positive charge dominates, and then you start having positive potential. And so that's why eventually, if you go far enough, then these two charges merge together. I mean, together they sort of look like a single positive charge, and eventually you start getting spherical positive equipotentials. We have three charges kept like this. These are fixed charges, let's say. Now imagine I take this +2 coulomb charge and slowly move it along this path and bring it to this point, so that now it is at a distance of 3 meters. These are all in meters from the charges. The question we want to try and answer in this video is, in moving this charge, how much work did that external agent, that is me, how much work did Mahesh do in moving the charge from here to here? And we also want to calculate how much work did the electric field do when the charge went from here to here. How do we do that? Well, we can always go back to our basics and say, hey, work done is force into displacement. And I can try and do that over here. The problem is that the force keeps continuously changing. Right? As I come closer and closer to the charge, the force might start increasing, which means I have to do some integral. And look at that path taken. No, we're not going to do any integrals over here. So to avoid integrals, we introduced the concept of potential energy. But whenever I used to do these calculations, I used to always get confused with the signs. Is it final potential energy minus initial? Or is it initial minus final potential energy? And I used to always get confused. So here's what I like to do now. I always like to go back to gravity, because that helps me. That's a very simple case. So let's go back to gravity and think a little bit about it. So imagine I have a stone lying on the ground. What happens when I, again, Mahesh, I move it up? What happens?
Well, let's say I did 100 joules of work in pushing it up. I do positive work in pushing it up. What happens to the potential energy? Well, if the initial potential energy was 0, when I do work, I add potential energy into this rock, and so the potential energy of the rock increases by 100 joules, right? And therefore, work done by me, Mahesh, work done by the external force, that equals the final potential energy minus the initial potential energy of this system. So let me write that down. So the work that I do, that equals the final potential energy minus the initial potential energy. And what about the work done by the electric field? Well, I go back over here, ask myself, what is the work done by gravity over here? Well, when I'm pushing up, when I'm putting a force on it upwards, gravity is always putting a force on it downwards. So gravity is putting a force in the opposite direction, which means gravity is doing negative work. So the work done by gravity would be negative 100. Same will be the case over here. The work done by the electric field instead of gravitational field would be the negative of this. So that would be initial potential energy minus the final potential energy. Does that make sense? Don't ever mug this up, because we'll forget that. Always go back to gravity, take a simple case, and that will always help us in coming back over here. So this means all I have to do now is think about what was the initial potential energy of the system, what is the final potential energy of the system, and then we can figure out the work done. So I encourage you to pause this video before we move forward and try it yourself. All right. So let me draw what the initial system looks like. This is what initially it looked like, 10 meters far away from each other. Then once I did that work, the final system looks like this. And so the energy of this would be the final potential energy. And if I subtract that, I'll get the work done by me. One thing you may be curious about is, hey, what about the path taken? Doesn't that matter? No, it doesn't. Because electric fields are what we call conservative fields. It doesn't matter what path you take. All that matters is what is the initial state and the final state. The work done is path. All right, so let's go ahead and figure out these potential energies. Let's make some space over here. All right, a quick reminder of how we calculate potential energies of a system. We've seen this in the previous video. The way I like to remember is, first think about what is the potential energy of two charges. The potential energy of a system of just two charges would be K, we can call it 1, 2, K, Q1, Q2 divided by R12. R12 is the distance between these two. And now if you want to calculate potential energy of a system of three charges, you take two at a time. It'll be the potential energy of this, plus potential energy of this system, plus potential energy of this system. Same would be the case over here. Then once you substitute, we can subtract and we can get an answer. So again, if you haven't tried before, maybe now would be a great time to pause and try. All right, let's see. Let's start with the final potential energy over here. So that's going to be K. I'm going to keep the K as it is, and I'm going to put a bracket because K will be common everywhere. So first let's take these two charges. So Q1, Q2 is going to be minus 5 times minus 5. That's 25. Divide by the distance between them, that's 10. Plus, then let's take these two charges. It's going to be minus 5 times 2, Q1, Q2, minus 5 times 2, that's minus 10. Divide by this distance, that's going to be 3. Plus, let's take these two charges. We'll get the same answer as these two charges. So again, it'll be minus 10 over 3. I'll not simplify. Let me just go ahead and write what the initial potential energy was going to be. Sometimes things cancel out. So that's going to be, again, K. I'm going to take these two charges first. We'll get the same answer as what we got over here. So it's 25 by 10. Plus, when I did these two, this time I'll get minus 10 divided by 10. So minus 10 divided by 10. And again, I'll get the same over here. Minus 10 divided by 10. I have to now subtract this. So when I subtract, this cancels out. And so finally, what do I get? Okay, you can do this yourself. This is just now subtraction. Let me quickly do it. What I'll do is, this will be minus 20 by 3, and this is minus 20 by 10. So I'll take that minus 20 out. And what I have here is 1 over 3. And what I'll have over here is minus 1 over 10 because we're subtracting. Minus 1 over 10. And you can check, you can pause and check.
So we'll get minus 20 times k times, what is this? 10 minus 3 is 7, 7 by 30. So this cancels, and that'll end up with minus 14 over 3. And now I'll substitute for k. You might remember k is 9 times 10 to the power 9. So 3 cancels out. Let me write down over here the final answer. The change in potential energy is going to be minus 42. So let me write that somewhere over here. Okay. Minus 42 times 10 to the power 9 joules. That's the change. Oops. That's the change in potential energy. Therefore, the work done by me would be just this number, minus 42 billion joules. 10 power 9 is, I'm just saving space over here. 10 power 9 is billion, so I'll say minus 42 billion joules. And what is the work done by electric field? It's going to be the opposite of that. So I have opposite sign, so it's going to be plus 42 billion joules. And by the way, this is only happening to be true because I'm slowly moving it without any acceleration. Okay, I think I forgot to mention that in the question. I'm slowly moving it without any acceleration. That's important. That's why the total work done would be 0, because there is no acceleration, there is no change in kinetic energy. Let's quickly try one more. We have 3 identical charges kept at the vertices of an equilateral triangle, and let's say an external agent, again me, let's say I come in and I move all the 3 charges now. I move all the 3 charges in the given path, and such that they form a new equilateral triangle of having edge length r. And the question now is, in doing so, if I move it very slowly without any acceleration, what is the total work done by the electric field? So can you pause the video and give it a shot? All right. So just like what we saw earlier, the work done by the electric field is the negative of the work done by me. So it's going to be negative of final minus initial. It's going to be initial minus final. So it's going to be initial potential energy minus final potential energy. And the initial system is going to look like, and the initial potential energy will be the potential energy of this system. The final potential energy will be the potential energy of this system. So I can just go ahead and calculate. So initial potential energy is going to be just like before. I can take 2 charges at a time, k, q1, q2 by r. But notice, this is, since they're all equal, it's going to be just 3 times this number. So it's going to be 3 times k, q1, q2 by their distance. So it's q squared by 2r plus q squared by 2r plus q squared by 2r. That's going to be 3 times that. Just trying to save some time and space over here. And the final potential energy is going to be very similar. Instead of 2r, it's going to be r. It's going to be 3k q squared over r. And now the work done by the electric field is going to be this minus this, initial minus final. You have to be very careful about the signs over here. So everything, the 3k q squared by r is common. What remains now inside, let me write that. Let's not do too many things in our head. So 3k q squared by r is common when I subtract. What remains is a half here minus what remains is a 1 here. So that means I end up with minus half. So I get minus 3k q squared by 2r. This is the work done by the electric field in changing that configuration. Suppose we have 3 charges kept like this. Our goal in this video is to figure out what the potential energy of this system is going to be. So what do we even mean by potential energy over here? Well, imagine at the beginning all these charges were very far away from each other. We could say infinitely far away from each other. Then we can ask ourselves, if I were to bring these charges from infinity to these points, how much work would I have to do? How much work I would have to do? That work done gets stored as potential energy. So I basically have to calculate the work done in assembling these charges from infinity to these points. So let's go ahead and do that. So let me make some space
and ask this question: how do I calculate that work done in assembling these charges from infinity? Well, we can do it step by step. Here's what I mean. First, we'll imagine an empty universe. There are no charges kept as of now anywhere. And ask myself, and let's say I bring the first charge. You can take any of these charges as your first charge. I'm just going to call Q1 as my first charge. Let me first bring Q1 from infinity and place it over here. And I'm going to ask myself how much work I did over there. There'll be some work done. Let's call that work done as, let me write that over here. Let's call that work done as W1. Then, keeping that charge over there, let's bring in the second charge from infinity to this point. Again, I'll have to do some amount of work. Let's call that work done W2. Let me bring this down a little bit. Okay. And then finally, we'll now have two charges kept over there. And then let's think about bringing the third charge in. And then the work done in bringing the third charge will be W3. And this now represents the total work done in assembling the charges. The beauty of electric fields is it doesn't matter how you do that work. It is independent of the path that you choose to do that work. You could have brought this charge first, you could have brought these three charges together, you could have done any ways you want, the total work done would not change. And that's why we choose a path which is the easiest for us, bringing one charge at a time. And so that this total work done would now represents the total potential energy of the system. So now we have to figure out what is the total work done. So let's do that. Let's focus on the first one. So let me dim the other two. Alright, so let's start with the first one. How much work would I have to do in moving the charge Q1 from infinity to this point? Remember, there are no other charges in this universe. So can you pause the video right now and think about how much work W1 I would have to do? Alright, because there are no other charges in this universe, nobody is attracting or repelling my charge Q1, and as a result, I would have to do zero work. Now at first, this was really hard for me to digest. I used to ask myself, I'm bringing the charge from infinity to this point. I have to make it move, right? So shouldn't there be some work done? Well, think of it this way. Imagine that when it's at infinity, I give it a very slight, very tiny push. And as a result of that push, the charge starts moving. So I did a very tiny positive work in the beginning. And then finally, when the charge comes to this point, I'm going to give it a push in the opposite direction, exactly the same amount of push in the opposite direction to stop it. And in doing so, I did a little bit of negative work. And so the total work done becomes zero. It's tiny positive, tiny negative. And so in the entire journey, I didn't do, net work done was zero. So does that, hopefully that helps. That convinces me that, yeah, indeed, I'll have to do exactly zero amount of work. So the work done in bringing the first charge is zero. All right, now let's think about the work done in bringing the second charge. So let me dim the first one. And let's look at this one. I have to do some work over here. Well, yeah, if you imagine that Q1 and Q2 are both, let's say, positive, just to keep things simple, then you can imagine as I bring the Q2, oh, I'm being repelled by Q1. And over here, we'll imagine that Q1 is fixed in place. Somehow we have nailed it somewhere, okay? I know it's in somewhere in space, but somehow we have nailed it. And as I bring Q2, Q1 is going to repel me. So I have to overcome that repulsion. And so clearly I have to do some work. The question now is, how much work do I have to do? So again, can you pause the video and think about this? All right. One way to answer this question is to go back to the definition of work. Work done is equal to force times distance. But then we see that the force keeps changing. As I come closer, force becomes larger. And then I have to do an integral. Oh, no, I'm not going to do that. We have a faster way of doing this because we've already done all the hard work in the previous videos. So if you remember, we can bring back the concept of potential. We know how to calculate potential at any point. So let's calculate the potential at this point due to this charge. Because this charge is placed, this charge is not yet placed over here. So what is the potential at this point? Let me call that point V2. What is the potential due to a point charge? We know the formula. It is KQ by R. So K into Q, that's this charge, divided by R, this distance, R12. You may ask, why? Why am I talking about potential over here? Because remember, potential, this number represents how much work
I have to do in moving 1 coulomb from infinity to this point. That's the meaning of potential. So if this number is 10, then in bringing 1 coulomb from infinity to this point, I have to do 10 joules of work. Which means I know how much work I have to do in bringing 1 coulomb. So now the question is, how much work I have to do in bringing Q2 coulombs of charge? This is for 1 coulomb. So for Q2 coulombs, how much work do I have to do? Well, it's going to be Q2 times this number. Therefore, potentials are so important. So the work done in moving this charge from infinity to this point would be Q2. Let me write that over here. Yeah, Q2 times this number. So let me just copy paste that. So I'm just gonna copy this and paste it over here. Q2 times that number. Let me put a bracket over here. So that's that. All right, now let's talk about the work done in moving the third and the final charge. So let me do this. Let me bring this now. Again, one way is I can calculate the work done using an integral of force and distance. I don't want to do that. We can use potential concepts. And again, I want you to pause the video and think about what would be the work done, W3, in moving Q3 from infinity to this point. All right, again, we can use the concept of potentials. If I can calculate what the potential at this point is, that represents the work done in bringing 1 coulomb of charge. Then I just multiply by Q3 and that will be the total work done. So what is the potential at this point? Let me call that potential as V3. What would that potential be? Well, that will be the potential due to these 2 charges at this point. And that'll be the potential due to this charge at this point plus the potential due to this charge at this point. So the potential due to this charge at this point is going to be again KQ by R, so KQ1, and the distance is R13. So you just have to be mindful of which charge you're looking at and what's the distance. And then there'll be potential due to this one will be Q2, KQ2 divided by this distance, that's R23. Okay, and this now, what does this number represent? That's the work done in bringing 1 coulomb from infinity to this point. So what is the work done in bringing Q3 coulombs from infinity to this point? It'll be Q3 times this number. So this is going to be plus Q3 times this number. So again, let me copy this whole thing, copy and paste it over here. And there we go. That's our total work done. We're done. We've done all the hard work. Literally, we did all the hard work. And now we just have to simplify this. So let me make some space. All right. So if we now simplify, we get the total potential energy will be K Q1 Q2 by R12. I'll add the color a little bit later, okay? Plus this would be K Q1 Q3 by R13 plus K Q2 Q3 by R23. And there we have it. That's our expression for the total potential energy. Now if you look at this expression, it's something very beautiful has come out. If you look at the first term, KQ1 Q2 by R12, that's actually the potential energy of these 2 charges alone. So let me mark that. So this is U12, potential energy of just these 2 charges alone. Similarly, so this one, okay, this one, this one. Okay, similarly, if you look at these 2, KQ1 Q3 by R13 is the potential energy of these 2 charges alone. Ooh, so this would be U13, this one. So it is this one. And if you look at this one, Q2, Q3, that is the potential energy, this expression is the potential energy of the system of these 2 charges alone. Potential energy of system of these 2 charges alone. So what's interesting is that the total potential energy is the sum of the potential energy of 2 charges taken in pairs. And if we could have more charges, we could just keep on increasing that. So just consider each pair, add their potential energy, and then sum them up. That becomes your total potential energy. Beautiful, isn't it? Of course, this is a very neat way to remember this potential energy formula, but if you ever forget any of this,
go back to our basics, and from basics we'll be able to always derive it. Suppose a capacitor is charged to a potential difference V having a total charge of Q on each plate. The goal of this video is to figure out what is the total potential energy stored in this capacitor. So let's start by asking ourselves, what do we mean by this potential energy and how do we calculate that? Well, before the capacitor was charged, if I look at the uncharged situation, there are no charges, there are no potential difference, we could say the potential energy is zero. So in the process of charging, someone must have separated those charges. Maybe positive charges from here went to here, creating a positive negative charge separation. And doing that requires work, right? Because an electric field would be generated. Let me show you. So imagine we separate positives and negatives like this. So after separating the charges, adding additional positive charges like this, let me write that. Adding additional charges like this requires work because there's repulsion. Just think about it. If I try to add another positive charge over here, it gets repelled by this plate of positive charge. So you need to overcome that repulsion. And therefore, some work must have been done by the external agent. And that external agent can be anyone. That could be a battery, that could be a fairy over here who's doing the charge separation. It doesn't matter. But somebody did that work. And that work done in transferring a total of Q amount of charges from this plate to that work done itself represents the potential energy stored. So we can say that the potential energy stored in the capacitor is the work done by the external agent. And let's say I am the external agent over here, so work done by Mahesh. That is the potential energy. So I have to calculate what is the amount of work I do. So how do we calculate that? Well, if you go back to our basics of work done, we could say it's force times the distance. But by now, you probably know we don't want to use that. Instead, whenever we're talking about work done in electricity, we can use the concept of potential difference. So remember, potential difference itself is a measure of work done. So for example, if the potential difference over here was 10 volt, it basically means that now if I want to transfer an additional 1 coulomb of charge from here to here, I have to do 10 joules of work. Okay? So here's the question. We know that the potential difference between the two plates is V, how much work needs to be done in moving a coulomb from one plate to another. I also know that the total charge transferred from here to here is Q. The question now is, what is the total work I did in transferring that charge? Can you pause the video and think a little bit about it? Alright, so what I would do, what my common sense is telling me is that the work done by Mahesh is, well, to move 1 coulomb of charge, I have to do V amount of work. That's the meaning of potential difference. But I moved Q amount of charge, so the total work that I did must be Q times V. And that itself must be the potential energy stored in the capacitor. But that's wrong. Okay, that's wrong. And this is the first part I want you to think a little bit about. Why is this wrong? It's not enough to, just accept that this is wrong, but really to deeply understand why. So can you again pause the video and think about why is this wrong? All right. I hope you did some deep thinking. Now to answer this question, let's look at this, charging process step by step. So here is our uncharged capacitor. And let's imagine I am going to do the work and I'm going to take a very simple approach. I'm going to start taking positive charges from here and start putting it onto this plate. Every time I do that, I create a charge separation. So let me bring in some charges. So you can see positive, but beneath that I've also put negative charges. So this is neutral. You can see negative charge over here. So I'm just showing some positives and negative charges. Right now the plate is neutral. And what we'll do is we'll slowly in each step move the charges and look at how much work am I doing. So let's move the first charge. When I'm moving the first charge from here to here, myself, hey, in doing so, how much work do I do? Well, this is a very tiny amount of charge. I don't know, maybe you can say delta Q. It's not the entire charge Q. Maybe a small delta Q amount of charge. What is the potential difference right now before I moved it? The potential difference right now is 0 because there is no charge. And therefore, to move that first charge, it's almost free.
That kind of makes sense because I don't see any repulsion coming from this plate. I know as I move it, I still get some attraction and I still get some, I do have to do some work. But if we neglect that, I can say pretty much the work done in the first, when I'm moving the first charge is almost zero. So let me write that. I'm gonna write how much work I'm doing over here. So the work that Mahesh is doing. In the first step, the work done, I'm just gonna call almost zero. So we're gonna do it step by step. Okay, now let's move the second charge. Now when I move the second charge, do I have to do some work? Yes, I do. Because now I feel repulsion from this charge. In fact, as a result of this charge separation, there is a tiny potential difference generated. It's not as big as this, it's really, really small, but a tiny potential difference is generated, so I have to do some work against that potential. And so now, I have to do some work. So the work done in the second step is going to be some tiny potential difference. I'm going to use the same formula. Work done equals potential difference times charge transferred. So some tiny potential difference multiplied by the charge transferred. How much am I transferring the charge? Some tiny amount. I'm just going to call that dq. Usually small charges you call dq. And let's continue this. So now I move the third charge. And as I'm doing that, notice the potential difference has now increased. Ooh, now it's going to become even harder for me. So in every step, as I transfer more and more charges, it becomes harder and harder. Next step, it becomes even harder because the potential difference has even increased more. I feel more repulsion. It becomes harder and harder and harder. So what I see is that in every step, the potential difference starts increasing. So in the next step, the potential difference is a little higher. That's why I'm writing a little bigger V to show that the potential difference is now a little higher times dq. In the next step, the potential difference is even more higher. Next step, even more, even more. And so in every step, this V keeps on increasing. Finally, now imagine I'm transferring the last charge. And I'm transferring the last charge. Okay, all 1 billion charges have been transferred. Now what's the potential difference? Well, when I'm transferring the last charge, my capacitor is almost completely charged. Now the potential difference is V. And so my last charge that I'm transferring, I have to muscle through a lot of repulsion and I'm doing the maximum amount of work. The work that I do now goes through the potential difference, capital V. So now and only now, when I'm transferring the last charge, that's when I transfer the charge to the big potential difference. And so clearly, if I add up all these charges, all the dqs, I should get the total charge transfer q. I should get that. But can you now see why the total work done is not just q into v? Can you again, at this point, can you pause the video and come up with an explanation by looking at this summation? It's mathematical now. Why is it not q times v? All right, hope you tried. The main reason is because not all the charges went through the potential difference, capital V. Only that last dq went through it. And that's why, because not the rest of the charges went through smaller potential difference, the work done for the rest of the charges is smaller, the total work done should be less than QV. Does that make sense? Okay. So now, how do we calculate this summation? Well, here's a clue. This dq, if you ask me, we know that dq is a small amount of charge, right? So it's a small fraction of q. How small is a fraction of q? Well, it's an infinitesimally small part. Meaning we have taken q and divided into almost an infinite amount of parts, and each tiny infinitesimal is what we call as dq. That means this is an infinite summation, and whenever you're doing something like this, we call that an integral. So we have to set up this integral. So how do we set up the integral? So whenever you're integrating, you will always have a starting point and an ending point. In our case, we have a starting charge of 0 and we have an ending charge of capital Q. So whenever you're integrating, you start with somewhere in middle. So let's consider this situation where right now, let's say the charge on this plate, negative charge minus Q, the charge on this plate is plus Q. It's not as much as capital Q, it's less than that, some value, some random value. And as a result of this, there is some potential difference which is less than this number. So I'm going to call that as small v. And now let's assume that we're going to transfer an additional charge. That's how we usually do an integral. So let's now calculate how much work, tiny amount of work that we need to do in transferring an additional charge from here. So let me, an additional charge of dq from here to here. How much work do I need to do? Well, that work done, that small amount of work that I have to do,
would equal, same formula, the potential difference V times the charge dq. And I could ask now, hey, what is that potential difference? Do I know what that potential difference is? Well, think about it. If I know the capacitance, and let's say the capacitance of this capacitor is C, then we know the capacitance formula. Capacitance is how charge divided by voltage. So at any point, voltage, so let me write that down. Capacitance is charge by voltage. So at any point, voltage should equals charge divided by capacitance. So I know that my voltage at this point should be the charge right now divided by capacitance. So this is the tiny amount of work I did in transferring a small amount of charge dq. Now to calculate the total work done, I integrate this expression. So the total work done by Mahesh, that's going to be an integral of this expression, q by c of dq. So basically I'm writing the same thing but in a proper integral notation. And from where to where? What is the initial charge I'm taking? The initial charge is 0. I'm starting from 0, right? From q equals 0. And to what is the final charge I want on my plate? The final charge I want on my plate is capital Q. So from Q to capital Q. And now if we integrate this, we'll get the work done, and that will be our potential energy. So again, good time to, this is the last time I want you to pause the video and see if you can calculate this integral. All right. So since we are integrating Q with respect to dq, you can recall the formula. If you're integrating x power n with respect to x, it's going to be x power n plus 1 divided by n plus 1. So let me keep that denominator c. So over here you'll get q power 1, so it's going to be q power 1 plus 1, that's q square divided by 1 plus 1 by 2. And whenever we're integrating, we're going to put our limits from 0 to q. Let me make some space. And so we put down our upper limit, so that's q square over 2c minus the lower limit, that is 0. And therefore, this is our work done. And hence, now let me write that somewhere over here. The total energy stored must be, in a capacitor, must be q square divided by 2c. And if I substitute q is equal to c into v, I can say total charge should be equal to total capacitance into voltage. If I substitute that, I can also write this equals, let's see, I'll end up with half. If I put CV, c square v square, square cancels, you'll get c v squared. And if I substitute for c over here, c is equal to q over v, then I'll get, and you can do that yourself, you'll get it as half q. Half q times v. And you can check that. All I'm doing is substituting these values over here and changing the variables. And what's interesting is that whatever we had predicted wrongly, the actual answer is half of that. And although that's not very logical, you can't logically, I mean, it's hard for me to logically explain why it's half, not 1/3 or 1/4, because there's an integral coming. But at least it makes sense that it's less than what we predicted, because of what we explained earlier. Not all the charges are moving through that entire potential difference, capital V. So this is how we calculate energy stored in a capacitor. This picture shows a couple of girls standing inside a metallic cage, and somebody's trying to electrocute them using lightning, and nothing seems to be happening to them. She seems happy. Why? Now, if you're thinking, hey, maybe the electricity is not much over here, maybe it's a very tiny spark, well, the same effect can be reproduced using millions of volts, lightning which is produced due to millions of volts of potential difference using what we call Tesla coils. And you can see the same effect. People inside a cage, lightning is striking that cage, but nothing happens to them. Why? Well, metallic cages are basically conductors. So let's explore how conductors deal with electric fields, and maybe we'll be able to answer this question by the end of the video. Say we have a positive charge kept somewhere in space, and close to it we're going to keep a spherical conductor. Imagine a metallic sphere with a hole inside of it, the cavity inside. And let's say it's neutral. The question now is, if we are in electrostatic conditions, meaning there are no moving charges, how would the electric field change due to the presence of this conductor? We can begin by asking, why should the electric field even change because we have kept a conductor now? Well, here's the thing.
conductors have free electrons inside of them. And so if you consider a free electron somewhere over here, because there's an electric field, it's going to put a force on this electron. Because it's negative, the force would be in the opposite direction of the field direction. And as a result, this electron would start moving. But we say, hey, we want to be. This cannot be in electrostatic conditions. Electrons will start moving. So again, the question is, if no electrons are moving, how would the field look like? Can you pause the video at this point and try to give it a shot? Try to think about how the new field would look like. All right. So if we don't want any electrons to move, the condition is simple. There shouldn't be any electric field inside the conductor. So in electrostatic situation, the field inside the conductor must be zero. So we can go ahead, you can delete the field inside. So let me just rub this field. So the field inside must be zero. Then and only then, this electrons inside the conductor will no longer experience a force. And this is nothing special. There's nothing special about a spherical conductor. This has to be true for any conductor, which means we can now go ahead and write a general conclusion. In electrostatic conditions, electric field inside any conductor must be zero. But you could ask, well, what exactly is happening? What's happening to that electric field? And well, here's how I like to think about it. We've already seen these electrons are gonna, when there was a field over here, the electrons start migrating towards the positive charge. And as a result, they end up coming somewhere over here. They can't move outside the conductor because it's an insulator. Imagine it's vacuum. So they'll all get migrated somewhere over here. So all our negative charge will get accumulated over here. And because this is a neutral conductor, if the negative charge gets accumulated over here, it must have left a positive charge somewhere. And wherever there's a positive charge, more electrons would just keep accumulating. Eventually, there will be a positive charge somewhere on the outer surface of this conductor, somewhere like this, so that the total charge on the conductor must still be zero. Charge conservation. We cannot create or destroy charges. And because of this positive and negative separation, they are now going to start producing their own field. They're going to start producing a field inside. Let me use a different color for that. Let's say I'm going to use blue to represent the field that they have generated. So they might generate a positive and negative field that would look like this. And guess what? This field, the internal field, exactly matches and cancels with the external field. And because of that, the total field goes to zero. Now you may ask, how do you know that it exactly matches? Well, it has to. Because if it didn't exactly match and it didn't go to zero, electrons would still be moving. So think of it this way. The electrons will keep moving until the electric field generated inside matches and cancels out with the electric field from the outside, making sure that the net electric field inside the conductor has to be zero. Beautiful, right? So is this how our electric field is going to look like? No, not really. We're still not done yet, and things are going to get more interesting now. Now think about this. Because electric field everywhere is zero, this means that our entire conductor must be an equipotential surface, meaning that every single point on the surface or inside the surface, inside the conductor, should have the exact same potential. Now, again, I want you to pause the video and think a little bit about why should this be the case? Why, if we say electric field is zero, it should be an equipotential surface? Can you try and make that link yourself? All right, here's how I like to think about it. Consider any 2 points on this conductor. Maybe say one point inside over here, maybe another point inside the cavity somewhere over here. Now imagine you have to take a charge from point A to point B. In doing so, how much work would you do? Well, think about it. There is no electric field inside. If there's no electric field inside, you don't have to do any work against the electric field, which means you do zero work. And that should be true for any 2 points. So let me write that down. This means the work done in moving any charge between any 2 random points A and B should be zero. In other words, potential at A must be exactly equal to potential at B. And A and B can be any 2 points on the surface, inside the cavity, any 2 points, because there are no electric fields. And what does that mean? That means the potential everywhere must be the same, meaning our entire conductor is an equipotential surface. So another interesting thing we see is that in electrostatic conditions, conductors,
the entire conductor must be an equipotential. Again, nothing special about spherical conductors over here. All conductors should obey this rule. But you may ask, okay, how does that affect our electric field? Well, remember one property of an equipotential surface? These surfaces must always be perpendicular to electric field. And if you're wondering why should this be the case, I've spoken about this in great detail in a previous video on equipotential surfaces. So feel free to go back and check that out. But here's the thing. Over here, if you look now, this means that all these field lines which are touching our conductor must be perpendicular to the surface, and they're not. Over here also notice they're not perpendicular. This angle, these are not perpendicular. So somehow the field lines must change, must bend to ensure this is true every place. So again, can you pause the video now for one last time and think about, try to draw a sketch of what this would look like. All right, here we go. So the field lines must bend in such a way as to they are perpendicular at every point they are meeting the conductor. And so if you look at this, this means that this conductor is sort of like sucking the electric field. And that's why even these field lines are gonna sort of like bend towards their conductor, because they're sort of like getting sucked. Now look at how complicated this situation has quickly gotten. But we now understand that. We understand why this has to be true, because it's an equipotential surface, because of some basic rules that we had learned earlier. Now let's see if we can answer our original question. Imagine this field was incredibly strong and there was air over here. In such cases, you can get lightning. And we'll talk more about how that happens and all that fun stuff in the future videos. But let's say there is this lightning strike happens. Now where will that lightning go? Can it enter inside the conductor? Well, remember, lightning is basically charges moving in an electric field. Now, if there is no electric field inside a conductor, the charges will not move inside the conductor. So what will happen is that these electrons or these charges will find a way to go through the surface and eventually the ground. This means if there was somebody standing inside the conductor, and let's say she was touching the inner surface, she will not be electrocuted by that lightning. Now here it doesn't look so dramatic because it's a thick conductor, but the same thing would work even if it was an incredibly thin conductor. That's exactly what's happening over here. This is a completely closed conductor, because of which when she's touching the lightning cannot enter the surface, and that's why she's not getting electrocuted. This effect is called electrostatic shielding, because as we can see, the inner surface is shielded from the outer electrostatics. And this was first discovered by Michael Faraday. And so a closed metallic conductor is often also called a Faraday cage. So we would say that these girls are standing inside a Faraday cage, which is shielding them from the outside electrostatics, and that's why they're not getting electrocuted. This is also the reason why aeroplanes can get struck by lightning and nothing will happen to the inside, because the entire aeroplane is a metallic body. It acts like a Faraday cage, and therefore lightning will not penetrate. And in most cases, even when the lightning strikes an aeroplane, it doesn't do any damage. Imagine we have a spherical conductor with a cavity inside of it. And in that cavity, you have kept a positive charge. Let's say imagine it's floating in air over there, okay? And it's not at the center right now. The question you want to try and answer is this. See, this positive charge is going to start producing an electric field. And that electric field is going to start sucking the electrons from this metal. Remember, metals have free electrons. They can move under the influence of electric field. So as a result of that, electrons will get sucked in. And so there will be some negative charge getting induced over here. As a result of that, there will be some positive charge getting induced on the outer surface. And as a result of that, our electric field is going to get modified. So the question is, once all the electrons have stopped moving, once we have reached electrostatic condition, we have to answer three questions. What will be the total charge on the inner surface and how the distribution would be? What will be the charge on the outer surface and how the distribution would be? And what would the new electric field lines roughly, the sketch of that, how would that look like? So these are the three questions we're going to try and answer. So how do we do this? Where do we even begin? This looks like a very complicated, challenging puzzle. Well, what I like to do, let me first dim the electric field lines a little bit.
All right. So what I like to do is go back to one of the basic things we've seen about conductors and electrostatics. We've seen that in electrostatic conditions, conductors should always have zero electric field inside of them. Why? Because if there are any electric fields over here, they will start pushing on the electrons and the electrons will start moving. That means we are not in electrostatic condition because electrons are moving. So whenever we are in electrostatic condition, automatically it means that there are no electrons moving, automatically it means that the electric field must be zero. And if you need a more refresher on, on this concept, we've talked about this in great detail in a previous video on electrostatic shielding, so feel free to go back and check that out. But anyways, let's come back to our question. We know because of this electric field generated by the positive charge, it's going to start, sucking in negative charges. So there will be some negative charges over here. And because our conductor is neutral, if there are some negative charges which are induced over here, because of that, some equal number of positive charges should get induced on the outer surface. So there should be some positive charges induced on the outer surface. And our goal is to figure out how much these are. Okay? Because we are given that this inner charge is plus Q. So let's start with the induced inner charges, the purple charges. How much would that be? Would it be equal to negative Q? Would it be more than negative Q? Would it be less than negative Q? Or do you think it's possible, do you think there is not enough information, we'll not be able to calculate that? How do we do this? How do we figure out how much these negative charges could be? Well, at first it looks like, how do I know? Like, how would I know in the electrostatic situation exactly how much of the negative charges would come? Maybe it depends upon the position of this charge. Maybe it depends on the strength of this charge. I don't know for sure. So how can I calculate that? Well, we can use this to our advantage. We know that the electric field has to be zero. So the negative charges induced must be in such a way that they should kill the electric field over here. But how? How do I figure out exactly how much? What's the connection between charges and electric field? Ooh, Gauss's law. Gauss's law is the one that connects charges and electric field. So why don't you pause the video and see if you can somehow use Gauss's law to figure out exactly how much negative charge should be induced inside. So why don't you pause the video and think about that? So what I would like to do is I'm going to choose a Gaussian surface and make sure that Gaussian surface, the entire surface, choose a sphere, but the entire surface lies within the bulk of the conductor. So imagine this is my spherical Gaussian surface. Now because I know that under electrostatic conditions, electric field everywhere over here is zero, therefore I know that the total flux through that surface must be zero. So net electric flux must be zero, which means that the total enclosed charge must be zero. And from that, I think I now understand how much this negative charge should be. If the total enclosed charge should be zero, and I already have plus Q, that means the total negative charge must be negative Q. So this should be negative Q. Only then the total enclosed charge becomes zero. And what's amazing is that it doesn't matter where I position this little Q. It doesn't matter where I move it. The total induced must be negative Q. And therefore the total induced on the outer surface should be plus Q. It has to be, because we know that the conductor is neutral. So if there is negative Q induced on the inner surface, plus Q must get induced on the outer surface. So the charge on the outer surface is plus Q, the charge on the inner surface is negative Q. And so what's interesting is whatever charge we introduce inside, automatically that charge gets manifested on the outside. Wonderful, isn't it? That's an amazing thing about a conductor. But we're not done yet. We also need to look at the charge distribution and what the electric field looks like, what the new electric field is going to look like. So let me bring back the original electric field. Here it is. So this would have been the electric field at the beginning before all of these charges got induced. The question is, what would this new electric field look like? Let's do this in steps. Let's first look at the electric field in this region. What's gonna happen to that? We know that electric field has to be zero in understanding electrostatic conditions. So we can go ahead and rub that.
So let me do this. This electric field is going to disappear. Alright, so we got one part solved. The next question I want to try and answer is, how would the new electric field inside look like? Would it look exactly this way? Would it just look like this, or do you think it's going to change? Again, can you pause the video and think a little bit about this? Alright, we know that because the entire conductor has zero electric field, it's an equipotential surface. Again, something that we have talked about in previous videos. But because our conductor is an equipotential surface, that means the electric field over here must always be perpendicular to the surface. And you can see that these electric field lines are not. Over here, they're not perpendicular. Which means these electric field lines are going to bend in such a way that they try to be perpendicular wherever they meet the surface. So the way it's going to look like, again, it's a rough figure. The electric field lines are going to bend somewhat like this, from positive to negative, but they also always ensure that the angle between the field lines and the inner surface is going to be 90 degrees. Alright, I have another question for you. How do you think would the charges get how would the charge distribution look like? Do you think it's going to be a uniform charge distribution over here, or do you think there's going to be, some part is going to have more concentration while some part is going to have less concentration? Again, can you pause the video and think about how the charge distribution would be on the inner surface, this negative Q? Alright. So because the charge is closer to this surface, and you can see the electric field lines over here are stronger, and they're close to each other, and the electric field over here is far away, and which means it's weaker, we can immediately guess that there should be more charges over here, and there should be less. So you would have stronger charge distribution. I know it's a little hard to see, but there should be more charges on this side, and there would be less charges will get more concentrated over here. Charges will be less concentrated over here. Alright, final question. How would the outer charge distribution look like? Would it be uniform because it's a sphere? Or do you think it's going to be, there'll be more positive charges over here because there is more negative charge over here, and there will be less positive charge over here because there is less negative charge over here? So, final time. Can you pause and think a little bit about how would that be? Alright. Now when I first thought about this, I thought, yeah, because there's a lot of negative on this side, there would be a lot of positive over here, lot of positive charge over here, and there should be less positive charge over here, right? But think about this. There is no electric field in between. The outer charges are sort of disconnected from what's going on inside. And that's the key, which means that the outer charge distribution is absolutely independent of how the inner charge distribution is happening. The two are literally disconnected. Therefore, the outer charge distribution does not depend upon the inner charges. It only depends upon the geometry. And because it's a sphere, we've already seen before, because of the symmetry, the outer charge distribution has to be uniform. And as a result, this electric field is also going to change slightly. Remember, this electric field now appears to be coming from this charge, but because we have a symmetric uniform charge distribution, the electric field is going to be radial, so it's going to appear to be coming from the center. And so the new electric field, outer electric field, is going to be radial. What I absolutely love about this problem is it's really challenging, but to answer that, we just needed the core of this is going back to the basics, that in electrostatic condition, electric field inside a conductor must be zero. Let's talk about field energy. How much energy is stored in an electric field, and derive an expression for that. And I'll also tell you why this concept truly blows my mind away. Now, because we want to keep the math simple, we'll derive this expression using a familiar setup. So we'll take a charged capacitor. Imagine we have some capacitor which is charged to some voltage. Let's start by asking ourselves, what is the energy that is stored in this capacitor? We've already derived that expression in previous video. So the energy stored in that capacitor, we use green for energy. U is, there are multiple equations. One of the equation happens to be, the one that I want to use over here, is half CV squared.
Now, because I want to talk about energy stored in electric field, what we'll do with this equation is we'll try to somehow bring electric field into this equation and get rid of C and get rid of V. So I want you to think a little bit about how can we do that? How can we bring electric field in this equation? Well, I'm looking at potential difference over here. We've seen the connection between electric field and potential difference again in previous videos. We've seen that electric field can be thought of as the negative potential gradient. What does that mean? It basically means you can think of electric field as how much potential difference exists per meter, right? That's a way to think about electric field. And over here, D is the distance over which that electric field exists. That basically is the distance between the plates of the capacitor, because this is where the electric field will exist. So that's how I can bring electric field into the picture by substituting for V. So V happens to be, from this equation, minus E times D. Okay, that's great. I also want to get rid of that capacitance. I don't want that. Okay, how can I do that? How can I get rid of the capacitance? Can I substitute something for this? There's a parallel plate capacitor over here, so probably we can substitute the expression for parallel plate capacitor, which you probably studied earlier, and we can see what we get. So why don't you pause the video, substitute that expression, and see what we get. All right. So the equation for the capacitance or parallel plate capacitance is, we've seen before, it's epsilon naught into A divided by D, where A is the area of the plate and D is the distance between the plates. So if I substitute that over here, let's see what I get. What I'll end up with is half C, which is epsilon naught into A divided by D, multiplied by V, which is the potential difference, which I can write as negative E times D. When I square that, the negative sign goes. That's great. So I'll end up with E square D square because I'm squaring it. All right. So we can simplify. The D goes away. And so what I get now is U, that is the energy stored in the capacitor, equals half epsilon naught. Let me write the E square first. I got what I wanted. Multiplied by area times the distance. What is that? Well, in general, that may not make any sense, but over here, this is the area of the plate multiplied by the distance between the plates. When you multiply that, you're actually calculating the volume of the space in between the two plates, right? So that's the volume. So I'm just going to write that as the volume. And because I only want electric field on this side, I'm going to divide by volume on both sides. And when I do that, what I'll end up with is, let me just cancel that volume over here, bring that volume over here. This is the expression that I end up with. Now, why is this mind-blowing? Because all I did is took an equation that we were familiar with, did some substitution, and yeah, I got another equation. Let's see what this equation is trying to tell us. So on the left-hand side, I have energy stored in the capacitor divided by the volume of the capacitor. What is this? Well, when you take mass and divide by volume, you get density. It's a measure of how crowded mass is or how compact mass is. Charge divided by volume is charge density, measure of how compact or how crowded charge is. So, what do you think is energy divided by volume? Well, it has to be energy density. So let's write that. This is energy density. It's a measure of how compact or how much energy is crowded in this space. So why is this concept so special? Well, if I asked you, hey, where is this energy stored? What would your answer be? Well, you would say, hey, this is basically electrostatic potential energy. It is the energy stored in the charges, the configuration of charges. Just like how gravitational potential energy is stored in the masses, configuration of masses, right? Yes, now a different way to look at it is we are saying, hey, this is the energy stored in space, in vacuum. And how can vacuum have energy? Well, because there is electric field. So what this is saying is, in separating the charges, we have created an electric field. And that energy is not stored in charges, but it's stored in electric field. Field itself can have energy. And this is so incredible because this means vacuum. There's no stuff over here. Even though vacuum has nothing, due to fields, it
can store energy. Have you ever imagined vacuum having energy? That's a pretty radical concept. Now, don't think that this is a new kind of energy, not at all. It's just that we earlier thought of this energy as energy stored in charges. Now we're looking at that same electrostatic potential energy and looking at it in a different perspective. Looking at this new radical perspective, we're saying it's energy stored in electric fields, energy stored in space. And this can, motivate all sorts of deep philosophical questions like, hey, is energy real? Is the field real? And you can debate about that for hours together, and that's why this concept is so incredible and deep. But besides all these thought-provoking motivations, there's another practical reasons why this equation is so awesome. You see, although we derived this expression for a very special case where we had a parallel plate capacitors and we have this nice and uniform electric field, turns out that this expression holds true in general. Doesn't matter whether you have capacitors. In general, if you have a field, electric field, uniform or not, the energy that the electric field carries in space, the energy density in space, will always be this number, half epsilon naught E square. And the units, of course, would be joules per meter cube. So this is a general expression for how much electric field carries energy density. And why that's important is because you might know that light is a form of energy, right? However, about 300 years back, if I asked anyone in the world, hey, how do you calculate the energy that the light carries? Nobody would have a clue because nobody knew what was light made of. Of course, you would have some clue that brighter light has more energy, but you wouldn't know how to mathematically calculate it. However, you might now know that light, today we know that light is an electromagnetic wave, which basically says that light is made of electric and magnetic fields. So this means if I have to calculate how much energy light carries, all I have to do is figure out how much energy is present in the electric fields and the magnetic field. And since this is a general expression, I can use the same expression to calculate how much energy is present at least for the electric field part of the light, and a similar expression can be derived, and so I can also use that to calculate how much energy the magnetic field part contains, and that total energy will now represent the energy of light. And so what really blows my mind away is that never in my wildest dreams did I think that by calculating how much energy a capacitor has, I would be equipped to at least in part calculate how much energy light carries. That's insane if you ask me. Lots of people have become used to tapping, swiping, access information and entertainment. But how do these everyday devices work? We can see touch screens everywhere. They've become a part of our everyday lives. We barely bat an eye while scrolling through Instagram or retweeting something on Twitter. But how does putting a finger on your phone's screen to perform these tasks actually work? Let's explore that in this video. Now, to begin with, we will look at the structure of a touchscreen display first, and then we will go into the physics of it and understand how does a phone actually recognize where are you touching the screen. It turns out that a touchscreen display is comprised of many layers. At the very top, we have the protective glass, which is chemically toughened. And smartphone glasses are over 5 times stronger than normal glass, and that's why the screen doesn't crack easily when you mistakenly drop it. We have the LCD screen at the bottom that produces the images that you see. And between the LCD screen and the toughened glass are several sheets. One of them, the top sheet, is a sheet containing a grid of hair-thin lines of a conductive metal, and this conductive metal could be indium tin oxide or copper. And I have shown them as colored, but these lines are transparent, and of course there are many of such conductive lines on the top sheet. Below that, there is an insulating layer. This is an insulating layer which separates the conductive lines at the top from this sheet that also has hair-thin lines of a conductive metal, but in a direction perpendicular to the first one. Let's look at the structure of the top sheet and the bottom sheet more closely now. Each of the rows of the top sheet, they also have a metal plate attached to them, and that is coated with
a conductive material like copper or indium tin oxide. And similarly, each of the electrode in the bottom plate also has a metal plate attached to it. And there is a current flowing in the top sheet along these blue wires, these blue electrodes. As a result of which, there is some positive charge that is deposited on all of these plates. And when these two sheets are placed on top of the other, they form a grid-like pattern, which kind of looks like have this grid of tiny capacitors. Because there is a positive charge at the top plate, it induces a negative charge at the bottom plate of the capacitor, and with no external disturbance whatsoever, that charge is maintained constant by the phone's battery. Now over here you see around 35 capacitors, but on your phone screen you have around 1500 rows. So you can imagine the number of capacitors that are there on your touchscreen display. Now let's pick any one of these capacitors and look at it more closely. So we have the positive plate at the top and the negative plate at the bottom. Since there is charge on both of these plates, there are electrostatic field lines which go from the positive end to the negative end. And these fields aren't getting disturbed because there is nothing that is disturbing them. The phone's battery is maintaining a constant charge on both of the plates, and the electric field is also maintained with no disturbance whatsoever. But now comes the interesting part. Let's say we bring a conductive material like a finger, something conductive like a finger, close to one of this capacitor. Why don't you pause the video at this point and think about, will the presence of a conductive material like a finger, will it affect the electric field in any way, or will there be no effect? Pause the video and think about it. Alright, hopefully you have given this a thought. Now, human body is made about 60% water, and pure water is an insulator, but the water that is inside of us is impure. It is loaded with ions, atoms or molecules that have a net electric charge. And the presence of these charges changes or distorts the electrostatic field that was present between the capacitors. And now the field lines look like this. It is as if your finger is stealing away some of the electric field lines from the capacitor. Now the electric field strength has decreased slightly, and we know that electric field strength is just equal, this is equal to V by D, the potential difference between the plates divided by the separation between them. So if the electric field strength decreases, even the potential decreases. This drop in potential is detected by the sensor, and then the sensor pinpoints that particular location where the voltage has been dropped. And that is how basically a touchscreen display works. Now there are a couple of things that you might have experienced. Something like if there are water droplets on your touchscreen starts behaving very randomly as if you have touched at multiple locations on the screen. That is because presence of water distorts electric field at many of these capacitors, and the sensor detects all of those changes in the electrostatic field, sends that signal to the processor. So your phone ends up doing multiple things at once, maybe opening multiple apps all together. And on the other hand, if you're wearing gloves, you might have experienced that you aren't able to operate a touch screen. That is because the fabric of the glove is an insulator. So when you bring your finger close to the screen, there is no change in the electrostatic field and there is no voltage drop and nothing is detected by the sensor. Now the touchscreen displays that are used these days, they do not really use this grid-like pattern that you see on the screen because there are a couple of disadvantages which are associated with this. So one of them is that this pattern starts becoming visible because you have two layers on top of each other compared to one layer which might do the job. Now you have another transparent layer beneath that. So the pattern starts becoming visible slightly, and that is not the goal. The goal is to make it completely transparent so that the images that are formed on the LCD are clearly visible. And secondly, the electric field is inconsistent. That is because you have these capacitors and the electric field is strongest in between these plates. And there are these spaces around and between the capacitors where the electric field is not as strong as it would have been between the plates of the capacitor. So when you bring your finger closer to a capacitor, there is not enough distortion of the electrostatic field and there is not enough drop in the voltage for the sensor to detect it. So there needs to be some change to the design of how the grid is formed. And turns out there is one grid that is followed these days. Let me make some space. That pattern is called a diamond pattern. Now over here, the plates are not on top of each other. They are shifted slightly. You can imagine that the top sheet has been shifted slightly to the right and the bottom sheet is where it is. So as a result of which, the plates are not on top of each other, but the plates kind of look like this. And there is an advantage to this because now your electric field lines, which could look like this, your electric field lines are not localized or not
concentrated in one particular space. They are more spread out in the space so that when you bring your finger closer to the plates, you get a proper distortion of the electrostatic field, which is then detected by the sensor and the location is registered by the processor. So this is the technology that mostly is followed right now in touchscreen. And the basic principle still remains the same, which is that bringing in a conductive material closer to the capacitor changes the electrostatic field, which then lowers the potential, or there is a voltage drop that is detected by the sensor, and that particular location is pinpointed and registered. We use microphones most of the time. Microphones are in AirPods, earphones, even in your mobile phones. And also, you might have seen singers or podcasters recording in a studio, singing or speaking to a microphone. Whether you are plucking, drumming, singing, or speaking, microphone creates a high quality audio. But how do these microphones work? That is something that we will explore in this video. Alright, now there are different types of microphones, and one thing common in all of the microphones is that it takes in sound waves, which is also called a pressure wave. As it changes air pressure near its source, it takes in a pressure wave and changes it into electrical energy, something like a voltage signal. It is taking in variations in air pressure and changing it into electricity. All of the microphones do this, and there are many types of microphones. There is dynamic, electric, condenser. They carry out the same process but with different methods. Here we will look into how condenser microphones change audio signal to an electrical signal. Let's briefly talk about its structure first and then the physics of it. So here we have a condenser microphone, and inside of the microphone there is a metal ring. This is a metal ring with two metal plates attached at both the ends. One plate is called a diaphragm. This is a diaphragm. And the other that you cannot see here, it is on the other side. It is at the back. That is called a back plate. And these plates are mostly coated with gold because gold doesn't corrode. And this is how it looks like. Here you see the metal ring, and this is a diaphragm. On the other side there is a back plate, which is also a metal plate. Now let's look at a sectional view. Let's look at it from an angle. So for that, let me make some space first. Okay, here we have a mic, and here we have the metal ring at the top, and this right here is the diaphragm. This is the back plate, and both of the plates are connected to a battery. In between these plates there is an insulator, that is usually air, because air is an insulator. This setup now starts acting as a capacitor because you have one positive plate and you have one negative plate, and there is an insulator, there is a dielectric between them. So this starts behaving like a capacitor. Now let's go back to the main process, the main function of a microphone. It converts one form of energy into another. Sound energy or variations in air pressure into electrical energy. How do we get electricity out of mechanical motion of air particles which produce sound? One thing that we can be certain of is that since the pressure of the air is varying, it is changing because of someone speaking into the mic, the final electrical signal that we are interested in should also vary and change, right? We know that a sound wave can be plotted, like you can plot pressure to distance, pressure versus distance, and the plot could look somewhat like this. We will have points of very high pressure, these are compressions, and you will have points of negative pressure, which are rarefactions. So if the input audio signal is changing, the output electrical signal should also change, right? Other than this, you would also want the pitch of your voice to be the same, right? If someone has a heavy voice and they're speaking into the mic, when you hear your recording, you should be able to hear the same pitch. The pitch should match. And pitch is defined by the frequency. So that means the frequency of the electrical voltage signal should also be the same as the frequency of the sound wave coming in. We can increase the amplitude of the electrical signal later by running it across an amplifier, so we need not worry about the loudness for now. One thing that we can worry about is keeping the pitch same. So our voltage signal, electrical signal, should kind of mimic or copy the audio signal coming in. It should have the same frequency, and that means it will also vary just like the audio signal. Now the question is, how do we get the voltage changing? We know that if a capacitor is connected across a battery, it will start storing charge.
there will be a plate with a positive charge. In this case, the back plate. This is the back plate. This will have a positive charge, and the diaphragm, the other plate, that will have a negative charge. And in some time, it will get fully charged, because of which a potential will develop across the capacitor. So maybe if we change the voltage of the capacitor at a certain frequency which matches the frequency of the audio signal, maybe our job might be done then. Now, how can we change the voltage across the capacitor? We could change the amount of charge on these two plates and make the voltage change. But the voltage should mimic or copy the audio signal, right? It should have the same frequency at all times. How do we make the charge move instantaneously from one plate to other, exactly knowing the frequency of the coming sound, so that we are able to change the voltage according to that? That seems difficult. That seems quite difficult. Instead of changing charge to change voltage, we can also change the capacitance itself, right? So what are the ways of doing that? Capacitance depends on just the physical characteristics of the plates. So its area, the material between the plates, and also the distance between the plates. Changing the material in between or the area would be a difficult task, right? No one is getting inside a mic to do that all the time. We can, however, change the distance between the plates. And turns out that is what happens. The diaphragm, this diaphragm that you see, it is extremely, extremely thin. So thin that when the pressure wave, when the sound waves are coming in and when they strike it, it starts vibrating. When there is a compression, it is pushed inside, and when there is a rarefaction, it is kind of pulled outside. And how will that look? That could look somewhat like this. So let's say you have sound waves coming in from the left-hand side, and when there is a compression, it pushes the diaphragm inside, and when there is a rarefaction, it pulls it outside. So constant sound waves coming in also vibrates the diaphragm according to that. When the diaphragm is pushed inside, the distance decreases, and we know that capacitance is epsilon naught A divided by D. So nothing in the top is changing, but D is decreasing, which means the capacitance should increase. Okay, so this is great, because now we know that capacitance can change, and it can change totally mimicking or copying the audio signal. But we wanted a varying voltage, something that can be recorded. So if the capacitance is changing, then the voltage should also change, right? Because we know that Q, this is equal to C into V. There is one problem over here. If the capacitance increases, if this increases, then if there is just a capacitor and a battery in the circuit, the voltage across the capacitor will always be fixed. It is equal to the battery voltage. VB, this is equal to the voltage across the capacitor. VB is the battery voltage. So when the capacitance increases, more charge gets stored on the plates, and there is no change in the voltage. So if we are somehow able to make the charge fixed on both of these plates, then changing the capacitance will lead to the change in voltage, right? So for that, what we can do is we can add a huge amount of resistance over here. Something around 1 giga ohms or mega ohms. So this resistor, it will keep the charge on the plates constant. There won't be any movement of charge. Now when the capacitor increases, the charge is fixed and the voltage decreases, so that their product is equal to the fixed charge on the plates. This means that now VB, this is no longer equal to VC. It is no longer equal to VC, because VC has decreased, right? If capacitance has increased, the potential across the capacitor has decreased. And if capacitance decreases, then the potential would increase. So if VC is decreasing, then there must be another voltage drop, so that the addition is still equal to the battery voltage. And that is across the resistor. Then it becomes equal to the battery voltage. So for example, if let's say initially the voltage across the capacitor, which was equal to the battery voltage, let's say 48 volts. When the capacitance has increased, some voltage decreased. So now let's say the voltage is 34, less than 48. So the extra voltage drop, that is coming from the resistor.
there is some voltage drop across this resistance, and in this case that would be 14 specifically. And similarly, if the capacitance decreased, then the voltage would increase. It would become more than 48, maybe 60. Then the voltage across the resistance would be minus 12. It would switch polarity, but their addition always comes out to be equal to the battery voltage. So as the capacitance oscillates with the same frequency as that of the sound wave, that leads to voltage change again in with the same frequency. And this leads to a voltage drop across the resistor again with the same frequency, completely mimicking the input audio signal. And then this signal, finally, let's see how that looks like. This signal is read across a resistor that is then sent to the amplifier to increase the amplitude. And if there is a phase difference, that is also taken care of. Alright, so that is how a condenser, and it is usually called a capacitor, that is how a capacitor microphone changes audio energy into electrical energy using capacitor. Sound waves strike the thin diaphragm, changing the capacitance of the capacitor, which leads to a change in voltage that leads to a voltage drop across the resistor, which is then recorded and sent to other components in the circuit. We know that air is an insulator, right? Yet over here we see an electric spark in the air. Or if we talk about a bigger scale, we see lightning moving across the sky and many times also striking the surface of the earth. Still we see electricity moving through air. What is happening here? How is this possible? In this video we will explore how are these electric sparks created. Let's say we have a conducting metallic sphere and we give some negative charge to it. So this negative charge will get accumulated at the surface of the sphere, and let's say we keep on adding more and more negative charge to this sphere, so all the charge gets accumulated at the surface. Now we can't keep on adding charge to this sphere forever because something interesting happens. Not on the surface though, not on the surface of the sphere, but in the air around it. Air has many atoms. It has nitrogen, oxygen, some helium. So the atom that is closer to the surface of this sphere, all of the negative charge will repel the electrons of the neutral atom. And as a result, the shape could get slightly warped like this. You have all of these electron clouds slightly moving away. Now it is entirely possible that there is enough charge on this sphere so that it creates a strong enough electric field which can even strip this atom of one of its electrons. So as a result, you get an electron and an ion. Now this electron starts accelerating to the right because there is an electric field which forces the electron to do so. This electron collides with another neutral atom, and if it is going fast enough, it can knock an electron off the neutral atom, turning it into another ion. Now you have the original electron and you have one more electron that was knocked off from this atom. Two electrons are now accelerating and they collide with more atoms and they knock off more electrons, and then those collide further and knock off even more electrons, like a chain reaction. This creates an avalanche of electrons and ions. It's just as if we have a board at an incline with all of these balls held up by very thin rubber bands. So thin that you place one extra ball and the band will break. Now if you let one ball roll down from the top, you can imagine what would happen. This string will break, and then these balls would start rolling down and break this string, the bottom string, and now all of those balls are rolling down. Just how the electrons are behaving in this case. But one more thing, if you reduce the slope of this incline, if you make it flatter, if you reduce the slope, maybe this ball does not have enough velocity or enough kinetic energy so that when it strikes the balls that are held over here, maybe it doesn't break the rubber band. So there should be some slope to this board so that the ball has enough kinetic energy, enough velocity. Just like over here, the electric field should be strong enough so that it rips off an electron from an atom and gives it enough acceleration or kinetic energy to knock off other electrons from other atoms. Okay, so spark, where's the spark? If now I bring a sphere of zero potential, and let's say this is grounded, it is at a zero potential, there will be some positive charge that is induced on this sphere. As a result of the negative charge that is all accumulated over here, there is some positive charge induced, and there will be strong electric field lines from the positive end to the negative end,
finally you get a region of space which is basically full of ions and electrons, and it is so loaded of these charged particles that it essentially becomes a conductor. A huge current goes between the two. This results in a spark. So that is how an electric spark is created. High charge warps the nearby atoms, stripping away of one of its electron. You just need one, which then starts accelerating and colliding with other atoms, knocking off their electrons, and the same happens again. Eventually, the space gets loaded with so many ions and electrons that the air essentially becomes a conductor, and electricity starts flowing, and a spark is created. Now, there is an electric field magnitude at which the air becomes conductive, and the magnitude of that electric field is 3 into 10 to the power 6 volts per meters. So, if there is a sphere of 1 centimeter radius, then we can find the maximum potential to which it can be raised to. We know that V, this is equal to ER. So if R is 1 centimeters, that means 0.01 meters. So the potential, this comes out to be equal to 3 into 10 to the power 4 volts, or 30,000 volts. So no amount of charging could raise the potential of a 1 centimeter conducting sphere in air more than 30,000 volts. If you attempt to raise it even more, if you try to increase the potential by adding extra charge, that would just cause the surrounding air, that would rip off the electrons from the atoms in the surrounding air, and that would lead to the formation of this spark. Each second, the sun produces 3.8 into 10 to the power 26 joules of energy. In this video, we will see that the sun is not nearly hot enough to be able to produce this much energy. It is too cold, so cold that it shouldn't be alive. Let's see why. Now, as we speak, protons are smashing into each other in the sun's core, releasing a huge amount of energy. This kind of reaction is called a nuclear fusion. Just like as if we had two water balloons approaching each other with some velocity, colliding, and in doing so releasing the water inside. In nuclear fusion, we can think of energy released as water over here. But we know that the two protons will repel each other because they have the same charge. They are both positively charged. So how can protons come close enough so that they fuse to release all this energy? We can take some hint from this analogy. Only if the balloons are approaching each other with sufficient velocity, they will burst open to release all that water. Similarly, the protons must have sufficiently high velocity to begin with. Only then they can overcome the Coulomb repulsive force and fuse. For high velocities, we would need high temperatures. The temperature of the core of the sun must be high enough. This can be expressed mathematically. We can write that the average Ke of all the particles in the sun's core, it is proportional to the temperature. And when we remove the proportionality, we get 3 by 2 into the Boltzmann constant Kb into the temperature. This is the average kinetic energy of the protons in the sun's core. It is directly related to the temperature of the core. And value of this Boltzmann constant, that is 1.38 into 10 to the power minus 23 joules per Kelvin. We are interested in the temperature of the sun's core, so let's keep temperature on one side and bring everything else on the other side. So this is what our equation becomes. If we know the kinetic energy of the protons, then we can figure out the temperature, right? Now, protons, they repel each other. As they come close, their velocity must decrease, which decreases their kinetic energy as well. At this point, why don't you pause the video and think about where is this kinetic energy going? Is it transforming into something? Is it not? Why don't you pause the video and give it a thought? Alright. Naturally, if protons are just left to themselves, they would never want to approach each other. But when they are made to approach each other, in this case, because of high velocity, their potential energy must increase. So kinetic energy in this case is being transformed into the potential energy of the two protons. And according to conservation of energy principle, we can write that the total mechanical energy initially, when the protons were far apart, that is equal to the total mechanical energy finally, when the protons are close enough to fuse.
We can expand this and write it in this manner: the total mechanical energy and initially and the total mechanical energy final. Here U is the potential energy, initial and final. Now, initially, we can assume that the protons are far apart and they are not interacting with each other in any way. So, the initial UI, the initial electrostatic potential energy, is zero, considering that the protons are far apart and there is no interaction whatsoever. And final kinetic energy, that is also zero, because when protons are close enough, so close that they can fuse, they have lost all their velocity and they are about to go back, but they can't because they have come so close that they end up getting fused. So final K is also zero and initial potential energy is zero. That gives us the initial kinetic energy of both the protons, that is equal to the potential energy, the electrostatic potential energy of the two. Now let's try to work this out and figure out the kinetic energy. So this is equal to the final potential energy, that is 1 by 4 pi epsilon naught, into the charges, that is Q1, Q2, divided by the distance between the center of the two protons. Now this is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, and instead of this huge constant, we can write 9 into 10 to the power 9 into Q1, Q2. Both of them are protons, so both of them are positively charged and they have the same charge, and that is 1.6 into 10 to the power minus 19 whole square, because you have Q1, Q2 here, divided by R, the distance between the centers, which should be 10 to the power minus 15 meters or 1 femtometer. Only if the protons are this close, they will be able to fuse and release energy. We can work this out, or we can just directly multiply this with 2 by 3 into kb. That will give us the temperature of the sun's core. So multiplying this further with 2 by 3 kb will give us the temperature, the final temperature of the sun's core. And I encourage you to pause the video and try out this entire calculation on your own. Alright, hopefully you have given this a try. The temperature that you should have arrived at is 1.1 into 10 to the power 10 kelvins. But now, the real temperature of the sun's core is not this. It is much lower. It is 15 into 10 to the power 6 kelvins, or 15 million kelvins. It is much lower than what we arrived at. This temperature will not give enough velocity to the protons so that they can come closer and fuse. And that is why the sun should not be alive. But of course it is alive. How can that be? What is happening here? It turns out that classical physics, that is thermodynamics or Newton's laws, conservation of energy, they won't be able to explain all of this. But quantum physics does explain why the sun is alive. And it is quantum tunneling effect, which makes it possible for the protons to fuse even at a temperature of 15 million kelvins. Now, we will not be going into how exactly quantum tunneling helps, but the amazing thing is that just sitting on a chair with a piece of paper and some knowledge of electrostatic potential energy and conservation of energy, we were able to predict the temperature of the sun's core and form a really sound argument on why the sun shouldn't be alive. Let's solve a couple of questions on combination of capacitors. For the first one, we have 5 microfarads capacitors which are combined as shown below. What is the equivalent capacitance of this combination? We need to report the answer in microfarads. As always, hit pause and try this question on your own first. Alright, hopefully you have given this a shot. Now before we get into figuring out the equivalent capacitance, first let's label all the nodes and all the capacitors. So we can call this C1, this is C2, C3 and C4. And we can label all the nodes as well. We can call this A, let's say this is B, this is C, D, and we can call this node as well. We can say this is E. Okay, now our strategy would be to identify sets of capacitors which are in series or parallel, because we know how to calculate the equivalent capacitance of those capacitors which are in series and parallel. So first, let's try and understand the potential difference across C1. Let's see what is the potential difference across all of these capacitors so that we know if they are in parallel. Now across C1, the potential difference across C1, that would be, so let's write C1 here.
Across C1, the potential difference is VAB. This is VAB. Across C2, this would be VBC. VBC. But now, if we look closely, if we look at the terminals, so we have the terminals XY. Potential at E will be the same as the potential at A because there is no circuit element in between, so there is no potential drop between A and E. Similarly, potential at E should be the same at potential at C. Again, there is no circuit element in between, so there should be no potential drop, which means we can write this if VA is equal to VE and if VC is also equal to VE, then we can write that VA is really equal to VC. And if this is true, then VAB is really equal to VBC because we can write either as in terms of the other. We can write VBC as in place of C, we can write A, and these two become equal. So turns out the potential difference across C1 and C2 is the same, which means that they are connected in parallel. Now let's look at the potential difference across C2 and C3. Across C2, we already know, we have written it. This is VPC. And across C3, it's VCD. Now when we look at the diagram, we see that the point B is connected to point D with this wire. Between points B and D, potential drop. So VB should be equal to VD. There is no potential drop between them. And if VB is equal to VD, then in place of D, we can write this as VCB. So turns out the potential difference across C2 and C3 is also the same, VBC, or in terms of VCD. But that's the same since there is no potential drop across B and D. It is connected by this wire which has no circuit element, so no potential drop. So C1, C2, C3, all of them are really connected in parallel because the potential drop across each one of them is the same. So for C1, C2 and C3, we can find the equivalent capacitance by simply adding them, C1 plus C2 plus C3. Because if capacitors are connected in parallel, this is how you find the equivalent capacitance. And C4, in place of, now when we find the equivalent capacitance of C1, C2 and C3, we can replace all of that with just one capacitance. And then you have C4, which is connected in series. So the circuit looks like this. You have XY, these are the terminals, and then this is the equivalent capacitance of C1, C2 and C3, and then you have C4, which is connected to the equivalent capacitance. This right here is C4, and this right here is the equivalent capacitance of C1, C2 and C3. So equivalent capacitance of these three should be 15 because one is 5. This is 15 microfarads. And now this equivalent is connected in series with C4. So now we need to figure out the equivalent capacitance of these two. Then the relation for that, and I'm writing it on the top over here, it is 1 upon C final. I'm writing the final equivalent capacitance. This is equal to 1 upon C equivalent, which is this, that is 15, plus 1 upon C4, and that is 5. Now we need to work this out, so I would suggest you pause the video and work out this calculation. Here C equivalent is really 15 and C4 is 5. And when you work this out, you should get the final equivalent capacitance as 3.75 microfarads. Alright, let's look at one more question. Now here we have 6 3 microfarads capacitors which are combined as shown below, and they are connected across PQ. What is the equivalent capacitance C of this entire combination? Okay, like we did in the previous video, so we will start off by labeling all the capacitors. So let's call this C1, C2, this is C3, C4, and let's call this C5 and C6. And now let's label all the nodes that we see. So we can call this as A, B, let's call this C, and let's call this D. Okay, now again, our approach would be to identify those sets of capacitors which are in series or parallel to each other, because we know how to calculate the equivalent capacitance for those sets of capacitors. So let's try and identify them in this combination. Now this is connected across PQ. We can start off by trying to understand the potential difference across each capacitor. So for C1, across C1, the potential difference really is VAB. We can say that is VAB.
and across C4 it is C4, this is VAD. Okay, now the good thing is that the capacitors are of the same magnitude. It's 3 microfarads all throughout. So the amount of potential drop in this branch over here should be the same as the amount of potential drop in this branch over here. And that should mean that the potential at B should really be equal to the potential at D, because the amount of potential drop in this branch is the same as the amount of potential drop in this branch. So from VA, the potential starts dropping and it drops to the same value, drops by the same value, because the two capacitors are the same. So VB is really equal to VD. And what does that mean? That means that there is no current flowing, there is no charge flowing in this branch, the branch that has C5 and C6. So these two capacitors, they play no part, they play no role in the overall capacitors. They are not even the part of the circuit, because the potential across B and D, it's the same. So no current, no charge flows between B and D. So now the problem just has these 4 capacitors, C1, C2, C3 and C4. And with them, let's try and draw the new circuit. So the new circuit that would look like this. So we have C1, now we have C2, and these two are connected in parallel with C4 and C3. And then you have them connected to P and Q. So this is C1, this is C2, this is C4, and this is C3. Now these two are connected in series, and these two are connected in series, and they themselves are connected in parallel with this combination, C4 and C3. Now we can figure out the net capacitance. So for the top branch, the net capacitance would be, we need to find the equivalent capacitance for the top branch. That would be 1 by 3 plus 1 by 3. Similarly, for the bottom branch, it would be 1 by 3 plus 1 by 3. But this is 1 upon C equivalent. So when we find C equivalent, let's call this dash. This would be 3 by 2, that is 1.5, and similarly C equivalent here, that would be 1.5. And you can take your time and work out this calculation. And now those two combinations are connected in parallel to each other. So now the circuit that we have is, we have this capacitance of 1.5, and they are connected to PQ. Here you have P, here you have Q. Okay, now this is 1.5 and this is 1.5. Now they are connected in parallel, and with parallel, the equivalent capacitance is figured out by adding the capacitors. So this is 1.5 plus 1.5, and that would be 3 microfarads. Alright, you can try more questions from this exercise in the lesson. And if you're watching on YouTube, do check out the exercise link which is added in the description. फॉर्मूला सेम एज इट इज C इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. जैसे अगर ये वैल्यू नियर अबाउट है, फॉर्मूला लिखेंगे स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, हमने आपको बताया था न्यूमेरिकल लगवाने हैं ना। बुक पेज नंबर बताओ बेटा किसमें है। चलिए देखिए पेज नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, अब सीधे बैठ जाइए। न्यूमेरिकल नंबर 1, find out the capacitance of an isolated spherical conductor with radius 12 सेंटीमीटर। देखो बेटा फिर से आइसोलेटेड वर्ड आया है,
और आइसोलेटेड का मतलब होता है कि उस बॉडी का चार्ज कभी चेंज नहीं हो सकता। बात समझ में आई? आप चाहे स्फेरिकल में लें, चाहे पैरेलल प्लेट्स में लें, या फिर उस बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ भी हो, अगर आइसोलेटेड वर्ड जुड़ गया है तो उस बॉडी का चार्ज कभी चेंज नहीं हो सकता है। कह रहा है रेडियस इसकी दी हुई है बेटा 12 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल नंबर 1 गिवन रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 10 की पावर -2 मीटर। तो यह हो जाएगा आपका 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। सॉल्यूशन हेडिंग डालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। हमने आपको बताया था C इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R एंड R की वैल्यू गिवन है 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। और हमने आपको इसकी वैल्यू भी बताई थी। क्या बताई थी बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। यही होती है। यूनिट क्या होती है इसकी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट भी हमने आपको बताई थी। इसकी यूनिट क्या बनेगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ कर लेना और बाकी सबको एक तरफ कर देना है। तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। तो यहाँ लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू को उठा करके आपको यहाँ पुट करना है और आर की वैल्यू आपको गिवन है। तो यहाँ लिखेंगे C इज इक्वल 1/9 इंटू 10 की पावर 9। रेडियस की वैल्यू 12 इंटू 10 की पावर -2। ये बात समझ में आई? अब आप 10 की पावर 9 को ऊपर ले जाएंगे, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ आप लिखेंगे C इज इक्वल 12 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइड बाई 9। ये दोनों पावर साइड हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है। C इज इक्वल 12 टू 10 की पावर -11 डिवाइड बाई 9। 9 से 12 को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1.9 बन जा 9, रिमेनिंग पार्ट बचा आपका 3। फिर पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल इंक्रीज करेंगे तो 3 के आगे 0 इंक्रीज हो जाएगा। तो 9 3 जा 27। अभी भी कितना बचेगा? 3 रिमेनिंग बचेगा। फिर से डिवाइड करेंगे, फिर 3 टाइम्स जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1.3 इंटू 10 की पावर -11 फैरड। ये हो जाएगा इसका जनरली आंसर। अब पेपर में क्या करता है ये आप देखिए। जैसे अगर ये वैल्यू नियर अबाउट है, ये वैल्यू किसके नियर अबाउट है? अगर ये नियर अबाउट है 10 की पावर -12 के नियर अबाउट है तो 1 पीको फैरड की वैल्यू होती है 10 की पावर -12 फैरड। और अगर नियर अबाउट है मान लीजिए नैनो फैरड के तो 10 की पावर -9 फैरड। और अगर नियर अबाउट किसके? माइक्रो फैरड के तो 1 माइक्रो फैरड इज इक्वल 10 की पावर -6 फैरड। ये किसके नियर अबाउट है? पीको फैरड के। तो हम इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। आप इस डेसिमल को इधर ले आएंगे तो इसकी पावर में इंक्रीमेंट होगा कि डिक्रीमेंट होगा? इसकी पावर डिक्रीज हो जाएगी अगर डेसिमल को इधर लाएंगे। तो आपको इस डेसिमल को यहाँ से रिमूव करना है। रिमूव करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब ये 10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं C इज इक्वल 13 इंटू 10 की पावर, ये हो जाएगा -12। अब आप इसको लिखेंगे 13 पीको फैरड। पीएफ लिख दिया तो किसमें कन्वर्ट हो गया? पीको फैरड में। तो पेपर में इस तरह आपको आंसर लिखना पड़ेगा। अगर नियर अबाउट में है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे, या तो पीको फैरड में कन्वर्ट करेंगे, या नैनो फैरड में कन्वर्ट करेंगे, या माइक्रो फैरड में कन्वर्ट करेंगे। बात समझ आ गई? सेकंड न्यूमेरिकल देखिए। सेकंड में कह रहा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ स्फीयर विद द कैपेसिटेंस ऑफ 12 माइक्रोफैरड। इस बार आपको कैपेसिटी दी हुई है कंडक्टर की। आप कैपेसिटी को लिखेंगे, कितनी दी हुई है कैपेसिटी आपकी? न्यूमेरिकल नंबर 2 गिवन, आपकी कैपेसिटी गिवन है C इज इक्वल 12 माइक्रोफैरड। नीचे लिखेंगे आप 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल 10 की पावर -6 फैरड। हमने साइड में भी लिख रखा है पिको फैरड, नैनो फैरड और माइक्रो फैरड। बट आप न्यूमेरिकल में अगर लिखते जाएंगे तो आपको ये लर्न हो जाएगा और आप जब भी न्यूमेरिकल लगाएंगे आपको आसानी से न्यूमेरिकल आएंगे।
तो रेडियस की वैल्यू हमें फाइंड करना है और कैपेसिटी दी हुई है 12 माइक्रोफैरड और स्फेरिकल कंडक्टर है, तो आप यहाँ लिखेंगे R इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, फिर लिखेंगे सॉल्यूशन, फॉर्मूला सेम एज इट इज, C इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, क्योंकि उसने स्फेरिकल कैपेसिटर कहा है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये लिखी हुई है बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 इंटू 10 की पावर 9। C इज इक्वल 1/9 इंटू 10 की पावर 9। रेडियस की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैपेसिटी आपको कितनी गिवन है, 12 माइक्रोफैरड, दैट मींस 12 इंटू 10 की पावर -6। यहाँ से कन्वर्ट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 10 की पावर -6 फैरड। अब आप इस वैल्यू को क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये ऊपर जाएगा आपका, तो बन जाएगा R इज इक्वल 12 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 10 की पावर -6 में ऐड करेंगे तो आएगा आपका 10 की पावर +3। R इज इक्वल 12 9 जा 140, रियली 12 9 जा 144 आएगा, 108। 12 9 जा क्या आएगा बेटा, 108 आएगा। अब आप डेसिमल को एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए पावर माइनस नहीं है, सबसे पहले हमें पावर देखनी है। अगर पावर माइनस नहीं है और डेसिमल लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये पावर इंक्रीज करेगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.08 इंटू 10 की पावर 5 मीटर। ठीक, अब आपका आंसर 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है आंसर की, या तो मीटर में आ रहा होगा, या किलोमीटर में आ रहा होगा, या सेंटीमीटर में आ रहा होगा। अगर आप इतना भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, किलोमीटर में आ रहा है तो यहीं से कन्वर्ट कर लेंगे। ध्यान से देखिए, 1 किलोमीटर इज इक्वल क्या होता है बेटा, 1000 मीटर। तो यहां से अगर हम 10 की पावर 3 को रिमूव कर दें तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर अभी लिखा हुआ है मीटर में, अगर हम यहाँ से 10 की पावर 3 को रिमूव करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 108 किलोमीटर नहीं हो जाएगा। और अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करा देना है, 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। थर्ड नंबर में क्या गिवन है बेटा, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ 2 स्फेरिकल कैपेसिटर विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। आपको कैपेसिटर की कैपेसिटी का रेशियो फाइंड करना है और उसकी रेडियस गिवन है। तो फर्स्ट कैपेसिटर की रेडियस और आपके कैपेसिटर आप लगाए हैं, आपके कैपेसिटर कौन से हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर हैं। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला आपका होता है C इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आप जितने भी न्यूमेरिकल अभी लगा रहे हैं आपके स्फेरिकल कैपेसिटर हैं, तो फिर से आप यहाँ लिखेंगे R1 इज इक्वल 4 सेंटीमीटर गिवन है एंड R2 इज इक्वल 8 सेंटीमीटर गिवन है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो अभी हमने वैल्यू लिखी थी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 10 की पावर -2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, और ये हो जाएगा बेटा 8 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अब आप 2 फॉर्मूले बनाएंगे, सॉल्यूशन। पहले कैपेसिटर का फॉर्मूला C1 इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, ठीक। दूसरे कैपेसिटर का फॉर्मूला C2 इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। इसको सपोज करेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको सपोज करेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा बेटा, यहाँ लिखेंगे आप इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड। C1 अपॉन C2 इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, R1 अपॉन R2। C1 अपॉन C2 इज इक्वल, R1 की वैल्यू है बेटा 4 इंटू 10 की पावर -2, R2 की वैल्यू है आपकी 8 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 फिर से कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। आपके कैपेसिटेंस का रेशियो आ गया 1:2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जितने भी आंसर आए हैं इनको आप सर्कल में बंद कर लेंगे, इस तरह बॉक्स में बंद कर देंगे। ये आपका सेकंड वाले का आंसर था और ये आंसर आपका था फर्स्ट वाले का।
अब आप यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 4 देखेंगे, 4 गिवन, ठीक। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज 10 नैनोफैरड। हमने नैनोफैरड की वैल्यू ऑलरेडी लिख रखी है, 1 नैनोफैरड इज इक्वल 10 की पावर -9 फैरड। The capacitance of capacitor is 10 nanofarad. If a dielectric substance of constant 5 is inserted inside it, find its capacitance. आपको वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है कैपेसिटेंस की 10 नैनोफैरड। उसके बाद आपको वैल्यू दी हुई है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की के की, क्या दी हुई है बेटा, 5 दी हुई है। तो आप सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे 1 नैनोफैरड को 10 की पावर -9 फैरड में, तो ये हो गया आपके कैपेसिटेंस की वैल्यू। अब आपको हमने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था फॉर्मूला, इसके लिए पूछा है मैं, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज 10 नैनोफैरड इफ अ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ऑफ कांस्टेंट 5 इज इंसर्टेड इनसाइड इट, फाइंड इट्स कैपेसिटेंस। अब आप न्यूमेरिकल किसके लगा रहे हैं बेटा, स्फेरिकल के। अब इस न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम क्या है, ये ना तो स्फेरिकल के लिए कहा गया है और ना ही किसके लिए कहा गया है, पैरेलल प्लेट के लिए कहा गया है, और आपको ये वैल्यू दी हुई है। तो ये वैल्यू किसके लिए दी हुई है, हमने आपको जब डेरिवेशन बताया था तो साफ साफ बताया था कि जो वैल्यू आपकी गिवन होगी वो किसके लिए गिवन होगी, एयर के लिए। तो एयर में क्या लगाते हैं आप, सी नॉट लगाते हैं, और जब कोई मीडियम इंटर करेगा तो उसके लिए आप कैपेसिटी को 2 सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, या सी लिखेंगे या फिर आप क्या लिखेंगे और करके सीएम। तो आपको सीएम फाइंड करना है, बताया था हमने आपको जब डेरिवेशन बताया था। तो वहां से आपका फॉर्मूला क्या बना था, Cm इज इक्वल सी नॉट मल्टीप्लाई बाई के। सी नॉट की वैल्यू आपकी गिवन है 10 इंटू 10 की पावर -9, और आपको मल्टीप्लाई कराना है किससे, 5 से। तो आप यहाँ लिखेंगे Cm इज इक्वल सी नॉट की वैल्यू 10 इंटू 10 की पावर -9 मल्टीप्लाई बाई के की वैल्यू है 5। इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 50 इंटू 10 की पावर -9, आप यहाँ लिख सकते हैं फैरड, और अगर यहाँ से 10 की पावर -9 को रिमूव करेंगे तो आपका आंसर आएगा Cm इज इक्वल 50 नैनो फैरड। ये आपके चारों न्यूमेरिकल के आंसर हो गए। बात समझ में आ गई बेटा, आपकी सारी वैल्यू बोर्ड में हमने लिख रखी है, चाहे वो पिको फैरड की हो, चाहे वो नैनो फैरड की हो, चाहे माइक्रो फैरड की हो। और जिस फॉर्मूले का हमने यूज किया है उस फॉर्मूले को आपको क्लियरली 1, 2 एंड 3 में आपने स्फेरिकल कैपेसिटर यूज किया है तो आपका फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। उसके बाद हमने आपको एयर और मीडियम की कैपेसिटी में रिलेशन बताया था, तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका Cm इज इक्वल सी नॉट के, दिस इज द रिलेशन बिटवीन कैपेसिटी ऑफ एयर एंड मीडियम। मीडियम की कैपेसिटी एयर की कैपेसिटी की के टाइम्स होती है, के की वैल्यू जितनी दी होगी उसको आपको मल्टीप्लाई करा देना है एयर की कैपेसिटी से। क्लियर बेटा, नोट करिए। आज श्रेया भी नहीं आई है, कहाँ चली गई श्रेया हमसे, शिवानी तो गाँव गई मान लो, उसकी दादी की डेथ हो गई तो तेरही वगैरह सब होगा।
लोड हो गया बेटा। लोड हो गया पीछे बेटा सबका।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर फॉर्म्ड बाय टू कंडक्टर्स एट पोटेंशियल 10 वोल्ट इफ 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर। आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। पोटेंशियल गिवन है बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 5 गिवन, वोल्टेज इज 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है कैपेसिटी की। सॉल्यूशन, सबसे पहले आप फाइंड करेंगे टोटल चार्ज। टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए आपको चैप्टर नंबर 1 में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताया गया था। फॉर्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल NE, Q इज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 की पावर 12 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये हो जाएगा आपका टोटल चार्ज। 10 की पावर 12 पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और -12, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 7 कूलम। ये हो गया आपका टोटल चार्ज ऑफ कैपेसिटर। इसके बाद आपका फॉर्मूला है कैपेसिटी का C इज इक्वल Q अपॉन V। यहाँ पे आप चार्ज की वैल्यू रखिए और पोटेंशियल की वैल्यू रखिए। C इज इक्वल टोटल चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइड बाई वोल्टेज आपका गिवन है 10। ये 10 ऊपर जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा C इज इक्वल 1.6 इंटू 10 की पावर -8 फैराड। अगर हम इसे नैनो फैराड में चेंज करना चाहें तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डेसिमल को रिमूव करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे, एक जीरो नीचे आएगा, फिर से ये ऊपर जाकर निगेटिव होगा, 16 इंटू 10 की पावर -9 फैराड। -9 को रिमूव करेंगे, C इज इक्वल 16 नैनो फैराड। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट 6, हाउ मच पिको फैराड आर देयर इन अ माइक्रो फैराड। हमसे पूछ रहा है कि माइक्रो फैराड में कितने पिको फैराड होंगे। हाउ मच पिको फैराड इन देयर आर माइक्रो फैराड। तो आपको सबसे पहले माइक्रो फैराड की वैल्यू लिख के दिखाना है, हमें कन्वर्ट करना है माइक्रो फैराड को पिको फैराड में। तो हमने आपको बताया है 1 माइक्रो फैराड इज इक्वल 10 की पावर -6 फैराड, ये लिखा हुआ है बेटा। 1 माइक्रो फैराड इज इक्वल 10 की पावर -6 फैराड। अब आपको इसको डेसिमल में लिखना है। डेसिमल मतलब इसकी माइनस पावर हटाएंगे तो आप इसे क्या लिखेंगे, 1 माइक्रो फैराड इज इक्वल 10 की पावर -6 फैराड इज इक्वल 0.0000001 फैराड। हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 माइक्रो फैराड इज इक्वल 10 की पावर -6 फैराड, और अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 0.00000, 5 टाइम 0 और 1, टोटल कितने डिजिट होनी चाहिए, 6 डिजिट होनी चाहिए। तो हमने इसको इस तरह लिख दिया। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? ये बात समझ में आ गई? अगर हम 1 नैनो फैराड को लिखें इसी तरह तो हम क्या लिखेंगे बेटा, इसको हम इसे लिखेंगे 10 की पावर -9 फैराड। अब -9 को अगर हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 0.0000123456789 फैराड, ये लिखेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम इस टर्म को माइक्रो फैराड में लिखें, अगर हम इस टर्म को, ये जो हमारा नैनो फैराड वाला टर्म है, इसको अगर हम माइक्रो फैराड में लिखें तो कैसे लिखेंगे। अब हमको किसके 1 नैनो फैराड को कन्वर्ट करना है माइक्रो फैराड में। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम 1 नैनो फैराड को माइक्रो फैराड के टर्म में लिखना चाहें तो हम इसे क्या लिखेंगे बेटा, अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा दें, 1000 से मल्टीप्लाई करा दें और यहाँ लिखे -9 फैराड, अभी भी तो ये नैनो फैराड लिखा हुआ है। 1 नैनो फैराड को हमें माइक्रो फैराड में लिखना है। किसमें लिखना है? माइक्रो फैराड में। तो अगर हम यहाँ लिखें
1 नैनो फैराड इज इक्वल 1000 इंटू 10 की पावर -9 माइक्रो फैराड। तो जरा ध्यान से देखिए लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। 1000 का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर -6 माइक्रो फैराड। बात समझ में आई नहीं आई अभी, ये बात समझ में आई। अब हमको यहां से इसको इरेज करना है और ध्यान से देखिए हमने नैनो फैराड को आपको लिख के दिखाया डेसिमल में, अब हम आपको लिख के दिखाएंगे किसको, पिको फैराड को। 1 पिको फैराड इक्वल अगर हम लिखेंगे तो 10 की पावर -12 फैराड के टर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पर कितने डेसिमल आएंगे, 0.0000000 कितने टाइम्स होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 फैराड। ये लिखा जाएगा, इसको नहीं लिखा जाएगा। आपको किसको कन्वर्ट करना है, 1 पिको फैराड को किसमें कन्वर्ट करना है, माइक्रो फैराड में कन्वर्ट करना है। बात समझ में आई। अब ध्यान से देखिए अगर हम इस डिजिट में 10 की पावर 6 प्लस का दे दें, 10 की पावर 6, अभी हमने नैनो फैराड को कन्वर्ट करके दिखाया तो 1000 से मल्टीप्लाई किया था, तो 1000 को क्या लिखोगे, 10 की पावर 3 लिखोगे। तो अगर हम यहाँ पर 10 की पावर 6 लिख दें तो ये डिजिट हमारी माइक्रो फैराड में नहीं कन्वर्ट हो जाएगी, हो जाएगी कन्वर्ट। तो आप इसे लिख सकते हो 1 पिको फैराड इज इक्वल 10 की पावर 6 माइक्रो फैराड। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। 1 पिको फैराड को आप क्या लिखेंगे, 10 की पावर +6 माइक्रो फैराड। क्लियर, क्या लिखोगे, 10 की पावर +6 माइक्रो फैराड। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कन्वर्ट करना नहीं, सॉरी उल्टा हो गया, इसको आप इधर लाओगे, ये डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये सारे सारे किसमें आएंगे, आपको किसमें कन्वर्ट करना है। अभी हमने यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे पिको फैराड को हमने किसमें लिखा हुआ है, फैराड में लिखा हुआ है। हमको लिखना किसमें है, माइक्रो फैराड को पिको फैराड में लिखना है। तो हमने आपको पिको फैराड को किसमें चेंज करके दिखाया, फैराड में चेंज करके दिखाया। अब अगर आपको इसको पिको फैराड में कन्वर्ट करना है तो आप यहां लिखेंगे इसको इसके टर्म में, यानी 10 की पावर +6 दे दिया जाए तो ये बाकी सब किसमें लिखा हुआ है, पिको फैराड में लिखा हुआ है। तो माइक्रो फैराड अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा 10 की पावर 6 पिको फैराड, यानी 1 माइक्रो फैराड इज इक्वल 10 की पावर 6 पिको फैराड। अब आप दोनों को बराबर करके देख सकते हैं, यहां से माइक्रो हटाएंगे क्या आएगा, 10 की पावर -6 आएगा। तो 1 माइक्रो फैराड इज इक्वल 10 की पावर +6 पिको फैराड। हमने आपको माइक्रो को फैराड में चेंज करके दिखाया, नैनो को फैराड चेंज करके दिखाया, फिर पिको को भी फैराड में चेंज करके दिखाया। फिर आप इसे लिखेंगे 1 माइक्रो फैराड इज इक्वल 10 की पावर 6 और पिको फैराड किसके बराबर है, 10 की पावर -12 के बराबर है। इसको यहाँ पे लिखेंगे तो आप लिख के देख सकते हैं। सपोज अगर हम पिको की वैल्यू लिख दें तो ये 10 की पावर +6 और पिको रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, -12। अब आप इसको क्या लिखेंगे, फैराड लिखेंगे। इसको इससे ऐड करेंगे क्योंकि बेस सेम है, बेस सेम है तो ये क्या बन जाएगा, 10 की पावर -6 फैराड, और ये किसके बराबर है, माइक्रो फैराड के बराबर है। बट आपको माइक्रो फैराड को फैराड में नहीं लिखना था, क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, माइक्रो फैराड को किसमें कन्वर्ट करना है, पिको फैराड में कन्वर्ट करना है। तो हमने माइक्रो फैराड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, पिको फैराड में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 गिवन 7 नंबर में कह रहा बेटा कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ अर्थ। आपको अर्थ का पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो बेटा अर्थ की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। और हमने आपको जब पोटेंशियल का चैप्टर पढ़ाया था तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट लेकर दिखाए थे, पॉइंट ए ले लीजिए, पॉइंट बी ले लीजिए। ये डिस्टेंस बहुत छोटी थी बट आपको यहाँ पे फील लाना था कैसा, इनफाइनाइट जैसा। अगर आप इसको इनफाइनाइट मानेंगे तो इनफाइनाइट से अगर कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक लेकर आएंगे तो आप इनफाइनाइट से कोई चार्ज नहीं ला सकते हैं। तो हमने वर्क डन किसके लिए निकाला था बेटा, पॉइंट ए टू बी, यानी हम किसी चार्ज को पॉइंट ए से इनफाइनाइट तक ले जाएंगे। और यहाँ का पोटेंशियल आपने क्या सपोज किया था, v इनफाइनाइट इज इक्वल
जीरो। तो अर्थ की रेडियस बिल्कुल किसकी तरह बिहेव कर रही है, इनफाइनाइट लेंथ की तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि 6400 किलोमीटर बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो इसके कंपैरिजन में आप इसका पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा स्मॉल डिस्टेंसेस में ही फाइंड किया जा सकता है। जैसे आपके घर का वोल्टेज, आपके घर में अगर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अब आप जैसे ही ट्रांसफार्मर से आपके घर तक इलेक्ट्रिक करंट आता है, तो आपके घर तक इलेक्ट्रिक करंट आने में पोटेंशियल क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। इसीलिए ट्रांसफार्मर से जो सबसे दूर घर होता है उसके घर का वोल्टेज क्या होता है, सबसे कम होता है, वहां पावर सप्लाई बहुत स्लो हो जाती है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, अर्थ की। अगर ट्रांसफार्मर से हमारे घर तक वोल्टेज इतना डिक्रीज हो जाता है कि 40 वोल्ट 50 वोल्ट आता है, तो आप क्या अर्थ का पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, आप अर्थ का पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इस पॉइंट को इनफाइनाइट की तरह बिहेव करना है और यहाँ पे फार्मूला लिखना है C इज इक्वल क्यू अपॉन V, और V को किसकी तरह बिहेव कराएंगे, इनफाइनाइट की तरह बिहेव कराएंगे, यानी कि ये अनकाउंटेबल है, आप इसका पोटेंशियल फाइंड नहीं करेंगे। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, जीरो। तो जीरो से किसी भी डिजिट को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो आपकी कैपेसिटी क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट, यानी कि अर्थ की जो कैपेसिटी होती है चार्ज को होल्ड करने की, वो क्या होती है, इनफाइनाइट। तो जब हमने आपको चैप्टर पढ़ाया तो ये भी बताया था कि अर्थ को क्या कहा जाता है बेटा, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। मतलब अर्थ, पृथ्वी कितना भी चार्ज अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करके रख सकती है। उसका रीजन यही है क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि अर्थ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सेम। अर्थ में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, सेम, दोनों अमाउंट सेम है। तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और कैपेसिटी क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कैलकुलेट द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 200 माइक्रोफैरड एट 12 वोल्ट। आपको कैपेसिटी दी हुई है 200 माइक्रोफैरड। क्वेश्चन नंबर 8, कैपेसिटी गिवन है बेटा 200 माइक्रोफैरड और वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज गिवन है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। आपको फाइंड करना है चार्ज। सॉल्यूशन में आपका जो रियल फॉर्मूला है वो C इज इक्वल क्यू अपॉन V। इसको हम कन्वर्ट करेंगे Q इज इक्वल CV। अब आप वैल्यू पुट करेंगे, Q इज इक्वल C की वैल्यू 200, बट ये लिखा हुआ माइक्रोफैरड में, तो कन्वर्ट करेंगे 200 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फैरड। यहाँ पे लिखेंगे इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू वोल्टेज की वैल्यू कितनी गिवन है, 12। ये दो जीरो पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2। इससे इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, 12 2 जा 24 इंटू 10 की पावर माइनस 4 कूलम। अब आप अगर डेसिमल को लेफ्ट साइड में इंक्रीज करेंगे तो आपको फिर से देखना है यहाँ वैल्यू क्या है, निगेटिव। तो निगेटिव में जब लेफ्ट साइड आप डेसिमल इंक्रीज करेंगे तो निगेटिव की पावर डिक्रीज होगी, एक्चुअल में वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि निगेटिव में पावर जितनी कम होती है उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होती है, और पॉजिटिव में अगर पावर इंक्रीज होती है तो जितनी पावर इंक्रीज होगी उसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कूलम। ये आपका चार्ज हो जाएगा, नोट करिए।
नोट हो गया बेटा? हो गया है टाइम पूरा? कितना बज गया? बहुत है अभी, 10 मिनट में एक सवाल तो हो ही जाएगा। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ एज अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ डायामीटर 12800 किलोमीटर। आपको डायामीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन डायामीटर 12800 किलोमीटर। इससे बेटा रेडियस फाइंड कर लेंगे। रेडियस इज इक्वल डायामीटर डिवाइड बाई 2। 12800 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 0 0 किलोमीटर। अभी हमने आपको यही बताया था अर्थ की रेडियस क्या होती है? 6400 किलोमीटर। अब आपसे कह रहा है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ एज अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ डायमीटर। आपको इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो हमें रेडियस पता है बेटा, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा रेडियस इज इक्वल 6400 इंटू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ठीक, अब हम कैपेसिटर स्फेरिकल कंडक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। C इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसकी वैल्यू अभी हमने लिखी थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल 1/9 इंटू 10 की पावर 9। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू स्मॉल r की वैल्यू 6.4 इंटू 10 की पावर 6। अब ये पावर ऊपर जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। इसके बाद में आपको इसको डिवाइड करना है। C इज इक्वल 6.4 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइड बाई 9। इसमें ऐड करेंगे ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 9। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, नोट करिए। अच्छा अलग है क्या इधर से? कल कहाँ तक हो गए थे बच्चे? 9 नंबर तक हो गए थे। 10वां नंबर देखो बेटा। वी नो दैट द नहीं है नहीं है A conductor has given the charge of 50 nanocoulomb and its potential is enhanced by 50 volt. Calculate its capacitance. Charge given and voltage given है। बेटा बोर्ड में देखो ध्यान से,
क्वेश्चन नंबर 10 गिवन चार्ज गिवन है 50 नैनो कूलम एंड वोल्टेज गिवन 50 वोल्ट। वोल्टेज गिवन है 50 वोल्ट। तो चार्ज कौन चेंज करेंगे, किससे चेंज करेंगे, 1 नैनो कूलम को कूलम में चेंज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 नैनो कूलम इज इक्वल 10 की पावर -9 कूलम। जब आप अपनी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से कन्वर्ट कर लेंगे। अब आपको हेडिंग डालना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फार्मूला लगेगा C इज इक्वल Q अपॉन V। Q इज इक्वल C V। C की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ से 50 और 1 नैनो कूलम की प्लेस में 10 की पावर -9। तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल 50 इंटू 10 की पावर -9 एंड वोल्टेज की प्लेस पे आप लिखेंगे 50 वोल्ट। 5 का 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 5 जा 25, एक जीरो ये एक जीरो ये, डबल जीरो हो जाएंगे, 10 की पावर -9 ये रहेगा। अब आप जैसे ही आपने मल्टीप्लाई करा दिया, नहीं फाइंड क्या करना है हमको, गलत है, हमको फाइंड क्या करना है, कैपेसिटेंस फाइंड करना है। चार्ज दिया हुआ है तो कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए Q इज इक्वल वैल्यू गिवन है C इज इक्वल Q अपॉन V। Q की प्लेस पे वैल्यू रखेंगे 50 इंटू 10 की पावर -9 और वोल्टेज की प्लेस पे 50 वोल्टेज। यहाँ 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 10 की पावर -9 फैरड। सबसे पहले आप ये लिखेंगे। अब अगर आपको 10 की पावर -9 को रिमूव करना है तो 10 की पावर -9 किसके बराबर है, 1 नैनो कूलम के बराबर है। तो आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा 1 नैनो फैरड। यह आपका आंसर हो जाएगा 1 नैनो फैरड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 पिकोफैरड हैव द एरिया ऑफ प्लेट्स 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। हमें इनके बीच की डिस्टेंस सेपरेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 11 गिवन C गिवन है, एरिया गिवन है, C गिवन है 10 पिको फैरड एंड एरिया गिवन है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको फाइंड करना है सेपरेशन D, इनके बीच की डिस्टेंस। सॉल्यूशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आपका फॉर्मूला आया था बेटा C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन D वेयर K इज प्रेजेंट इन द मीडियम। अगर पैरेलल प्लेट के बीच में कोई मीडियम प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल में K की वैल्यू दी हुई होगी। अब इसमें नहीं दी हुई है तो हम ऐसा सपोज करेंगे ये न्यूमेरिकल किसके लिए है, एयर के लिए है। तो एयर के लिए हमने आपको वैल्यू बताई थी कैपेसिटेंस की, डाइलेक्ट्रिक की 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा रहेगा C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। हमें फाइंड क्या करना है, D। तो हम यहाँ लिखेंगे D इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन C। C की वैल्यू गिवन है किसमें बेटा, पिको फैरड में। तो हम यहाँ चेंज करेंगे 1 पिको फैरड इज इक्वल 10 की पावर -12 फैरड। तो ये हो जाएगा 10 पिको फैरड इज इक्वल 10 इंटू 10 की पावर -12 फैरड। ये आ जाएगी C की वैल्यू। उसके बाद एरिया हमारा गिवन है कितना, ये जो वैल्यू हमने लिखी है किसकी है, C इज इक्वल 10 पिको फैरड। A गिवन है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 10 की पावर -2 मीटर। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया आ जाएगा 200 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे
और एप्सिलॉन नॉट हमें पहले से पता है बेटा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यहाँ पे लिखेंगे कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आई। अब आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, d इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट की प्लेस में 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और एरिया की प्लेस में आप वैल्यू रखेंगे 200 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई c की वैल्यू गिवन है कितनी 10 इंटू 10⁻⁻12 10 इंटू 10⁻⁻12 ये -12 और ये 10⁻⁻12 कैंसिल हो जाएगा। इसका एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। इससे इसमें मल्टीप्लाई कराओगे बेटा d इज इक्वल 8.85 इंटू मल्टीप्लाई बाई 20 10⁻⁻4। इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक जीरो डेसिमल इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे आएगा 88.5 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 10⁻⁻4। अब मल्टीप्लाई कराएंगे 2 5 जा 10 0 डेसिमल एक डिजिट के बाद में लगाया 2 8 जा 16 16 1 17 2 8 जा 16 16 1 17 इंटू 10⁻⁻4 d इज इक्वल और ये आ जाएगा आंसर मीटर में। आप चाहे तो इतना भी लिखा रहने दे सकते हैं। अगर आपको इसे कन्वर्ट करना है तो डेसिमल को लेफ्ट साइड में ले आइए तो ये पावर क्या हो जाएगी इंक्रीज होती जाएगी और निगेटिव पावर जब भी इंक्रीज होगी वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 गिवन में कह रहा है बेटा calculate the capacitance of parallel plate capacitor with the gap in the plates 2 millimeter and the area of plates 100 centimeter square। गैप दिया हुआ है 2 मिलीमीटर का और एरिया दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। गिवन में d इज इक्वल 2 मिलीमीटर एंड एरिया इज गिवन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे c इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई d। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने ऑलरेडी लिख दी है तो यहाँ से ये वैल्यू उठा के रखेंगे। उसके बाद हमें चेंज करना है क्या एरिया को तो हमने उसकी भी वैल्यू लिखी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे 10⁻⁻4। उसके बाद मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है तो यहाँ दिखा देंगे 1 मिलीमीटर इज इक्वल 10⁻³ मीटर। अब आप सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए c इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एरिया की प्लेस पे 100 इंटू सेंटीमीटर को हटाएंगे 10⁻⁻4 आएगा और ये मीटर में हो जाएगा। उसके बाद d की प्लेस में लिखेंगे 2 इंटू 10⁻³ ये बात समझ में आई। 10⁻³ इस -4 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ -1 बचेगा। अब यहाँ से आप इसका एक जीरो इसका माइनस का कट कर देंगे। यहाँ से डेसिमल को रिमूव करेंगे यहाँ 2 जीरो इंक्रीज हो जाएंगे। इसका एक जीरो इसके एक जीरो से फिर कट जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव बनाएगा तो यहाँ आएगा c इज इक्वल 885 इंटू 10⁻⁻13 ये ऊपर गया डिवाइड बाई 2। ये बात समझ में आई। अब इसको आप डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 2 क्या आएगा 2 4 जा 8 यहाँ पे आएगा 2 4 जा 8 और यहाँ पे 2 2 जा 4 डेसिमल लगाएंगे 2 5 जा 10। अब इस डेसिमल को इधर लेफ्ट साइड ले जाएंगे 442.5 इंटू 10⁻⁻13 1 2 c इज इक्वल 4.42 इन 5 इंटू 10⁻11 फैरड। अगर पिको फैरड में आपको लिखना है तो आप यहाँ पे डेसिमल को सेकेंड डिजिट के बाद में लगाएंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा पिको फैरड में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे देखो बेटा और आंसर पिको फैरड में ही दिया हुआ है तो उससे घबराएंगे नहीं।
हमने अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट नंबर लिखा है तो पूरा ले गए हैं। और हमने आपको बताया था कल कि अगर नियर अबाउट में है तो आपको आंसर किस में लिखना है, पिको फैरड में लिखना है। तो अगर आप चाहें तो सीधे लिख सकते हैं 44.25 इंटू 10⁻12 और ये लिखा हुआ है अभी फैरड में, -12 हटा देंगे तो 44.25 ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका पिको फैरड में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। The plates of parallel plate capacitor are in the shape of circular disc of radius 8 cm each. If the gap between the disc 4 mm, find the capacitance of the capacitor. Second number में the capacitance if the slab of a dielectric constant 81 is inserted between the disc. कह रहा है यदि उन डिस्क के बीच में आप अगर 81 डाइलेक्ट्रिक को फिल करेंगे तो आपके कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी K इज इक्वल डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू इस बार दी हुई है 81। अब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और ये दो पार्ट में लगेगा। वैल्यू जो गिवन है उसको लिख लीजिए। सर्कुलर डिस्क की रेडियस दी हुई है R इज इक्वल 8 सेंटीमीटर। उसके बाद में रेडियस दोनों प्लेट्स के बीच का गैप दिया हुआ है D इज इक्वल 4 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर बात समझ में आई? तो आप इसको लिख लेंगे। उसके बाद में पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻² मीटर। बात समझ में आई? अब पैरेलल प्लेट है, साथ में डिस्क भी है, मतलब प्लेट्स की तरह भी बिहेव कर रही हैं और सर्कुलर डिस्क, तो एरिया हमें सर्कल का निकालना पड़ेगा। ये बात याद रखेंगे आप। ये जो R रेडियस दी हुई है उसने दो फॉर्म में न्यूमेरिकल को डिवाइड किया, उसने दो प्लेट्स लिए हैं, तो दो प्लेट अगर है सर्कुलर तो किसकी तरह बिहेव करेगा, पैरेलल प्लेट की तरह। यानी फॉर्मूला जो हमारा लगेगा, आपको फाइंड करना है कैपेसिटेंस। सॉल्यूशन गिवन। इसके बाद में फॉर्मूला लगाएंगे C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और एरिया की प्लेस में आप लिखेंगे क्या, पाई R स्क्वायर। बात समझ में आई? ये हो जाएगा आपका एरिया। D आपका गिवन है मिलीमीटर में, इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे 4 इंटू 10⁻³ मीटर। ये बात समझ में आई? अब आप लिखेंगे C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट की प्लेस पे 8.85 इंटू 10⁻12, एरिया की प्लेस में लिखेंगे पाई R स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 और R की प्लेस में लिखेंगे ऊपर से 8 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया। डिवाइड बाई गैप कितना है बेटा, 4 इंटू 10⁻³ ये बात समझ में आई? अब आप सबसे पहले उसका स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻4 हो जाएगा। यहाँ आप लिखेंगे C इज इक्वल 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 3.14 इंटू 64 इंटू 10⁻4 डिवाइड बाई 4 इंटू 10⁻3। -3 से ये -3 कैंसिल, 10⁻1 बचेगा। यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और यहाँ पे 2 बचेगा, 4 6 जा 24, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद में आप सारे डेसिमल रिमूव करेंगे, या तो डेसिमल के साथ में मल्टीप्लाई करा लीजिए या तो विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डिजिट्स लिखनी है। C इज इक्वल 8.85 इंटू 3.14 इंटू 16, आपका ये ऊपर रिमेनिंग पार्ट है। इसके बाद -12 और ये पावर -1 क्या हो जाएगा, 10⁻13। आपको इसका मल्टीप्लाई कराना है, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम यहीं पे करा लेते हैं, उसके बाद इरेज करते जाएंगे और नोट करते जाएंगे। तो अगर हम 3.14 का मल्टीप्लाई कराएं 16 से, 6 4 जा 24, 2 कैरी आया। इसके बाद 6 1 जा 6 में 2 ऐड किया 8 आ गया, 6 3 जा 18 और 2 कैरी ऐड कर चुके हैं
18 और यहाँ पे कितना आया था, कुछ नहीं, 6 3 जा 18 क्रॉस यहाँ पे आ जाएगा 4 1 एंड 3 4 8 4 12 और ये आ जाएगा 9 10 और यहाँ आएगा 3 1 4 5, ये आ गया। डेसिमल लगाएंगे 2 डिजिट के बाद में तो ये आ जाएगा 50.24। अब आप इन दोनों की प्लेस पे लिख लीजिए 50.24 इंटू 10 की पावर -13 और ये एज इट इज 8.85। सी इज इक्वल, इसको इरेज कर देंगे, फिर से मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा, इसका मल्टीप्लाई कराना है 8.85 मल्टीप्लाई बाई 50.24 4 5 जा 20 4 8 जा 32 में 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 34, 3 कैरी आया, फिर 4 8 जा 32 में 3 ऐड करेंगे क्या आएगा 35। अब 2 से मल्टीप्लाई कराना है 2 5 जा 10 2 8 जा 16 17 2 8 जा 16 1 17 डबल क्रॉस 0 0 0 ट्रिपल क्रॉस 5 5 जा 25 5 8 जा 40 40 में 2 ऐड करेंगे 42 4 और यहाँ लिखेंगे 5 8 जा 40 40 में 4 ऐड करेंगे 44, ये आ गया आपका 0 और यहाँ आ जाएगा 4 5 7 12 और ये आएगा 10 10 5 15 16 और यहाँ आ जाएगा 3 4 यहाँ 4 4। अब डेसिमल काउंट करिए 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आएगा आपका। तो यहाँ आप लिखेंगे C इज इक्वल 444.6240 और आप इसको इरेज कर दीजिए इनटू पावर लगी हुई है आपकी 10 की पावर -13। अब हमने आपको बताया था अगर नियर अबाउट है तो पिको फैरड में कन्वर्ट कर लेना बेटा, इसको सिर्फ एक डिजिट ले आइए, एक डिजिट लाएंगे ये -12 हो जाएगा। C इज इक्वल 44.46240 इंटू 10 की पावर -12 फैरड। इसके बाद में C इज इक्वल फैरड आप हटा देंगे 44.46240 पिको फैरड, ये आपका हो गया एग्जैक्ट आंसर। नोट कर लीजिए। अभी इसका सेकेंड पार्ट बचा हुआ है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अभी सेकेंड पार्ट में डाइलेक्ट्रिक रखेंगे और इसकी वैल्यू याद रखना। अब इसको बाद में सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सीधे हम डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू रख के इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर आ जाएगा। आज प्रिया कहाँ चली गई? रोज कोई ना कोई एब्सेंट हो जाता है।
नोट हो गया बेटा? इधर स्टार्टिंग गया, इरेज कर दे। बताइएगा कहाँ तक नोट हो गया। यहाँ तक नोट हो सकता है? देखिए बेटा, इसी का सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में कह रहा था द कैपेसिटेंस इफ अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 इज इंसर्टेड बिटवीन द डिस्क। दोनों डिस्क के बीच में डाइलेक्ट्रिक के को इंसर्ट कर दिया जाए। सेकंड पार्ट में के की वैल्यू गिवन है 81 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसे क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये गिवन है हमें। अब हम एयर के लिए रिप्रेजेंट कर चुके हैं सिंबल कैपेसिटेंस का सी, ठीक। तो हम मीडियम के लिए सिंबल दूसरा यूज करेंगे, सी के नीचे लगा देंगे एम। एम का मतलब मीडियम। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा सी एम इज इक्वल के इंटू सी। सी नॉट की जगह नॉट लगाएंगे तो भी एयर के लिए है, और सिर्फ सी लिखा रहेगा तो भी क्या है? एयर के लिए है। तो हमारी सी की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 44.46240। और के की वैल्यू गिवन है 81 इंटू सी की जगह प्लेस करेंगे 44.4662440। और हमने लिखा है पिको फैरड में, तो हमारा आंसर किस में आएगा? अगेन पिको फैरड में आएगा। आपको फिर से मल्टीप्लाई कराना है, तो मल्टीप्लाई कराने के लिए हम इसको इस साइड में लिख लेंगे 44.46240 इंटू मल्टीप्लाई बाई 81। 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, नो चेंजमेंट। 4 2 6 4 4 4 क्रॉस 8 0 0 8 4 जा 32 2 3 कैरी आया 8 2 जा 16 16 में 3 ऐड किया 19 1 कैरी आया 8 6 जा 48 48 में 1 ऐड करेंगे 49 और 4 कैरी हो जाएगा 8 4 जा 32 32 में 4 ऐड करेंगे क्या आएगा 36 3 कैरी आया फिर 8 4 जा 32 32 में 3 ऐड करेंगे क्या आएगा 32 में 3 ऐड करेंगे क्या आएगा 35। यहाँ पे 8 4 जा 32 और 32 में फिर से क्या ऐड करेंगे यहाँ पे आएगा 35। अब आपको डेसिमल काउंट करना है। ऐड करने के बाद में 0 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 9 6, ये हो जाएगा 9 6 15 15 9 4 13 और 14, ये हो जाएगा 10 1 11 और ये हो जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 6 चाहिए। इसका एक कैरी इसमें ऐड हो गया 9 4 4 5 9 10 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। डेसिमल यहाँ पे लगेगा। सी एम इज इक्वल 3601
0.45440 और ये आ रहा है बेटा अभी पिको फैरड में। ठीक, हमारी ये डिजिट ऐसे लिखी हुई है। अगर आप इसको इस साइड में ले जाओगे तो सबसे पहले पिको फैरड हटा के क्या लिखना है, 10⁻⁻12 और ये हो गया फैरड में। अब डेसिमल को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, सपोज करें हमने 3 डिजिट लिया 1 2 3, तो यहाँ 3 डिजिट माइनस हो जाएंगे। 3.60145440 इंटू 10⁻⁻9 फैरड। अब -9 को रिमूव करना है और क्या हो जाएगा, नैनो फैरड हो जाएगा। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे 3.60145440 नैनो फैरड। ये डाइलेक्ट्रिक की कैपेसिटी हो जाएगी जैसे ही डाइलेक्ट्रिक को पुट कर दिया जाएगा। नोट करिए इसको, ये इसका सेकेंड पार्ट था। क्या हो गया था, वो पंखा चलने लगता है, पंखे की वजह से। बिटिया कोई सुरक्षित बुक दो, इसको बीच में रखना, ये कई हिस्सों में बटी हुई है। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो अलग गिर जाए या अलग गिर जाए। आऊंगा बेटा, हमने किया था कब, जब बाप रे, बुक इनकी, सारा इल्जाम हमारे ऊपर लगा दिया। बेटा एक साइड ऐसे रहता है तो हमारा हाथ इतना बड़ा तो है नहीं कि हम इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे लें, वैसे तो ले नहीं पाएंगे, तो हम उसको जाहिर सी बात है फोल्ड तो करना पड़ेगा थोड़ा सा। नोट हो गया बेटा सभी का? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है बेटा, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज एन एरिया 6 into 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 मिलीमीटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 100 वोल्ट। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जो दिया है एयर के लिए, क्योंकि ये सवाल कई पार्ट में होगा। 14 नंबर गिवन, एरिया गिवन है, गैप गिवन है और वोल्टेज गिवन है। एरिया गिवन है 6 into 10⁻³ मीटर स्क्वायर। गैप गिवन है 3 मिलीमीटर एंड वोल्टेज गिवन है 100 वोल्ट। तो हम सबसे पहले एयर के लिए कैपेसिटी निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन, एयर की कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे C से। C इज इक्वल
और यहाँ लिख देंगे फॉर एयर, ये कैपेसिटी एयर के लिए यूज होगी। C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी, के की वैल्यू एयर के लिए 1। C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। 8.85 इंटू 10⁻⁻12, एरिया की प्लेस पे रखेंगे 6 इंटू 10⁻³ इंटू के की प्लेस पे रखेंगे 1। अब इसको कन्वर्ट करेंगे 3 इंटू 10⁻³ मीटर, मिलीमीटर में को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 10⁻³ -3 कैंसिल हो गए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 1 17, 2 8 जा 16 1 17, डेसिमल 2 डिजिट के बाद में इंटू 10⁻⁻12 फैराड। ये आ गया हमारा आंसर किसके लिए बेटा? एयर के लिए। ये आंसर किसके लिए आया है? एयर की कैपेसिटी है। अब आगे देखिए, उसकी आगे क्वेश्चन कह रहा व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन a 3 millimeter thick mica sheet of dielectric constant 6 were inserted between the plates। फिर रुक जाएंगे। अब उसमें कह रहा है कि जितना आपका गैप है, इस गैप को फिल कर दिया गया है, किसके द्वारा? माइका भर दिया गया है। दोनों प्लेट्स के बीच में माइका, माइका क्या है? डाइलेक्ट्रिक है, जिससे आपका ये बोर्ड बना हुआ है। इसको कहा जाता है क्या? ऐसे तो जनरली लैंग्वेज में सन माइका कहा जाता है, बट एक्चुअल में इसका साइंटिफिक नाम क्या है? माइका नाम है। तो दोनों प्लेट्स के बीच में क्या भर दिया गया है? माइका भर दिया गया है। और माइका के लिए आपके डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू दी हुई है माइका, ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक है। और इसके लिए के की वैल्यू गिवन है कितनी? 6। अब आपको फॉर्मूला लगाना है मीडियम के लिए, तो मीडियम के लिए अभी हमने फॉर्मूला बताया था, क्या लगाओगे बेटा? CM इज इक्वल K इंटू सी। सी क्या है? एयर की कैपेसिटी। K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सीधे 6 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, जो आपका आया है मीडियम की कैपेसिटी आपको मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो आप यहाँ लिखेंगे CM इज इक्वल K की वैल्यू 6 है इंटू सी की वैल्यू आपने फाइंड की है 17.70 इंटू 10⁻⁻12 आंसर फैराड में आएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई कराना है। CM इज इक्वल 6 0 0, 6 7 जा 42, 4 कैरी आएगा, 6 7 जा 42, 4 कैरी आया था तो 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 46, फिर से 4 कैरी आया, 6 1 जा 6 4 10। डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद में? 2 डिजिट्स के बाद में इंटू 10⁻⁻12 फैराड। अब अगर आपको इसको पीको फैराड में लिखना है तो इसको भी आप लिख सकते हैं पीको फैराड में। क्या लिखेंगे? 17.70 पीको फैराड। ठीक, आपका आंसर फैराड में भी है, पीको फैराड में। इसको भी आप लिख सकते हैं CM इज इक्वल 106.20 पीको फैराड। आपके 2 मीडियम की कैपेसिटी आ गई, एक मीडियम एयर है और एक मीडियम माइका है। बात समझ में आई? और अभी सवाल शुरू भी नहीं हुआ, हमने आपको ये निकाल के दिखाया है, एक एयर की कैपेसिटी और एक मीडियम की कैपेसिटी। सवाल अब शुरू होगा। इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है बेटा व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्ड कनेक्टेड, यदि आपकी बैटरी इस पूरे सिस्टम से अटैच है तो क्या होगा? अगर आपकी बैटरी इस पूरे सिस्टम से अटैच है तो उसका चार्ज अकॉर्डिंग टू वोल्टेज होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा? अकॉर्डिंग टू वोल्टेज। अब फर्स्ट पार्ट में वोल्टेज रहेगा क्योंकि आपकी बैटरी अटैच है और वोल्टेज कितना गिवन था? 100 वोल्ट गिवन था। अब आपको चार्ज फाइंड करना है। किसका चार्ज? मीडियम का चार्ज। QM इज इक्वल, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? C इज इक्वल Q अपॉन V। तो हमने CM लिख दिया मीडियम के लिए और QM लिख दिया अगेन मीडियम के लिए, और CM की कैपेसिटी आप निकाल चुके हैं मीडियम की कैपेसिटी, तो आपका फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा CM इज इक्वल QM इज इक्वल
ये ऊपर चला जाएगा CM मल्टीप्लाई बाई V, और CM आपका कितना आया है 106.20 पिको फैरड। और अगर आपको फैरड की पिको फैरड की वैल्यू लिखना है तो ये वाली लाइन लिख लीजिएगा, QM इज इक्वल, हमने ऊपर वाली लाइन से वैल्यू लिया 106.20 इंटू 10 की पावर -12, और वोल्टेज ले लिया हमने कितना 100 जो गिवन है। बात समझ में आई? अब जैसे ही आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे यहां से दो पावर क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा QM इज इक्वल 106.20 इंटू 10 की पावर -10, ये हो जाएगा आंसर कूलाम में। बात समझ में आई? ये आपका आ गया मीडियम का चार्ज, टोटल चार्ज। कब? जब आपकी पावर सप्लाई कनेक्ट होगी। और अगर पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, जो आपका सेकेंड पार्ट में कह रहा है, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, आफ्टर द सप्लाई वॉज डिस्कनेक्टेड, यदि आपकी पावर सप्लाई क्या हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, तो जब पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो आपको कौन सी कैपेसिटी यूज करना है, सी। फिर आपको मीडियम वाली कैपेसिटी नहीं यूज करना है। आपकी कैपेसिटी ये क्यों नहीं यूज होगी बेटा, क्योंकि अब आपका जो वोल्टेज है वो यूज हो रहा है और प्लस उसको नया वोल्टेज मिल नहीं रहा है। तो स्टार्टिंग में उसकी कैपेसिटी कितनी थी, जितनी एयर में थी। अब आपकी ये यूज हो रही तो आपका पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आपको अब इसके लिए चार्ज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसका चार्ज अलग होगा और इसका चार्ज अलग होगा। इसका चार्ज किसके लिए, जब आपको वोल्टेज रेगुलर मिल रहा है। आप समझ में आ रही कि नहीं? जब आपको वोल्टेज रेगुलर मिलेगा तो चार्ज की वैल्यू अलग होगी, और जब आपको वोल्टेज रेगुलर नहीं मिलेगा तो आपकी चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी एयर के लिए। तो सबसे पहले आप, ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट में पावर सप्लाई कनेक्ट है। सेकेंड पार्ट में आपका कह रहा पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई, तो आप निकालेंगे नया चार्ज। आपको चार्ज चाहिए किसका बेटा, एयर का। तो एयर की कैपेसिटी कितनी है, 17.70 पिको फैरड में, और फैरड में 10 की पावर -12 लग जाएगा। ये बात समझ में आई? तो आप निकालेंगे इसी फॉर्मूले से, C इज इक्वल Q अपॉन V से। आपका फॉर्मूला हो जाएगा Q इज इक्वल CV। Q इज इक्वल C की प्लेस में हम लिखेंगे 17.70 इंटू 10 की पावर -12, और पावर सप्लाई कितनी है आपकी 100 की थी, तो हमने पावर सप्लाई दे दिया इसको। आपका चार्ज हो गया 17.70 इंटू 10 की पावर -10 कूलाम। ये हो गया आपका चार्ज, ठीक, ये आपका चार्ज हो गया। अब आपको चाहिए वो वोल्टेज जो डिक्रीज हुआ है। अब आपका वोल्टेज क्या चाहिए, जो डिक्रीज वोल्टेज है, यानी अब आपके पास वोल्टेज कितना बचा होगा जब आपकी पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो उसके लिए आपको ये चार्ज लेना है, और कैपेसिटी कौन सी लेना है, ये कैपेसिटी लेना है, क्योंकि आपके बीच में मीडियम अब किसका भरा हुआ है, माइका का। तो आपने पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट की है, माइका नहीं निकाल लेंगे प्लाई उसके प्लेट्स के बीच से, माइका तो अभी भी भरा हुआ है ना, यानी उसकी कैपेसिटी बदल चुकी है, बट उसके पास चार्ज कितना था स्टार्टिंग में जब एयर था, तो चार्ज था 17.70 इंटू 10 की पावर -10 कूलाम, लेकिन उसकी कैपेसिटी कितनी हो गई है, ये हो गई है। और आपको चाहिए वोल्टेज, तो वोल्टेज चेंज हो जाएगा। तो आप फिर से यही फॉर्मूला लेंगे, C इज इक्वल Q अपॉन V, और V आपका चेंज हो जाएगा V डैश में, और ये हो जाएगा आपका CM। तो V डैश इज इक्वल Q अपॉन CM। Q की वैल्यू कितनी है 17.70 इंटू 10 की पावर -10 डिवाइड बाई CM की वैल्यू कितनी है 106.20 इंटू 10 की पावर -12। ये बात समझ में आई? अब यहां से -12 -10 को कैंसिल करेगा, यहां बचेगा 10 की पावर -2, और ये 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे आप V डैश इज इक्वल Q अपॉन CM इज इक्वल 17.70 मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ आ जाएगा 106.20। डेसिमल रिमूव करेंगे, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर भी 2 पॉइंट है, नीचे भी 2 पॉइंट है। इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा 17700 डिवाइड बाई 10620। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करके बतानी है, तो इसका डिवाइड करेंगे
जो आएगा वही क्या है आपका आंसर है। अभी करके बताइए, पहले नोट कर लीजिए फिर उसके बाद बताइए तो हम आंसर लिख देंगे। कोई एक बच्चा इसको डिवाइड करे 177,000 डिवाइड बाई 10620। यह आ जाएगी बेटा आपकी कैपेसिटी। हमने पॉइंट ए लिया, पॉइंट बी लिया, यहाँ पे हमें 3 कैपेसिटर शो करने हैं। Q2 को आप लिखोगे 0.3 × 10⁻⁹ कूलम। हमसे जो कहा गया है देखिए हम करते जाएंगे। ये दोनों का अंदर हो गया। अच्छा कौन हम कल परसों 2 दिन नहीं आएंगे। ला बुक ला। कपड़ा कहाँ गया बच्चा? साक्षी उठाओ जरा। दो दिन ही तो और स्कूल खुलना है, उसके बाद वैसे भी बंद हो जाना है।
तो फालतू गोला मारने वाली प्रवृत्ति है। ला भूख ला, फटी तो नहीं है? हाँ, जो अलग हो जाए। चलो देखो बेटा, कल कहाँ तक हो गया था बच्चा? कहाँ तक हो गया? 15 नंबर देखो बेटा। 15 नंबर में कह रहा है a parallel plate capacitor of plate area 100 centimeter square and gap 2 mm is given, charge of 4.425 into 10 की पावर -9 coulomb. Calculate the potential difference between the plates. Question number 15 given एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको बेटा मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल 100 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब ये समझ में आ जाता है ना, अगर हम डायरेक्ट कर देते हैं तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर -2, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर इनके बीच का गैप दिया हुआ है स्मॉल डी, डी इज इक्वल 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। इसके बाद चार्ज गिवन है, क्यू इज इक्वल 4.425 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। अब बेटा पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना पड़ेगा। सॉल्यूशन, कैपेसिटेंस निकालने के लिए C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए, और एयर के लिए कहा है तो K अपॉन डी, और एयर के लिए K की वैल्यू क्या होगी 1। आप चाहो तो इसको C नॉट लिखो, नहीं चाहो तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमने यहाँ साइड में दिखा दिया, एयर के लिए K की वैल्यू 1 है, बाकी सारी वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट का मान अलग से लिख लीजिए, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। सारी वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए। C इज इक्वल 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू एरिया 100 इंटू 10 की पावर -4 एंड D की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -3, K की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 1। 10 की पावर -3 -4 को कैंसिल करेगी, -1 आ जाएगा। यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे, नीचे 100 आएगा, ये 100 इसको कैंसिल करेगा, ये -1 यहाँ ऐड हो जाएगा। C इज इक्वल 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, डेसिमल लग जाएगा, यह आ जाएगा 442.5 इंटू 10 की पावर -13 फैराड। यह आ गई आपकी कैपेसिटी। अब इसकी कैपेसिटी से आप इसका पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। पोटेंशियल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल Q अपॉन V। हमें फाइंड करना है पोटेंशियल, V इज इक्वल Q अपॉन C। Q की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कैपेसिटेंस आपने फाइंड कर लिया है, दोनों को उठा के पुट कर दीजिए। V इज इक्वल 4.425 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइड बाई 442.5 इंटू 10 की पावर -13। यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे तो ऊपर 3 डिजिट, नीचे 1 डिजिट, यहाँ इंक्रीज हो जाएगा 100। ठीक, -9 -13 को कैंसिल करेगा, -4 बचेगा, -4 इस 100 को कैंसिल करेगा, 10 की पावर -2 बचेगा। इसके बाद में ये पूरी वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल आ जाएगा 10 की पावर -2 ऊपर जाएगी, 10 की पावर +2 हो जाएगी, इज इक्वल
100 वोल्ट। ये आपका पोटेंशियल आ जाएगा बेटा विदाउट एनी कंडीशन। अब आपकी कंडीशन स्टार्ट हो रही है इस न्यूमेरिकल की। ये तो हो गया सिंपल जो उसने पूछा था। अब उसकी पहली कंडीशन है द गैप इज इंक्रीज्ड बाई 1 मिलीमीटर। अगर उसका गैप 1 मिलीमीटर इंक्रीज कर दिया जाए तो 2 मिलीमीटर पहले से है, 1 मिलीमीटर और इंक्रीज कर दो। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, गैप इंक्रीज्ड 1 मिलीमीटर। तो हम बेटा सपोज करेंगे डी डैश इज इक्वल डी प्लस 1 mm। डी ऑलरेडी गिवन है 2 mm प्लस 1 mm, ओवरऑल हो गया 3 mm। ये आ गई हमारी डी डैश की वैल्यू। अब मीटर में चेंज करेंगे 3 × 10⁻³ मीटर। आपको सेम फॉर्मूला उठाना है, C इज इक्वल, और इसमें फाइंड क्या करना है, द गैप इज इंक्रीज्ड by 1 millimeter and the area of each plate is increased 100 centimeter square। सारे केस में हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। इसके पहले सेंटेंस है द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे आप निकालेंगे C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन, यहाँ लिखेंगे D डैश। अब ध्यान से देखो बेटा, बाकी सारी वैल्यू आपकी सेम है, D केवल चेंज होगा। C इज इक्वल 8.85 10⁻⁻12, एरिया 100 × 10⁻⁴, एयर के लिए 1 डिवाइड बाई डी डैश 3 × 10⁻³ डेसिमल रिमूव करेंगे, नीचे 100 आएगा, 100 कैंसिल, ये इसको कैंसिल करेगा, 10⁻⁻1 बचेगा। अब आपको 3 से डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा 885 10⁻13 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 रिमेनिंग पार्ट बचेगा। तो यहाँ आएगा 3 8 जा 24, 3 7 जा 27, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। C इज इक्वल 275 × 10⁻13 फैराड। यह आ जाएगी बेटा आपकी कैपेसिटी। 3 9 जा, अच्छा 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तब भी 1 बचेगा। 3 5 जा 15, तो यहाँ आएगा 295। अब आपको चाहिए पोटेंशियल, सेम फार्मूला उठा लीजिए, C इज इक्वल Q अपॉन V, V इज इक्वल Q अपॉन C। चार्ज आपका सेम रहेगा जो गिवन है 4.425, V इज इक्वल 4.425 × 10⁻⁹ डिवाइड बाई 295 × 10⁻13, -9 से -13 कैंसिल होगा, माइनस का 4 बचेगा। यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे, नीचे आ जाएंगे 30, ये 30 इसको डिस्टर्ब करेंगे, यहाँ -1 बचेगा, ये -1 ऊपर भेज दीजिए, एक 0 इंक्रीज हो जाएगा। 44250 डिवाइड बाई 295, आपको इसको कैलकुलेट करना है और यहाँ पे जो आंसर आएगा वोल्टेज में आएगा। फिर देखिए इसकी सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज इंक्रीज्ड बाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा 100 तो पहले से है, 100 और इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो नया एरिया सपोज कर लेना है इसी तरह, एरिया ऑफ ईच प्लेट इंक्रीज्ड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए डैश इज इक्वल ए प्लस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे लिखोगे आप 100 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए डैश इज इक्वल, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 200 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर।
सेम फॉर्मूला फिर से लगाएंगे और फिर से हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट A डैश K अपॉन D। अब ध्यान से देखो, जब भी कंडीशन चेंज करेंगे तो जिसके लिए कहा होगा उसी की कंडीशन चेंज करेंगे, बाकी किसी में कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। पहली बार उसने कहा था डी चेंज करो, हमने एरिया वही रखा, ठीक। अब इस बार डी के लिए उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है तो डी हमारा फिर से पुराना वाला आ जाएगा 2 मिलीमीटर और एरिया ही चेंज करेंगे। तो C इज इक्वल 8.85 10 की पावर -12 और एरिया की प्लेस में लिखेंगे 200 इंटू 10 की पावर -4। एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक 1 और डी की प्लेस में 2 इंटू 10 की पावर -3। ये -3 -4 को कैंसिल करेगा -1, 2 1 जा 2, ये 100 हो जाएगा। यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे, ये 100 हो गया, 100 100 कैंसिल हो गया। C इज इक्वल 885 इंटू 10 की पावर -13 फैराड। ये आ गई आपकी कैपेसिटी। आपको फिर से पोटेंशियल का फार्मूला चाहिए। C इज इक्वल Q अपॉन V, V इज इक्वल Q अपॉन C। Q की वैल्यू 4.425 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइड बाई 885 इंटू 10 की पावर -13। -9 से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 4 बचेगा। यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे, नीचे 3 जीरो इंक्रीज हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, 10 की पावर -1 बचेगा, ये -1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 44250 डिवाइड बाई 885 और आंसर अगेन आएगा वोल्टेज में। ये दोनों लास्ट वाले आपको सॉल्व करने हैं, बस नोट करिए। श्रेया आज फिर गायब हो गई, कहाँ चली गई अर्चिता? ये जो संडे आ रहा है, ये वाले संडे आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक।
क्योंकि अगले दिन चुनाव है और चुनाव वाले दिन आना है शाम को अपने टाइम से, अपने टाइम से आना, इसी टाइम 5 से 6। नोट हो गया बेटा?
लोड हो गया बेटा। लोड हो गया, बचाए का नीचे का, चलिए तुम्हारा भी नहीं लोड हुआ, उसका लोड नहीं, लोड कर लो उससे। देखो बच्चा 16 नंबर, 3 capacitors 2 picofarad 3 picofarad 4 picofarad are connected in parallel. First part, what is the total capacitance of the combination? आपके जितने कैपेसिटर्स हैं इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है और आपकी कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट वैल्यू पूछ रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है डिटरमाइन द चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई। आपको टोटल चार्ज बताना है इसके कॉम्बिनेशन का, सॉरी हाँ चार्ज ही बताना है, और वोल्टेज सप्लाई है आपकी 100 वोल्ट की। ध्यान से देखिए, सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाएंगे। 16 नंबर, कोई दो पॉइंट ले लीजिए, हमने पॉइंट ए लिया, पॉइंट बी लिया। यहाँ पे हमें 3 कैपेसिटर शो करने हैं। एक कैपेसिटर ऊपर लगा दिया बेटा, एक कैपेसिटर यहीं पे लगा दिया हमने, और एक कैपेसिटर इसके नीचे लगा दिया। पहला वाला कह रहा है 2 पिकोफैरड, दूसरा कह रहा है 3 पिकोफैरड, थर्ड नंबर में 4 पिकोफैरड, 4 पिकोफैरड, और इनको एक बैटरी से जोड़ दिया गया है जिसका वोल्टेज है 100 वोल्ट। वोल्टेज गिवन 100 वोल्ट। फर्स्ट पार्ट, अब आपको डायग्राम से समझ में आ रहा है कि ये तीनों कैपेसिटर किस में ऐड किए जाएंगे, पैरेलल में ऐड किए जाएंगे। तो आपको इसका कॉम्बिनेशन चाहिए, तो पैरेलल के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था। ये जो डायग्राम है और इसकी जो वैल्यू है ये ऑलरेडी न्यूमेरिकल में गिवन है। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट का फार्मूला C इज इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 की वैल्यू 2 प्लस C2 की वैल्यू 3, C3 की वैल्यू 4, 2 3 5 5 4 9 पिको फैरड। हमारे कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन आ गया 9 पिको फैरड। यानी इन तीनों को मिला करके हमारे जिस डिवाइस में ये तीनों लगे होंगे उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 9 पिको फैरड की। बात समझ में आ गई। अब हमने आपको बताया था कि अगर यहाँ से कोई चार्ज Q जा रहा है, सपोज कर लिया हमने स्मॉल q, अब अगर स्मॉल q चार्ज यहाँ पे जा रहा है बेटा और सबकी कैपेसिटी अलग अलग है तो चार्ज भी सबके पास अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सपोज पहले वाले में चार्ज जा रहा है Q1, दूसरे वाले में चार्ज जा रहा है Q2 और तीसरे वाले में चार्ज जा रहा है Q3 और सबको सेम पोटेंशियल मिल रहा है। हमने बताया था इस साइड का पोटेंशियल V होगा, इस साइड का पोटेंशियल 0 और V गिवन है कितना 100, तो सबके पास वोल्टेज कितना है 100। समझ में, इस साइड वोल्टेज 0 है तो वोल्टेज सबको सेम मिल रहा है बट कैपेसिटी सबकी क्या है अलग अलग। तो इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था। सेकेंड पार्ट, फार्मूला आपका कहाँ से आएगा, Q इज इक्वल CV। तो चार्ज सबके पास अलग अलग है Q1 और कैपेसिटी सबकी अलग अलग है C1 बट पोटेंशियल क्या है सबका सेम, तो Q1 यहाँ से मिल जाएगा। अब Q2 अगर चाहिए तो Q2 इज इक्वल C2V, Q3 चाहिए Q3 इज इक्वल C3V। बात समझ में आई। चार्ज की वैल्यू सबकी अलग अलग होगी, क्यों, क्योंकि कैपेसिटी सबकी अलग अलग है। इन केस अगर तीनों की कैपेसिटी सेम होती तो चार्ज भी तीनों के पास सेम होता। पैरेलल में भी ये बात याद रखनी है, अगर यहाँ पे 2 पिकोफैरड 2 पिकोफैरड 2 पिकोफैरड तीनों की कैपेसिटी सेम होती तो चार्ज भी सबके पास क्या होता सेम होता। ये चीज़ याद रखना है, चाहे पैरेलल में हो और चाहे सीरीज में, 2-3 चीज़ें कॉमन हैं
इनको हमें याद रखना है तो हमारा न्यूमेरिकल में टाइम बचेगा। अब यहाँ पे वैल्यू कैपेसिटी की अलग अलग है तो हमें चार्ज निकालना पड़ेगा। Q1 इज इक्वल C1 की वैल्यू है 2 पिको फैरड, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 2 इंटू 10⁻12 इंटू वोल्टेज है इसका 100। Q1 इज इक्वल -2 डिस्टर्ब होगा, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 10⁻10 पहले वाले कैपेसिटर पे चार्ज इतना है। दूसरे वाले पे Q2 इज इक्वल C2 की वैल्यू 3 इंटू 10⁻12 मल्टीप्लाई बाई 100। Q2 इज इक्वल 3 इंटू 10⁻10 कूलम, ये इसका चार्ज आ गया। ठीक, इसके बाद में Q3 इज इक्वल C3 है 4 इंटू 10⁻12 वोल्टेज सेम है। Q3 इज इक्वल 4 इंटू 10⁻10 कूलम। बात समझ में आई कैसे फाइंड करेंगे? सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे Q1, Q2 और Q3 के टर्म में। कैपेसिटी सबकी अलग अलग है, सबकी अलग अलग कैपेसिटी लिया। अब ये तीनों एक ही जंक्शन से जुड़े हुए हैं इसलिए तीनों का वोल्टेज क्या है? सेम है, तो हमने तीनों को वोल्टेज सेम दे दिया और चार्ज की वैल्यू अलग अलग आ गई। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है बेटा, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air between the plates has a capacitance of 6 farad. What will be the new capacitance if the gap between the plates is reduced to half? यदि उनके बीच की दूरी को पहले से घटा करके आधा कर दिया जाए तो कह रहा है नया कैपेसिटेंस बताना है। आगे कह रहा है द गैप इज फिल्ड विद द सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक 5, और कह रहा है कि यदि उनके बीच का जो गैप है उसको डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया गया और उस डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू 5 है। पहले कैपेसिटी ऑलरेडी गिवन है, उसे हम लिखेंगे, बात समझ में आई? फिर कंडीशन फॉलो कराएंगे, फिर हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट होगा। तो ध्यान से देखो बेटा, हमसे जो कहा गया एज इट इज हम करते जाएंगे। सबसे पहले उसने कहा है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है 6 माइक्रोफैरड या पिकोफैरड, 6 माइक्रोफैरड। इसको हम चेंज कर लेंगे 6 इंटू 10⁻6 फैरड। ये गिवन है बेटा, तो यहाँ हम लिखेंगे गिवन। ठीक, अब ध्यान से देखते जाओ। हमने 2 प्लेट ली, इन प्लेट के बीच का गैप पहले d था। अब कह रहा है दोनों प्लेट के बीच को गैप को आधा कर दिया गया, मतलब d/2। तो एक कंडीशन हो गई ये C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। पहले भरी थी इनके बीच में एयर, तो एयर का डाइलेक्ट्रिक होता है 1। क्लियर? इसके बाद में कह रहा है यहाँ पे कोई सब्सटेंस फिल कर दिया जाता है, तो हमने यहाँ पे सब्सटेंस लिख दिया, नाम दिया नहीं है तो हम नाम नहीं लिखेंगे, बट डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू गिवन है कितनी है? 5। तो हमारे लिए सेम फॉर्मूला फिर वर्क करेगा C डैश, क्योंकि कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इंक्रीज कर गया, और डाइलेक्ट्रिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटी के। अगर डाइलेक्ट्रिक बढ़ेगा तो कैपेसिटी भी बढ़ेगी। C डैश इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन D डैश, और D डैश की वैल्यू है d/2। ये बात समझ में आई? नहीं आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले हमारे कैपेसिटेंस की कैपेसिटी 6 थी, तो ये कंडीशन थी। फिर कह रहा है कि यदि दोनों के बीच की प्लेट्स का गैप आधा कर दिया जाए, तो हमने आधा कर दिया, और कह रहा है जो गैप है इसमें फिल कर दो क्या? सब्सटेंस। डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू 5 कर दी जाए, तो हमने कर दिया और नई कैपेसिटी मान ली। इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है इसमें? अब आपको इक्वेशन सपोज करनी है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? आपको इस k की जगह लेना है 1, तो आप k को भी अलग अलग मान लीजिए, इसको k डैश मान लीजिए, तो आपके दिमाग से कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक, हमने उसको C डैश माना, k डैश माना, d डैश माना। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड। अब आप इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट का भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे C डैश इज इक्वल C डैश अपॉन C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट A K डैश अपॉन D डैश। अब बेटा C का वैल्यू रिवर्स हो जाएगा,
जस्ट अपोजिट हो जाएगा, डी ऊपर जाएगा और एप्सिलॉन नॉट ए के नीचे आ जाएगा। ये बात समझ में आई नहीं आई? एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो जाएगा, सी डैश अपॉन सी इज इक्वल के डैश अपॉन डी डैश इंटू डी अपॉन के डैश की वैल्यू कितनी है 5, के की वैल्यू कितनी है 1, डी की वैल्यू डी है और डी डैश की वैल्यू d/2 है। रखेंगे के डैश की जगह 5 इंटू डी की जगह डी डिवाइड बाई डी डैश की जगह d/2 इंटू के की जगह 1। क्लियर? ये 2 ऊपर जाएगा, इस d से ये d कैंसिल हो जाएगा तो 5 2 जा 10 हो गया। c डैश अपॉन c इज इक्वल 5 2 जा 10। कुछ बचा हमारे पास? इसके अपॉन में 1 है, 1 से कोई दिक्कत ही नहीं है। c की वैल्यू कितनी गिवन है? सबसे ऊपर देखो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6। यहाँ रखेंगे c डैश अपॉन 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 10/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 1 से मल्टीप्लाई कराओगे कोई चेंजमेंट नहीं। c डैश इज इक्वल 60 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और ये आंसर आ रहा है अभी फैराड में। ठीक, अगर माइक्रो फैराड में लिखना है 6 डैश इज इक्वल 60 माइक्रो फैराड, 10 की पावर माइनस 6 हटा दो, ये काम खत्म। अब दूसरी चीज देखिए, आपके बुक में जो आंसर आ रहा है वो Q1 Q2 Q3 का उसमें आ रहा है, नैनो कूलाम में आ रहा है, तो उससे घबराना नहीं है। आप अगर इसमें डेसिमल इस साइड लगाओगे तो आप इसको क्या लिखोगे? Q1 इज इक्वल 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलाम हो जाएगा। माइनस 9 हटाओगे क्या लिख सकते हो? नैनो कूलाम लिख सकते हो कि नहीं? तो यहाँ पर भी लिखोगे आप, यहाँ पर भी अगर आप देखो तो ध्यान से Q2 को आप लिखोगे 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलाम, 9 हटेगा नैनो कूलाम बन जाएगा। सेम एज इट इज इसमें भी हो जाएगा, Q3 इज इक्वल 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलाम, माइनस 9 सब में हटा दो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नैनो कूलाम में। तो यहाँ पे अगर हम लिखे हैं तो Q1 आएगा 0.2 नैनो कूलाम, Q2 आएगा 0.3 नैनो कूलाम और Q3 आएगा 0.4 नैनो कूलाम और 1 नैनो कूलाम इज इक्वल 10 की पावर माइनस 9 कूलाम। बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी वो वाला न्यूमेरिकल आ गया, क्वेश्चन नंबर 17 कर लेंगे। अब इस तरह का सिर्फ हमको कंडीशन फॉलो करनी, जो वो कहे उसको एक तरफ लिख देंगे, जो दूसरी बार कह रहा है उसको दूसरी तरफ लिख देंगे। और बेटा डायग्राम अगर बना लोगे ना, जिंदगी में न्यूमेरिकल गलत ही नहीं होंगे। जैसे मैंने बना लिया है, आप 2 प्लेट बना लो, उसकी कंडीशन लिख लो, दूसरी कंडीशन में जो कह रहा है फिर प्लेट बनाओ, जो कह रहा है उसको कर दो वहीं लिख दो। पहले में डाइलेक्ट्रिक नहीं दिया, हमने मान लिया अपने मन से एयर, जहाँ कुछ न दिए हो अपने मन से एयर मान लेना। कभी जिंदगी में सवाल गलत हो ही नहीं सकता, चाहे जितना टफ सवाल आ जाए। आपने अगर सवाल की कंडीशन को फॉलो करना शुरू कर दिया तो कोई न्यूमेरिकल ऐसा नहीं जिसको हम हल ना कर पाए। बात समझ में आई? नोट करो।
नोट हो गया बेटा? आगे नोट हो गया सबका? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 3 capacitors of 9 picofarad are connected in series. First condition, what is the total capacitance of the combination? आपको सारे capacitors की कैपेसिटी बताना है कंबाइंड करने के बाद। सेकंड में कह रहा है what is the potential difference across each capacitors if the combination is connected to a 120 वोल्ट सप्लाई, 120 वोल्ट सप्लाई। सेम क्वेश्चन जैसे हमने अभी किया था क्वेश्चन नंबर 16, सेम वैसे ही है, बस ये पैरेलल की तरह क्या हो गया है, सीरीज हो गया है। तो हमको फिर से ध्यान से देखना है कि सीरीज में हमें क्या करना पड़ेगा। कैपेसिटी सबकी दी हुई है 9 पिकोफैरड। 18 नंबर फिर से डायग्राम बनाएंगे। एक पॉइंट ए लिया हमने ए और बैटरी लगा दी हमने प्लस माइनस, पोटेंशियल V20, वोल्टेज सप्लाई है 120 वोल्ट की। यहाँ पे सपोज करेंगे पॉइंट बी, फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर, थर्ड कैपेसिटर। C1 की कैपेसिटी 9 पिकोफैरड, C2 की कैपेसिटी अगेन 9 पिकोफैरड एंड C3 की कैपेसिटी अगेन 9 पिकोफैरड। क्लियर? अब आपको हमने बताया था कि यहाँ पे अगर कोई चार्ज Q जा रहा है तो सबके पास सेम चार्ज जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, जबकि सबकी कैपेसिटी क्या है, अलग अलग है। और यहाँ पे वोल्टेज आपका डिफर करेगा। फर्स्ट वाले के पास में वोल्टेज जाएगा V1, सेकेंड वाले के पास जाएगा V2 एंड थर्ड वाले के पास जाएगा V3। बट अभी अभी हमने कहा था कि अगर सबकी कैपेसिटी सेम है तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज सेम हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज तभी सेम हो सकता है जब सबकी कैपेसिटी सेम हो। बात समझ में आई? और पैरेलल में तभी चार्ज सेम हो सकता है जब सबकी कैपेसिटी सेम हो। बात समझ में आई? ये कंडीशन याद रखना है। तो इसमें हमें वोल्टेज आसानी से मिल जाएगा क्योंकि सबका कैपेसिटेंस क्या है, सेम है। तो सबसे पहले इनको सीरीज में ऐड करिए। ये गिवन है बेटा आपका, जो हमने बोर्ड पे डायग्राम बनाया है। इसके बाद सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट सीरीज में ऐड करना है। 1/c इज इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। 1/c इज इक्वल C1 की वैल्यू 9 प्लस C2 की वैल्यू 9, C3 की वैल्यू अगेन 9। 1/c इज इक्वल एलसीएम आएगा बेटा 9, 9 से 9 कैंसिल 1, अगेन 9 से 9 कैंसिल 1, 9 से 9 कैंसिल 1, क्या गया 3/9। तो अगर हम C की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 9/3, 3 3 जा 9, आंसर आएगा 3 पिकोफैरड। यानी कि अगर कहीं पर सीरीज में 3 कैपेसिटर 9 पिकोफैरड के लगे हैं तो इनकी कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इनकी कैपेसिटी ओवरऑल कितनी बचेगी, 3 पिकोफैरड की बचेगी। अब इसके अकॉर्डिंग इस पर चार्ज होगा। और समझना है क्योंकि कैपेसिटी ही डिसाइड करती है कि चार्ज कितना लेना है। अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा, सबका वोल्टेज फाइंड करना है। और किससे जुड़े हुए हैं ये, 120 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हुए हैं। तो पहले हमें इस पूरे सर्किट का टोटल चार्ज चाहिए। चार्ज तभी हम निकाल पाएंगे जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल CV। अब C हमें दिया है 3 पिकोफैरड, Q इज इक्वल 3 × 10⁻⁻12 एंड वोल्टेज सप्लाई है 120 की। Q इज इक्वल मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 जा 36 × 10⁻12 कूलम।
ये हमारे पास चार्ज आ गया बेटा, ठीक, टोटल चार्ज। अब हमने आपको बताया था कि इस पे फॉर्मूला कहाँ से लेना है, C इज इक्वल क्यू अपॉन वी, ठीक। अगर हम जनरल वे में फॉर्मूला बनाते, सपोज करो अगर ये तीनों की कैपेसिटी अलग अलग होती, अगर होती तो हम यही तो फॉर्मूला बनाते, V1 इज इक्वल क्यू अपॉन C1 क्योंकि चार्ज सबके पास सेम होता, V2 इज इक्वल क्यू अपॉन C2 एंड V3 इज इक्वल क्यू अपॉन C3। अब जनरल वे में आप निकाल के देख लो, सबका पोटेंशियल सेम आएगा क्योंकि कैपेसिटी सबकी सेम है। V1 चार्ज की जगह हमने रखा 360 इंटू 10 की पावर माइनस 12, कैपेसिटी है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये कट गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। वोल्टेज कितना आ गया बेटा, V1 इज इक्वल 40 वोल्ट आया, नहीं आया, सेम एज इट इज यहाँ रखोगे, क्या रखोगे 360 10 की पावर माइनस 12 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, फिर क्या आया 40 आया। यहाँ भी रखो 360 10 की पावर माइनस 12 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 की पावर माइनस 12, माइनस 12 माइनस 12, 9 4 जा 36। अगेन आंसर क्या आया, पहले ही बता दिया था हमने कि वोल्टेज सबका क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों सेम आ रहा है, क्योंकि सबकी कैपेसिटी सेम है। अगर कैपेसिटी डिफरेंस होती तो सबका वोल्टेज भी क्या आता, डिफरेंस आता। नोट करिए, भूल जाता हूँ मैं रोज लाने को। ये सब गलत बता रही है, जो बात बता रही सब गलत, उसका चेहरा बता रहा है, एक भी सूचना इसमें सही नहीं है, इसका जस्ट अपोजिट हुआ है। लाओ बुक लाओ, सही है। चलो बेटा देखो, कल हो गया था बेटा 18 नंबर, 19 बताना है ना, 19 नंबर देखिए। एन इलेक्ट्रिक, बेटा जब न्यूमेरिकल पढ़ा करें तो आप भी एक बार बुक में पढ़ा करो, तभी न्यूमेरिकल समझ में आएगा। एन इलेक्ट्रिक टेक्निकल रिक्वायर्स अ capacitance of 2 microfarad across 1000 volt using large number of capacitor। इसका मतलब है कि हमारे पास जो जितने भी कैपेसिटर हैं उनकी टोटल कैपेसिटी 2 माइक्रोफैरड की है और वो इक्विपमेंट 1000 वोल्ट तक के लिए कैपेबल है। विद कैपेसिटेंस
1 इंटू 10 की पावर -6 और उन सभी कैपेसिटर की कैपेसिटी 1 इंटू 10 की पावर -6 फैराड है। ईच कैपेसिटर कैन withstand the potential difference not more than 400 वोल्ट। उनमें से एक भी कैपेसिटर 400 से अधिक के वोल्टेज को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सजेस्ट अ सुइटेबल अरेंजमेंट दैट रिक्वायर्स द मिनिमम कैपेसिटर। आपको एक सुइटेबल अरेंजमेंट बताना है जो इस वोल्टेज के लिए कैपेबल हो। बात समझ में आई? आपके पास मैक्सिमम वोल्टेज आप यूज करा सकते हैं 1000, आप 400 से ज़्यादा वोल्टेज यूज नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा और कुछ दिया है 1 माइक्रोफैरड सभी की कैपेसिटी है। तो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है एक एन टर्म के लिए। वैसे तो ये डायग्राम आंसर का है, मतलब कि इसी तरह का डायग्राम बनेगा, लेकिन आपको एग्जैक्ट नंबर बताना है कि आप कितने कैपेसिटर यूज करोगे। बात समझ में आई? तो हम एक जनरल डायग्राम आपके जो क्वेश्चन में बना हुआ है उसको बना देते हैं। 1 2 3 डैट 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 डैश एन टर्म तक, ऊपर भी लगे हैं 1 2 3 डैट 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 डैश एन टर्म तक, 1 2 3 डैट 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 डैश एन टर्म तक। इसके बाद आपका सर्किट कंप्लीट हो गया, बैटरी लगी है। इस बैटरी का वोल्टेज है 1000 वोल्ट और आपकी एक रो 400 वोल्ट मैक्सिमम यूज कर सकती है, इससे ज़्यादा यूज नहीं कर सकती है। तो अगर इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल आए और आपसे पूछे कि आपको सुइटेबल अरेंजमेंट ड्रॉ करना है, कॉन्सेप्ट ठीक से समझ लीजिएगा, आपको कंफर्टेबल अरेंजमेंट बताना है, तो आपको इसमें देखना है कि आपका मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, मैक्सिमम वोल्टेज कितना है और मिनिमम वोल्टेज कितना है। बात समझ में आई? मैक्सिमम वोल्टेज given by battery and minimum voltage used by each row। आपकी प्रत्येक रो मिनिमम वोल्टेज यूज करेगी। जैसे यहाँ पे हमने इसके सामने लिखा है 400, मतलब ये इतना यूज कर सकती है, इससे कम हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी तरह ये वाली रो भी मिनिमम इतना वोल्टेज यूज कर सकती है, इससे कम हो गया 100 वोल्ट हो गया, 200 वोल्ट हो गया, 300 250 50 150 260 270 कोई प्रॉब्लम नहीं है। 400 से ज़्यादा इस रो के द्वारा यूज नहीं होना चाहिए। उसी तरह हम यहाँ भी लिख सकते हैं, ये भी मिनिमम 400 वोल्ट यूज कर सकती है। बात समझ में आई? इस तरह आपको अपने सर्किट डायग्राम में दिखा देना है। अब आपको जितना भी मैक्सिमम वोल्टेज गिवन है डिवाइड बाई एम, एंड एम इज stands for नंबर ऑफ कैपेसिटर, कि आप एक रो में कितना कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। 1000 जो आपका मैक्सिमम वोल्टेज है उसको लिखेंगे। एम क्या है हमने यहाँ पे लिख दिया, एम इज स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कैपेसिटर, कि आपके एक रो में कैपेसिटर कितने लग सकते हैं, इज इक्वल मिनिमम वोल्टेज। ये आपका मिनिमम वोल्टेज हो जाएगा। अब ये 400 इधर आ जाएगा और m इस साइड में आ जाएगा, तो आप यहाँ लिखेंगे m इज इक्वल 1000 डिवाइड बाई 400। 0 0 0 0 कैंसिल हो गए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। m की वैल्यू आ गई 2.5, ये मिल गया आपको।
अब प्रॉब्लम ये है कि बेटा हम 2.5 कैपेसिटर नहीं लगा सकते भाई। कैपेसिटर या तो एक होगा, या तो दो होंगे, या तो तीन होंगे, तो ये होल नंबर में नहीं है। तो हम मान लेंगे यहाँ पे 2.5 लिखा है, तो हम अप्रॉक्सीमेट सपोज कर लेंगे कि मिनिमम एक रो में कितने कैपेसिटर लग सकते हैं, 3 कैपेसिटर यूज किए जा सकते हैं। बात समझ में आई? कहीं पर भी डिवाइड करने के बाद में ऐसा न्यूमेरिकल दिया हो और मैक्सिमम वोल्टेज और मिनिमम वोल्टेज को डिवाइड करने के बाद में अगर आपके पास डेसिमल में वैल्यू आ रही है, तो आप उसको नियर अबाउट वाले में, जैसे 2.5 लिखा है तो इसका नियर अबाउट 2 भी हो सकता है, लेकिन आपको मैक्सिमम वाला सोच के चलना है। जैसे 2.5 को हम नियर अबाउट 2 भी ले सकते थे, लेकिन नियर अबाउट किसके है? 3 के भी तो नियर अबाउट है, तो हम मैक्सिमम वाले को नियर अबाउट मानेंगे। तो हमने यहाँ ले लिया 3 मिनिमम, यानी कि इतने कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर इन ईच रो। आप एक रो में 3 कैपेसिटर लगा सकते हैं। ये बात समझ में आई? अब आपको नंबर ऑफ रो फाइंड करनी है कि कितने नंबर ऑफ रो लगेंगे। यहाँ पे कितनी बनी है उससे कोई मतलब नहीं। इस तरह का सर्किट डायग्राम आपका बनेगा, ये न्यूमेरिकल आपको हिंट दे रहा है। ऐसा डायग्राम न्यूमेरिकल में बना हुआ है। आपको परफेक्ट डायग्राम बनाना एग्जैक्ट कि एक रो में कितने कैपेसिटर लगेंगे। हमको पता चल गया कितने लगेंगे, 3 कैपेसिटर लगेंगे। अब आपको नंबर ऑफ रो बताना है। बात समझ में आई? तो अगर हम इन कैपेसिटर्स को ऐड करें कितने टर्म तक बेटा? n टर्म तक। 1/3 1/3 प्लस 1/3, ये सब किस में लगे हैं बेटा? सीरीज में लगे हुए हैं, और इन रोज को पैरेलल में ऐड किया गया है। तो हम एक रो को अगर सॉल्व कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि एक रो में कितने कैपेसिटर हैं और नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी। प्लस डैश n/3, हमने इनको n टर्म तक ऐड कर लिया। अब इन टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर जो हमने ऐड किया है, इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये न्यूमेरिकल में गिवन है। कितना है बेटा? 2 माइक्रोफैरड है। यानी कि हम इन सबको अगर ऐड करेंगे तो हमारी टोटल कैपेसिटी कितनी आएगी? 2 माइक्रोफैरड आएगी। ये गिवन है न्यूमेरिकल में। तो यहाँ हम लिख लेंगे, जैसे वोल्टेज गिवन है वैसे ही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल, कैपिटल C इज इक्वल 2 माइक्रोफैरड। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक इतना आपको दिया हुआ है। अब आपकी ये कैपेसिटी इसके बराबर ही तो होगी, तो हम यहाँ से ले लेंगे 2 इज इक्वल n/3। नंबर ऑफ टर्म लास्ट कितना है? n/3, तो हमने इसको n के बराबर कर दिया। अब ये हो जाएगा n इज इक्वल 6, यानी कि आपकी एक रो में 3 कैपेसिटर यूज होंगे और नंबर ऑफ रो कितनी होंगी? 6। यहां से आपको मिल गया एग्जैक्ट आंसर। रो कितनी होनी चाहिए? 6 रो होनी चाहिए। तो आपका जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। एक रो लिया आपने, 1 2 3, सर्किट क्लोज। फिर आप दूसरी रो लेंगे, 1 2 3, अगेन सर्किट क्लोज हो जाएगा। फिर आप तीसरी रो लेंगे, 1 2 3, ठीक। इसके बाद आप चौथी रो लेंगे, 1 2 3, सर्किट क्लोज। अगेन 1 2 3, फिर से सर्किट क्लोज। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। एक और ले लेते हैं, 1 2 3, सर्किट क्लोज हो गया। अब इनके बीच में अपनी बैटरी ला दीजिए। ये हो गया आपका एग्जैक्ट सर्किट डायग्राम। प्लस माइनस V इज इक्वल 1000 वोल्ट, एंड इन सबकी कैपेसिटी एग्जैक्ट गिवन है 1 माइक्रोफैरड। तो एक में शो कर देंगे ऊपर नीचे, बीच में भी सबकी कैपेसिटी क्या है? 1 माइक्रोफैरड। बात समझ में आई? नहीं आई? ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। मिनिमम वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज से आपको नंबर ऑफ कैपेसिटर मिलेंगे,
और जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो लास्ट टर्म उठाना है आपको और जितनी आपकी कैपेसिटी दी हुई है उसके बराबर कर देना है। 2 क्या है? कैपेसिटी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी आपको पहले से गिवन है। 2 इज इक्वल एन बाई 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, एन इज इक्वल आ गया 6। तो आपकी कितनी रो बनेंगी? 6 रो बनेंगी। बात समझ में आई? नोट करिए। यहाँ पे भी लिख लेंगे बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ये, तो आप यहाँ पर भी ऐसे एरो बना के लिख लीजिए। मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज, और यहाँ पे एरो बना के लिख लेंगे मिनिमम वोल्टेज।
नोट हो गया बेटा? अगर मान लीजिए इसी न्यूमेरिकल में पूछा होता टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने यूज हुए, तो आपके नंबर ऑफ कैपेसिटर और नंबर ऑफ रो का मल्टीप्लाई करा दीजिए। अगर हमसे पूछा होता टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर, कभी कभी पूछ लेता है, तो जितने आपके एक रो में कैपेसिटर हैं, तो हमारे कैपेसिटर कितने हैं 3, हमारी रो कितनी है 6, तो आंसर क्या आएगा 18। ये भी पूछ लेता है कभी कभी, तो ये याद रखना है, एक रो में नंबर ऑफ कैपेसिटर और आपकी ईच रो मल्टीप्लाई बाई बोथ। इरेज कर दे, इस साइड का नोट हो गया है। देखिए बेटे 20 नंबर में कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ 2 फैरड पैरेलल प्लेट। तो 2 फैरड किसकी यूनिट होती है, कैपेसिटेंस की। यहां से हमको पता चल जाएगा कि कैपेसिटेंस गिवन है। 20 नंबर कैपेसिटेंस इज गिवन 2 फैरड। फिर कह रहा है बेटा गिवन दैट द गैप बिटवीन प्लेट्स, तो गैप गिवन है स्मॉल d इज इक्वल 0.5 सेंटीमीटर। ब्रैकेट में लिखा हुआ है यू विल रियलाइज फ्रॉम योर आंसर why ordinary capacitors are in the range of microfarad or less. However, electrolytic capacitor do have a much larger capacitance 0.1 farad because of very minute separation between the conductors. आपको फाइंड करना है एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए आपको सीधा सा फॉर्मूला लगाना है, C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन D। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन एयर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू 1, क्योंकि हमें कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं दिया हुआ है, तो हम सभी फॉर्मूले में के जरूर लिखेंगे और वहाँ पे ए रिप्रेजेंट करा देंगे। एयर के लिए के की वैल्यू 1। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम डेली लिखते हैं ताकि आपको याद हो जाए, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आपकी डी सेंटीमीटर में है तो कन्वर्ट करेंगे 0.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। बाकी सब आपका एमकेएस में लिखा हुआ है, लिख दीजिए। सी की जगह दिया हुआ बेटा 2 इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट की प्लेस पे 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू ए मल्टीप्लाई बाई के, तो के की वैल्यू 1 डिवाइड बाई डी गिवन है आपका 0.5 इंटू 10 की पावर -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो इसके अपॉन में 1 सपोज कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 2 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाई 8.85 इंटू 10 की पावर -12। 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ये आ गया आपका। अब -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर माइनस, यहाँ पे 10 बचेगा। यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे, नीचे 2 पॉइंट है, ऊपर 1 पॉइंट है, तो 1 डेसिमल इंक्रीज हो जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगी, तो 1 यहाँ 10 की पावर -10 है तो ऊपर +10 होगा, और इसकी पावर कितनी है 1, तो 10 + 1 क्या हो जाएंगी 11 हो जाएंगी। तो हम यहाँ लिखेंगे और साथ में एक पावर और बढ़ेगी। ध्यान से देखो, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 10। यहाँ लिखेंगे हम A इज इक्वल 10 इंटू 10, एक 10 ये और एक 5 में 2 का मल्टीप्लाई किया इंटू 10 की पावर 10, पावर गई थी। इसके बाद बचा हमारे पास
885, ठीक, नीचे इससे एक जीरो उधार ले लीजिए तो आपका 1000 कंप्लीट हो जाएगा। 10 में 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे 100 जो डिवाइड नहीं होगा। ए इक्वल हम यहाँ लिखेंगे सीधे सीधे 1000 इंटू ये हो जाएगा 10 की पावर 9 डिवाइड बाई 885। आपको 885 से 1000 को डिवाइड करना है तो यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं फिर इरेज कर देंगे। 885 1000 कितने टाइम में जाएगा बेटा? 1 टाइम में जाएगा। तो आप यहाँ लिखिए 885, यहाँ पे 10 10 5 5, यहाँ पे हो जाएगा 9 981, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो ये आ गया आपका 115। यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए और यहाँ 0 इंक्रीज कर दीजिए। अब आप इसको डिवाइड करेंगे फिर 1 टाइम जाएगा, 2 टाइम जा नहीं सकता है तो यहाँ लिखिए 1.1। फिर से लिखेंगे 885, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 6। अब ये कितना हुआ है टोटल 11, 11 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 3। पॉइंट लगा है 0 इंक्रीज करेंगे। अब ये 2 टाइम 3 टाइम में से किसी एक में से डिवाइड होगा तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 हो जाना चाहिए। पहले 3 टाइम करके देखते हैं, नहीं पहले 4 टाइम करके देखते हैं, चेक करते हैं होगा कि नहीं। 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, 32 में 2 ऐड करेंगे 34। कहाँ पे? यहाँ। अच्छा इसने इसको अब तो 2 टाइम में जाएगा। 8 2 जा या 3 टाइम करके देखें, एक बार देख लेते हैं। 8 8 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 24 में 1 ऐड करेंगे 25, 3 8 जा 24, 25 में 24 में 2 ऐड करेंगे 26। नियर अबाउट हो जाएगा तो हम इसको लिख देते हैं नियर अबाउट में, क्योंकि 5 का ही डिफरेंस है तो हम यहाँ लिखेंगे कैंसिल करने के बाद a इज इक्वल 1.13 इंटू 10 की पावर 9 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या कह रहा है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज टू बी डिजाइंड विद अ वोल्टेज रेटिंग 1000 वोल्ट। 1000 वोल्ट गिवन है। V इज इक्वल 1000 वोल्ट। इसके बाद कह रहा है यूजिंग अ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3। आपके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 3। फिर कह रहा है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अबाउट 10 की पावर 7 वोल्ट पर मीटर। स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रिसिटी E इज इक्वल गिवन है 10 की पावर 7 वोल्ट अपॉन मीटर। हम यूनिट से भी जान जाते हैं कि हमारी किसकी क्वांटिटी दी हुई है। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था बेटा V इज इक्वल E इंटू डी। E इज इक्वल V बाई डी। V की यूनिट होती है वोल्ट और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। मतलब ये क्या दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। फिर आगे कह रहा है बेटा इसी के ब्रैकेट में लिखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल कैन टॉलरेट without starting to conduct electricity through partial ionization bracket close. For safety we should like the field never to exceed say 10% of the dielectric strength. तो हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ओनली 10% यूज करना है। ठीक, ये क्वेश्चन कह रहा है। फिर आगे कह रहा है व्हाट मिनिमम एरिया ऑफ द प्लेट्स इज रिक्वायर्ड टू हैव अ कैपेसिटेंस ऑफ 50 पिकोफैरड। हमें कैपेसिटेंस गिवन है 50 पिकोफैरड, तो इसे फैरड में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा 50 इंटू 10 की पावर -12 फैरड। ये सब कुछ गिवन है बेटा। आपको सी भी पता है और वोल्टेज भी गिवन है, तो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड से हम डी निकाल लेंगे और उसके बाद एरिया फाइंड करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब दिया है।
देखिए ध्यान से, इसको आप ब्रैकेट में इसी के बगल में लिखेंगे, जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के बगल में। इसकी यूनिट आपको हमेशा याद दिलाएगी कि ये वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे V इज इक्वल E इंटू डी, और इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का 10% निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमें यूज करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10%। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 10 की पावर 7 वोल्ट अपॉन मीटर इंटू 10% मीन्स 10 अपॉन 100। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 7 और 10 डिवाइड बाई 100। तो एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, दो जीरो इसके, यहाँ कितना बचेगा 10 की पावर 6, यानी वो हमारे पास वैल्यू है 10 की पावर 6 वोल्ट अपॉन मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास अब रियल वैल्यू ये है, इसको सपोज कर लेंगे ई डैश। ठीक, ये हमारी वैल्यू हो गई, तो हम यहाँ लिखेंगे ई डैश, हमें ई नहीं लिखना है। ठीक, ई डैश यूज का है हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें यहाँ से फाइंड करना है डी, तो डी इज इक्वल, ये हो जाएगा V अपॉन ई डैश। V की वैल्यू गिवन है 1000, E की वैल्यू हमें रखनी है 10 की पावर 6। D इज इक्वल 1000 डिवाइड बाई 10 की पावर 6। ये 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा। D इज इक्वल 1000 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर 3 ये, 10 की पावर माइनस 6 ये बचेगा 10 की पावर माइनस का 3। तो D इज इक्वल आ गया बेटा 10 की पावर माइनस 3 मीटर। ये आपका आ गया गैप बिटवीन टू प्लेट्स। अब आपको कैपेसिटेंस पता ही है, गैप पता चल गया, अब आप आराम से एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और लिखेंगे K, और K को रिप्रेजेंट करेंगे 1 इसके लिए, एयर के लिए, और ये ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। C की वैल्यू गिवन है 50 इंटू 10 की पावर माइनस 12। एप्सिलॉन नॉट हमने यहाँ लिखा है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। एरिया हमें फाइंड करना है, डाइलेक्ट्रिक को हमने 1 सपोज किया है, और D की वैल्यू आई है 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे 1 सपोज करेंगे, 50 इंटू 10 की पावर माइनस 12 डिवाइड बाई 8.85, 10 की पावर माइनस 12 ऊपर मल्टीप्लाई में 10 की पावर माइनस 3 इज इक्वल A। 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कोई चेंजमेंट नहीं, माइनस 12 कैंसिल हो गया। यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे, यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, 1000 दिख रहा है, 100 ये और इसका 0, 10 की पावर माइनस 3 कैंसिल, 1 2 3, 10 की पावर माइनस 3 कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पे बचा आपका बेटा एरिया इज इक्वल 5 अपॉन 885, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यहाँ पे 3 बचेगा, 5 7 जा 35, अगेन यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ आएगा 5 7 जा 35। एरिया इज इक्वल 1 अपॉन 177। अब ध्यान से देखिए, ऊपर जितने जीरो से मल्टीप्लाई कराएंगे उतने जीरो से नीचे भी मल्टीप्लाई करा दीजिए, सबसे अच्छा तरीका। तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया 1000 का, और नीचे भी मल्टीप्लाई किया 1000 का। अब ऊपर हो जाएगा 1000, नीचे का 1000 ऊपर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं 1000 डिवाइड बाई 177 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 3। आपको सिर्फ कैंसिल कराना है, आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में। बात समझ में आई? जहां पर डेसिमल में आंसर लाना हो और नीचे बड़ी वैल्यू हो, वहां पर आप अपने मन से मल्टीप्लाई करा लीजिए, जितने में आपको कंफर्टेबल डिवाइड करने के लिए मिल जाए। बात समझ में आई? नोट करिए।
डिवाइड कर लेंगे कि हम खुद करा दें? पूछ रहे अंशी? पक्का? क्योंकि घर में तो लगते नहीं है सवाल। श्रेया, लगाती हो घर में एक भी सवाल? डाई इलेक्ट्रिक तो हम लोगों ने रखा ही नहीं। के की वैल्यू एयर की वैल्यू 1 ही रख दी। अब दिखाई दिया। हाँ, हम लोगों को 3 रखना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल में गिवन है। मैंने इधर मुड़ के देखा नहीं और एयर में लगा डाला। चलो आप कर लेना वहाँ कैलकुलेशन जहाँ पे हमने 1 लिखा है ए के बगल में, वहाँ पे आप 3 रख के दोबारा कैलकुलेट कर लेंगे तो आपकी थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसको काटेंगे नहीं, इसको पूरा नोट कर लेंगे, ठीक? ये गलत नहीं है, ये एयर के लिए न्यूमेरिकल सही है। डाइलेक्ट्रिक हमारा 3 गिवन है तो हम एक बार और लगा लेंगे इस न्यूमेरिकल को यहाँ से, जहाँ से हमारा कैपेसिटेंस दिया हुआ है ये, यहाँ से फिर लगा लेंगे। बताइएगा जहाँ तक नोट हो गया। ये नोट हो गया इस साइड का?
ये नोट हो गया। आपका जो आंसर आ रहा है इसका वो सेंटीमीटर में आ रहा है, ठीक, और हमारा आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो ये बात दिमाग में नोट करके रखिएगा। और दूसरी चीज याद रखना है, यहाँ 3 नहीं रखा है। आप इसको एक बार फिर से कैलकुलेट करेंगे, के की वैल्यू जहां हमने 1 रखी वहां 3 रखेंगे, फिर आपका आंसर मीटर में आएगा। जब मीटर में आ जाए तो आपको 100 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपका आंसर सेंटीमीटर में आएगा। बात समझ में आई? नोट हो गया पीछे सबका? रेस कर दे। अब देखिए 21 और 22 एक साथ, 21 हो गया है 22। A cylindrical capacitor has 2 coaxial cylinders of length 15 सेंटीमीटर। आपकी लेंथ गिवन है बेटा 22 नंबर, लेंथ इज गिवन 15 सेंटीमीटर and radius R1 is given 1.5 centimeter and R2 is given 1.4 centimeter. The outer cylinder is earthed, मतलब उसको अर्थ से अटैच किया गया है, and the inner is given a charge of 3.5 microcoulomb. Determine the capacitance of the system. आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना है, एंड द पोटेंशियल ऑफ द इनर सिलेंडर, और आपको इनर सिलेंडर का पोटेंशियल फाइंड करना है। नेग्लेक्ट द इफेक्ट बेंडिंग ऑफ फील्ड लाइंस एंड द एंड्स। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को नेग्लेक्ट मानना है। तो अब आपको देखना है कि इन दोनों में से बड़ी रेडियस कौन सी है। तो बड़ी रेडियस कौन सी है, 1.5। तो आप इनर मानेंगे 1.4 को और आउटर मानेंगे इसको 1.5 को। रेडियस बाहर की ओर बड़ी होनी चाहिए, तो इसको हमने R2 मान लिया। अब हमने आपको सिलेंड्रिकल के लिए फॉर्मूला निकलवाया था, पर यूनिट लेंथ, ठीक। तो यहां पर हम पर यूनिट लेंथ कैपेसिटर के टर्म में ही मान लेंगे। C जनरली फॉर्मूला होता है C इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डाइलेक्ट्रिक, और हमारा अपॉन में आया था लॉग B अपॉन A बेस E, जो हमने फाइंड किया था। यहाँ पे हमने R2 R1 के टर्म में लिखा है, तो आपको ये दिमाग में हमेशा रखना है, आप R1 R2 किसी को भी मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। जैसे हमने पहले R1 लिखा फिर R2 लिखा, आपको ये नोटिस करना है कि आपकी बड़ी रेडियस कौन सी है। बड़ी रेडियस आपकी हमेशा ऊपर रहेगी और छोटी रेडियस हमेशा नीचे रहेगी। छोटी वाली रेडियस को इनर सपोज करना है और आउटर रेडियस को आपको बड़ी रेडियस सपोज करना है। अब उसने कहा है कि पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे आप L से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि कैपेसिटर की लेंथ दिया हुआ है। इसकी लेंथ दिया हुआ है कैपेसिटर की, साफ साफ न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है पहली लाइन में। A cylindrical capacitor has 2 axial cylinders of length
2 एक्सियल सिलेंडर्स ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो कैपेसिटर सिलेंडर की लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए सबको। ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये हो जाएगा 1.4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और चार्ज को 3.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक, ये बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर? आप इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए। इसको हमने उस दिन बताया था आपको कि अगर आपको log x बेस e इसको सॉल्व करना है, x की जगह कुछ भी हो सकता है, अपॉन में, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, किसी में भी हो सकता है। तो हमने आपको इसका फॉर्मूला बताया था 2.303 इंटू log x बेस 10। आपका जो x है वो अपनी जगह पे बना रहेगा, और यहाँ बेस 10 हो जाएगा, और यहाँ 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। हमारा इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम इसको रेडियस के टर्म में लिखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे R2 अपॉन R1, और इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अब इसको हम रेडियस के टर्म में लिखते हैं, log R2 अपॉन R1 बेस E कन्वर्ट हो गया 2.303 log R2 अपॉन R1, और ये कन्वर्ट हो गया बेस 10। क्लियर? R2 अपॉन R1 को फिर से अलग से सॉल्व कर लीजिए। R2 आपका गिवन है बेटा 1.5 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 1.4 इंटू 10⁻⁻2। यहाँ लिखिए R2 अपॉन R1 इज इक्वल -2 कैंसिल हो गया, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया। ठीक, ये बात समझ में आई नहीं आई? अब आप इसको चाहो तो सीधे सीधे log 15 बेस 10 की वैल्यू लिख सकते हो, log 15 बेस 10 की वैल्यू लिख सकते हैं, और नीचे log 14 बेस 10, जो बेस होगा उसी को लेकर के हम वैल्यू लिखेंगे। अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो ये लिखा हुआ है R2 अपॉन R1 इज इक्वल 15 अपॉन 14। कैंसिल करेंगे, वन टाइम में कैंसिल होगा, 1.14 वन 14, क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब 14 से 1 को डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो यहाँ पे 0 इंक्रीज करेंगे। अब क्या हो जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा। 14 से अभी भी 10 डिवाइड नहीं होगा, तो अब डेसिमल से 0 बढ़ाएंगे तो वहाँ हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब 14 से 100 को डिवाइड करोगे कितना आएगा? अरे भाई सीधे सीधे 14 से हमको 15 को डिवाइड करना है। 14 बन जा 14, यहाँ बचा 1, डेसिमल लगाया, 14 से 1 डिवाइड होगा नहीं, 0 लगा दिया। अब अभी भी नहीं डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे 0 लगाया, एक डेसिमल से 0 आया, और एक 0 लगाने से 0 आया। अब 14 से 100 को डिवाइड करोगे कितने टाइम में डिवाइड होगा? कितने टाइम में डिवाइड होगा? 7 टाइम में डिवाइड होगा। 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, यहाँ पे रिमेनिंग बचा 2। ठीक, एक डिजिट और निकालेंगे, डेसिमल लगा है, 0 बढ़ा देंगे, 14 बन जा 14, यहाँ पे भी आएगा 14। अब कितना बचेगा? 6, डेसिमल लगा है, 0 बढ़ाया, अब कितने टाइम जाएगा? 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 64, ज्यादा हो जाएगा। तो इतना जो हमने निकाला है बहुत है, क्योंकि ऑड नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आया? 1.7, इसके बाद क्या आया था? 1.071। ठीक, यही आया। अब यहाँ पे देखो, log 2 बेस 10 इसकी वैल्यू होती है 0.3010। log 2 बेस 10 की वैल्यू होती है 0.3010। अब आप 15 अपॉन 14 की प्लेस में क्या लिख रहे हो? 1.071। तो आप यहां लिखोगे log
ई और ये 15/14 2.303 ये कन्वर्ट हो जाएगा लॉग 1.071/10। ठीक, 2 की वैल्यू आ रही है 0.3010। अगर यहाँ पे 1 लिखा होता log 1/10, यहाँ पर 1 नहीं लिखा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्स इसकी आधी होगी। अप्रॉक्स इसकी आधी, नियर अबाउट अगर हम मान लें, यहाँ लिखा है 0.3010, तो अगर हम 0.1 की नहीं, log 1/10 की वैल्यू अगर लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.1505, जस्ट इसका हाफ 0.1505। तो नियर अबाउट हम इसके ले लेते हैं, समझ में आई? इसके नियर अबाउट में अगर हम लिखेंगे इसकी वैल्यू तो यहाँ आएगी 2.303 और यहाँ नियर अबाउट में मल्टीप्लाई कराएंगे हम 0.15 की जगह हम 6 ले लेते हैं, 0.5 थोड़ा सा ज्यादा तो हमने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, 0.1605 कर दिया। अब ये वैल्यू आपकी इसकी जगह प्लेस हो जाएगी। आपका ये पूरा कैलकुलेशन हमने नीचे शो कर दिया। अब आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है, इसको नहीं सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C अपॉन L की प्लेस में लिखेंगे 15 इंटू 10⁻², 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 1/9 इंटू 10⁹। यहाँ लिखिए 1/9 इंटू 10⁹। के की वैल्यू कुछ गिवन नहीं है, एयर के लिए 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या आएगा 2.303 मल्टीप्लाई बाई 0.1605, ये आया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इस साइड आ जाएगा, C इज इक्वल 1/9 को नीचे ले आइए इंटू 10⁹, 2.303.1605 इंटू 15 इंटू 10⁻²। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए अलग से, 2.303.1605, 5 3 जा 15, पूरा लिख दिया क्योंकि बगल में 0 है, 5 3 जा 15 का 5 1 कैरी, 5 2 जा 10 1 11 0 0 0 0 डबल क्रॉस, 6 3 जा 18, फिर से 18 लिख दिया, 6 3 जा 18 8 1 कैरी, यहाँ पे आएगा 6 2 जा 12, 12 में 1 ऐड करेंगे 13, ट्रिपल क्रॉस 3 0 3 2 5 1 8 5 13 3 4 5 6 8 1 9 और ये हो जाएगा 3 3 6 और ये 3 डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ये आ जाएगा यहाँ पे C इज इक्वल 15 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻9.369, केवल 3 डिजिट ले लीजिए बस स्टार्टिंग के, तो हमने 3 डिजिट ले लिया 0.369। यहाँ से हटा दीजिए 0, वो डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 0 इंक्रीज करेंगे। अब यहाँ से 3 0 इसके कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 10⁻6 बचेगा, 3 3 जा 9 3 5 जा 15। C इज इक्वल 5 डिवाइड बाई 3, ये ऊपर जाएगा 10⁻8 बनाएगा, अपॉन में 3 6 9, इससे इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। C इज इक्वल 5 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाई 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 18 में 2 ऐड करेंगे 20, 3 3 जा 9 2 11, 11 0 7, फिर से वही काम करेंगे, 0 ऊपर 3 0 दे दीजिए, नीचे 3 0 दे दीजिए, ये बन जाएगा C इज इक्वल
5,000 अपॉन 1107, नीचे 000 देंगे इंटू 10⁻⁸। ये ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे तो 8 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 11। यहाँ 5,000 डिवाइड बाई 1107 इंटू 10⁻11। ठीक है, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे 1107 और ये 5,000 कितने टाइम में जाएगा, 4 टाइम में तो जाएगा ही जाएगा। 4 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यहाँ 10 2 आ जाएगा 9 2 7 और यहाँ आएगा 9 4 5 4 4 कैंसिल, पॉइंट लगाएंगे 0 इंक्रीज करेंगे। अब 5 टाइम में चला जाएगा तो यहाँ पे लगाया हमने 5, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, बहुत है। C इज इक्वल 4.5 इंटू 10⁻11। 11 है, अगर आपको 12 करना है तो इस डेसिमल को हटा दीजिए, डेसिमल आप हटाएंगे नीचे 0 जाएगा, ये 0 ऊपर आके माइनस हो जाएगा 45 10⁻12। C इज इक्वल आ जाएगा 45 पिकोफैरड। इस तरह से आपको लॉग वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लॉग 10 तक की वैल्यू आती है। सबसे पहले यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखी हो आपको उसको कैंसिल कर लेना है। एक दिन में आपको log 10 तक की वैल्यू लिखा दूंगा, log 2 बेस 10, log 3 बेस 10, log 4 बेस 10, तो आप आसानी से ऐसे न्यूमेरिकल लगा लेंगे अप्रॉक्सीमेट। अगर डेसिमल में आपका यहाँ पर आ रहा है, जैसे हमारा आया 1.071, तो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेकर भी काम चला लेंगे। बात समझ में आई। और सिंबल लास्ट में जब आप लगाइएगा, देखिए हमसे भी गलती हो गई, यहाँ पे इक्वल का सिंबल नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, अप्रॉक्सीमेट का सिंबल लगाएंगे, क्योंकि हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कंफर्म पता है, क्योंकि लॉग अब हमारे सिस्टम से हट चुका है। लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल आते हैं तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 22 नंबर था, यहाँ पे आ रहा है 123 पिकोफैरड। इतना ज्यादा आंसर कैसे, नहीं, नोट करो आप। इन्होंने कैलकुलेशन कहाँ से डिस्टर्ब किया है बेटा, इन्होंने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डिस्टर्ब कर दी है बीच में। 8.85 को क्या कर दिया 8.35, वहीं से इनका कैलकुलेशन डिस्टर्ब हो गया। आप नोट करिए। हो गया क्या टाइम?
ये कहाँ चला गया सर सामने? वाला सामने नीचे 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 सबसे नीचे उल्टी बंद कर दी सही से। चल जाओ, हाँ चल जाओ, हाँ हाँ चल जाओ। ताजा पानी आता है। उसमें लकड़ी लकड़ी बनी। कपड़ा उठाने को 浪铁门灯。22 हो गया था ना, 23 बताना, 23 नंबर लिखिए। A parallel plate capacitor is filled with partially 6 millimeter thick dielectric material. Find out the capacitance of the capacitor of area of the plate 0.2 meter square. Separation between the plates is 0.1 millimeter and dielectric constant of the material is 5. If 10 microcoulomb charge is given, find the potential difference across the plates. Given डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस दी है जिसको आपने टी माना था, टी इज इक्वल 6 मिलीमीटर एंड एरिया इज गिवन 0.2 मीटर स्क्वायर, थिकनेस बिटवीन टू प्लेट्स 0.1 मीटर, dielectric constant K is equal 5 and charge is given 10 micro coulomb and find the potential difference. Potential difference तभी आएगा जब आपका कैपेसिटेंस आएगा। तो ये दिया हुआ है, सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए। हमने आपको बताया था दो प्लेट्स ले लीजिए, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच की डिस्टेंस को स्मॉल डी सपोज किया था। एरिया ऑफ प्लेट ए एंड ए इज ग्रेटर देन स्मॉल डी, ये कंडीशन बताई थी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है बेटा कोई डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया है जिसकी थिकनेस दी हुई है 6 मिलीमीटर, इसको आपने टी सपोज किया था और इसकी थिकनेस है 6 mm। तो इसको हम यहाँ चेंज कर लेंगे मीटर में, 6 × 10⁻³ मीटर। इसके अलावा सब कुछ
एमकेएस में लिखा हुआ है, चार्ज फिर माइक्रो कूलाम में है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। ये भी मीटर में गिवन है, ये भी मीटर में गिवन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई यूनिट होती नहीं है। तो इसके लिए हमने आपको एक डेरिवेशन बताया था, जिसमें लास्ट में आपका फॉर्मूला आया था C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d माइनस टी प्लस टी बाई के। अगर आपके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू यानी नंबर ऑफ प्लेट्स 1 हो, और अगर नंबर ऑफ प्लेट्स डाइलेक्ट्रिक की इंक्रीज हो जाएंगी तो उसके लिए भी बताया था हमने, d माइनस ब्रैकेट में T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश Tn तक, और प्लस के बाद T1 अपॉन K1 सबके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको इसमें वैल्यू रखना है और कैपेसिटेंस फाइंड करना है, और जैसे ही कैपेसिटेंस आ जाएगा Q इज इक्वल CV लगा देंगे, और वहां से V इज इक्वल Q अपॉन C से पोटेंशियल आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यू रखिए, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिर से लिख लीजिए, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। C इज इक्वल 8.85 इंटू 10⁻⁻12, एरिया गिवन है 0.2 डिवाइड बाई D की वैल्यू रखेंगे 0.1 माइनस T की वैल्यू रखेंगे 6 इंटू 10⁻³ प्लस T की वैल्यू 6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई K की वैल्यू है 5। ये आ गया, यहाँ से हमने इसकी वैल्यू रख दी। अब आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे 0.1 लिखा हुआ है, और अगर हम इसे पॉइंट में लिखेंगे 6 इंटू 10⁻³ यहाँ पे कितनी पावर है -3, डेसिमल में अगर लिखेंगे तो 0.006 ये लिखा जाएगा। अब 0.006 लिखने के बाद में इसको 0.1 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या आएगा भैया, अगर हम यहीं पे इसका कैलकुलेशन करें 0.1, जीरो अपने आप इंक्रीज कर लेंगे, 0.006 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ हो जाएगा 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया 4 आया, यहाँ 9 आएगा, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो ये हो जाएगा 0.094। एक वैल्यू हमको मिल गई, तो यहाँ आप लिखेंगे C इज इक्वल 8.85 इंटू 10⁻⁻12 0.2 डिवाइड बाई 0.094 प्लस, अब यहाँ भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं 0.006 डिवाइड बाई 5। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या सपोज कर लेंगे, 1 सपोज कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। C इज इक्वल 8.85 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई बाई 2, एलसीएम लिया हमने, एलसीएम आया हमारा 5, यहाँ आ जाएगा 5 1 जा 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें, 5 4 जा 20 की 0 कैरी आया 2, 5 9 जा 45 में 2 ऐड करेंगे 47 डेसिमल 3 डिजिट के बाद, प्लस 5 से 5 कैंसिल 0.006 दोनों को उठा के ऐड कर दीजिए 0.470 एंड 0.006 आ जाएगा 674.476। C इज इक्वल, यहाँ मल्टीप्लाई करा लीजिए 2 से 0.2 से, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 1 17, 2 8 जा 16 1 17। अब डेसिमल कितने हैं 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, ये आ जाएगा आपका डेसिमल इंटू 10⁻⁻12 डिवाइड बाई 0.476, और ये 5 ऊपर जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करा लीजिए इसमें। C इज इक्वल 5 0 0, 5 7 जा 35, 3 कैरी 5 7 जा 35, 3 ऐड किया 38, फिर से 3 कैरी 5 1 जा 5 5 3 8 डेसिमल 3 डिजिट के बाद में, फिर से वही आ गया, यही आएगा मल्टीप्लाई।
500, 5 7 जा 35, 5 8 जा 35, 3 ऐड करेंगे 38, 5 1 जा 5, 5 3 8 इंटू 10 की पावर -12 डिवाइड बाई 0.476। 3 डिजिट इसके पास भी, 3 डिजिट इसके पास भी, कैंसिल हो गया। C इज इक्वल 8850 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -12 डिवाइड बाई 476। फिर से यहाँ इसको डिवाइड करा लीजिए नीचे। 476 से डिवाइड करना है 8850 को, डिवाइड करेंगे 1 टाइम में जाएगा ये। अगर हम इसमें डिवाइड करें 2 टाइम में तो जाएगा नहीं। यहाँ लिखिए 1 जाएगा 476, 15 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया 9, यहाँ आ जाएगा 7700, यहाँ आएगा 844, 0 ऊपर से नीचे आ जाएगा। अब कितने टाइम में जाएगा ये? 4 9 जा 36, 9 टाइम में करके देखते हैं। 476 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 6 जा 36, 9 6 जा 54, 5 कैरी आया। 9 7 जा 63, 63 में 5 ऐड करेंगे 68, 6 कैरी। 9 4 जा 36, 36 में 6 ऐड करेंगे 42, ज़्यादा हो रहा है, ये जाएगा 8 टाइम में। अब कितना आएगा? 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 56 में 4 ऐड करेंगे 60, 8 4 जा 32 और कैरी कितना आया था? 5 नहीं 6, ये हो जाएगा 38। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा? 10 में से 8 जाएंगे 2, यहाँ बचेगा 8, यहाँ हो जाएगा 10, अगेन आएगा 2, 3 से 3 कैंसिल, पॉइंट लगाएंगे, 0 इंक्रीज करेंगे। अब कितने टाइम में जाएगा? 4 5 जा 25, 4 6 जा 24, 6 टाइम में चला जाएगा? नहीं जाएगा। 4 7 6 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 6 जा 36, 3 कैरी आया, 6 7 जा 42, 42 में 3 ऐड करेंगे 45, 4 कैरी, 6 4 जा 24, 24 में 3 ऐड किया 27, चला जाएगा। ये आ जाएगा 18.6। C इज इक्वल 18.6 इंटू 10 की पावर -12 फैरड। और अगर आपको इसको पिको फैरड में कन्वर्ट करना है तो C इज इक्वल 18.6 पिको फैरड, ये आपकी कैपेसिटी आ जाएगी। अब आपको बेटा चार्ज गिवन है तो चार्ज फॉर्मूला लगाएंगे आप, Q इज इक्वल CV, और ये कैलकुलेशन इरेज कर देंगे। पोटेंशियल चाहिए आपको, V इज इक्वल फॉर्मूला लगाइए Q बाई C, और C की ये वाली वैल्यू रखेंगे, और चार्ज को आपने माइक्रो कूलाम से कूलाम में कन्वर्ट कर लिया है। V इज इक्वल Q की जगह 10 इंटू 10 की पावर -6, कैपेसिटी की वैल्यू 8.6 इंटू 10 की पावर -12, ये -12 -6 को कैंसिल करेगा, यहाँ बचेगा -6, -6 ऊपर जाएगा, यहाँ से डेसिमल रिमूव करोगे, यहाँ 0 इंक्रीज कर जाएगा। V इज इक्वल 100 डिवाइड बाई 186 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6, वहाँ से एक 0 बाहर निकाल लीजिए आप। V इज इक्वल 1000 डिवाइड बाई 186 और यहाँ आ जाएगा 10 की पावर 5। अब आपको डिवाइड करना है 186 से 1000 को, कितने टाइम में जाएगा? 5 6 2 5 जा 10, 6 टाइम में करके देखते हैं। 186 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 8 जा 48 में 3 ऐड किया 51, 6 1 जा 6 5 11, ज़्यादा हो रहा है, 5 टाइम में जाएगा। 6 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, 40 में 3 ऐड करेंगे 43, 5 1 जा 5 और 5 में 4 ऐड किया 9, यहाँ जाएगा 0 7 9 9 0, पॉइंट लगाएंगे, 0 इंक्रीज करेंगे। अब कितने टाइम में जाएगा? 3 टाइम,
3 6 जा 18, 3 8 जा 24, 24 में 1 ऐड करेंगे 25, 3 1 जा 3 2 5, 4 टाइम में तो नहीं जाएगा। B इज इक्वल आपका आंसर आएगा 5.3 इंटू 10⁵ वोल्ट। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, नोट करिए। आज अर्चिता गायब हो गई। रोज शेड्यूल बनाए हो क्या तुम लोग? एक दिन ये नहीं आएंगे, एक दिन ये नहीं आएंगे। कल तुम कहाँ चली गई थी साक्षी? सो गए थे?
नहीं है, 26 हो गया था ना, 27 नंबर देखिए। फिगर 4.56 shows two identical capacitors C1 C2 each of 1.5 microfarad connected to a battery 2 volt. Initially switch S is closed. After some time S is left open and dielectric slabs of constant 5 are inserted to fill completely the space between the plates of two capacitors. How will be the charge and potential difference between the plates of capacitor be affected insertion of slab? आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है, उसमें दो डाइलेक्ट्रिक प्लेटें लगी हुई हैं। यहाँ बैटरी लगी हुई है, प्लस माइनस, फिर अगेन प्लस माइनस। इसका पोटेंशियल दिया है V इज इक्वल 2 वोल्ट। कैपेसिटर C1 लगा हुआ है, इसके बाद यहाँ पे की लगी हुई है, यहाँ पे एक और कैपेसिटर लगा है C2 और ये आपकी की है। अगर ये क्लोज होगी तो करंट का यानी चार्ज का फ्लो होगा, अगर क्लोज नहीं है मतलब वही है, दोनों बार क्लोज है तो चार्ज फ्लो करेगा, अगर ओपन है तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो दोनों आपको कंडीशन समझनी है। सबसे पहले इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है 1.5 माइक्रोफैरड और इसका भी कैपेसिटेंस सेम एज इट इज 1.5 माइक्रोफैरड। अब जब आप इस की को यहाँ से ऐसे करके ऐसे ऐड कर देंगे तो चार्ज का फ्लो होने लगेगा। अब ये सर्किट आपका कंप्लीट हो गया। जैसे ही ये सर्किट आपका कंप्लीट होगा, अब आपको ये जंक्शन यहाँ से रब करने हैं, चाहे यहाँ से कर दीजिए चाहे यहीं से, दोनों को कर देते हैं। अब ये वायर अलग है और ये वायर अलग है, दोनों किस में जाएंगे? पैरेलल में जाएंगे। तो पैरेलल में हमको इन दोनों को ऐड कर लेना है और वोल्टेज हमारा गिवन है, टोटल चार्ज हमको मिल जाएगा। अब वो कह रहा है, ये तो पहली कंडीशन हो गई, ठीक। इसके बाद दूसरी कंडीशन कह रहा है, इसको भैया फिर से ओपन कर दो। जब फिर से ओपन कर दोगे और कह रहा है इसको इतना ज्यादा ओपन कर दो कि इसके बीच में पूरे में डाइलेक्ट्रिक भर दो, यानी एक भी स्पेस नहीं होना चाहिए। और डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू दी है सेकंड केस में, पहले ये ओपन है, फिर दोबारा डायग्राम बनाना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और कैपेसिटर एज इट इज लगे रहेंगे C1। इसको ओपन करना है, इसके बाद में यहाँ डाइलेक्ट्रिक फिल कर देना है इस पूरे में, और इसकी वैल्यू गिवन है 5। बात समझ में आई? पूरे में डाइलेक्ट्रिक फिल कर देना, फिर इसको क्लोज कर देना, क्योंकि बिना इसको ओपन किए डाइलेक्ट्रिक फिल नहीं कर पाएंगे। तो पहले इस कंडीशन को सॉल्व करना है, फिर इस कंडीशन को सॉल्व करना है। वोल्टेज कितना है दोनों केस में यहाँ पे हमने लिख दिया है, क्योंकि हमको इतना मिल रहा है। उसने कहा है डाइलेक्ट्रिक फिल करने के बाद इसके वोल्टेज में क्या कोई चेंजमेंट होगा, और अगर होगा तो आपको दिखाना है। तो ध्यान से देखिए, हमने आपको बताया ये दोनों किस में सॉल्व होंगे? पैरेलल में सॉल्व होंगे। तो C इज इक्वल, पहली कंडीशन C1 प्लस C2, C इज इक्वल C1 की वैल्यू 1.5 प्लस 1.5, दोनों ऐड होके बन जाएंगे 3, और ये आ जाएगा माइक्रो फैरड में, ठीक है। ये आ गया आपका। इसके बाद में आपको टोटल चार्ज फाइंड करना है, वोल्टेज आपको गिवन है, फॉर्मूला C इज इक्वल Q अपॉन V, तो हो जाएगा Q इज इक्वल CV। C आपका आया है 3 माइक्रोफैरड यानी 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फैरड। Q इज इक्वल 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6, वोल्टेज गिवन है 2, 3 2 जा 6, यह आएगा 6 माइक्रो कूलम। यानी आपके इस कैपेसिटर के पास में चार्ज कितना है ओवरऑल? 6 माइक्रो कूलम। तो अगर एक की बात करें तो एक के पास कितना होगा? 3 माइक्रो कूलम, 3 माइक्रो कूलम।
ओवरऑल चार्ज कितना आया है 6 माइक्रोकूलम। बात समझ में आई? आपने चार्ज की वैल्यू कैपेसिटर की हेल्प से फाइंड की है। सिंगल सिंगल चार्ज पूछेगा तो दोनों कैपेसिटर सेम है, तो दोनों कैपेसिटर सेम है इसलिए आधा आधा चार्ज डिवाइड हो जाएगा 3 माइक्रोकूलम। और इसके पास चार्ज पूछे तो Q1 मान लेना है 3 माइक्रोकूलम, इसके पास चार्ज पूछे तो Q2 मान लेना है अगेन 3 माइक्रोकूलम। ओवरऑल चार्ज कितना है 6 माइक्रोकूलम। ये बात समझ में आ गई? नहीं आई? अब आगे देखो भैया, कह रहा है कि इसको ओपन करके इसके बीच में विदाउट एनी स्पेस, मतलब इतना बड़ा डाइलेक्ट्रिक है कि इसमें कोई स्पेस नहीं है और इसकी वैल्यू 5 दी है। तो अगेन आपको इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करना है। पैरेलल में सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका मीडियम में कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो आपने ऑलरेडी इन दोनों को सॉल्व करके रखा हुआ है। कितना आया है 3 माइक्रोफैरड। सी एम इज इक्वल के सी नॉट। इसकी जो कैपेसिटी हमने फाइंड की थी ये एयर के लिए थी। अब एयर में इसी को सी नॉट लिखा जाता है। यहाँ अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करा दें सी एम इज इक्वल के की वैल्यू 5 गिवन है, ये आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड। इससे इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 5 3 जा 15 माइक्रोफैरड, ये आ गया। अब ये टोटल कैपेसिटी है इन दोनों की। बात समझ में आई? क्योंकि हमने सॉल्व करके लिखा हुआ है। अगर एक की कैपेसिटी पूछे, इसकी डाइलेक्ट्रिक के पहले कैपेसिटी थी 1.5 माइक्रोफैरड, इसकी भी 1.5 माइक्रोफैरड थी। अगर हम सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई कराएं तो 15 5 जा 75 यानी 7.5 माइक्रोफैरड। इसमें भी सेपरेट मल्टीप्लाई कराएं तो 7.5 माइक्रोफैरड। अगर अलग अलग नई कैपेसिटी पूछ रहा है तो C1 डैश और C2 डैश की वैल्यू भी क्या होगी सेम होगी। ओवरऑल कैपेसिटी कितनी है 15 माइक्रोफैरड। सिंगल सिंगल कितनी है 7.5 7.5, दोनों को ऐड करोगे C1 प्लस C2 फिर से क्या आ जाएगा। ये बात नहीं समझ में आई? ये बात समझ में आई कि नहीं कि सेपरेट सेपरेट इनके पास आधी आधी कैपेसिटी, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में है और पैरेलल में कैपेसिटी सीधे सीधे ऐड हो जाती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब आप निकालोगे इसका चार्ज। टोटल कैपेसिटी आपके पास इतनी है, अब आपको टोटल चार्ज चाहिए तो टोटल चार्ज निकालेंगे। अगेन सेम फॉर्मूला C और इसको मानेंगे CM अपॉन V। तो टोटल चार्ज आएगा आपका, टोटल चार्ज Q इज इक्वल CM V। पोटेंशियल पहले कितना दिया है 2 वोल्टेज। यहाँ पे दोनों की कैपेसिटी है 15, तो 15 में Q इज इक्वल 15 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 2। इसका मल्टीप्लाई कराया 15 2 जा 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। यह आ जाएगा आपका टोटल चार्ज। अब आपको टोटल कैपेसिटी पता है, टोटल चार्ज पता है, पोटेंशियल निकालिए जरा। V इज इक्वल Q अपॉन C। C की जगह लिखेंगे CM। V इज इक्वल Q की वैल्यू आई है 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6। नई कैपेसिटी है आपकी 15 इंटू 10 की पावर माइनस 6। माइनस 6 कैंसिल हो गया, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। हमारे पोटेंशियल में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हैं। अगर ये सीरीज में होते तो पोटेंशियल चेंज हो जाता। बात समझ में आई? तो हमारी टोटल चार्ज की वैल्यू आई थी फर्स्ट केस में 6 माइक्रोकूलम, सेपरेट सेपरेट चार्ज था 3 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम। यहाँ पे टोटल कैपेसिटी आई 15 माइक्रोफैरड। उसके बाद टोटल चार्ज हमने निकाला 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6 माइक्रोकूलम। तो अगर सेपरेट सेपरेट चार्ज पूछता है तो इसके पास 15 माइक्रोकूलम होगा, इसके पास 15 माइक्रोकूलम होगा। पोटेंशियल हमसे पूछा था चेंज होगा या नहीं, तो हमने आपको निकाल के दिखाया। V इज इक्वल लास्ट वाला टोटल चार्ज रखा और लास्ट वाली कैपेसिटी रखी, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। बात समझ में आई? नोट करिए।
आज तो पूजा भी गायब है। नोट हो गया बेटा। नेक्स्ट देखिए,
29 नंबर, नहीं 28. A capacitor is connected across the battery of V volt. The charge is stored in it is 30 microcoulomb, 300 microcoulomb. When potential across the capacitor is reduced by 100 volt, the charge is stored in it becomes 100 microcoulomb. Calculate the potential V and the capacitance. What will be the charge stored in the capacitor if voltage applied in increased by 100 volt? आपको अलग अलग फॉर्म में चार्ज दिए हैं और कह रहा है, ध्यान से देखिए, इसका गिवन बहुत इंपॉर्टेंट है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जब आपके पास पोटेंशियल V था, तब आपके पास, तो हम इसको V1 सपोज कर लेंगे. V1 की वैल्यू V गिवन है, उसने उसकी वैल्यू नहीं दी, बट कहा है कि जब आपके पास पोटेंशियल V था तो आपका चार्ज था Q1 इज इक्वल 300 माइक्रोकूलम, ये गिवन है. उसके बाद में उसका दूसरा स्टेटमेंट है, कह रहा है कि व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय 100 वोल्ट. पहले V था और अब आपका पोटेंशियल रिड्यूस हो गया, तो V2 उसने कहा है कि V में से 100 को रिड्यूस कर दो, इतना. और कह रहा है कि इस केस में आपका जो चार्ज है, द चार्ज स्टोर इन इट बिकम्स 100 माइक्रोकूलम. अब आपका चार्ज हो जाता है 100 माइक्रोकूलम. पोटेंशियल V, चार्ज ये, पोटेंशियल ये, चार्ज ये, दो केस आपको मिल गए. तो आपके पास फॉर्मूला है कौन सा, Q इज इक्वल CV. उसने कैपेसिटेंस की कोई चर्चा की नहीं है, तो कैपेसिटेंस को एज अ कांस्टेंट, वैसे भी ये कांस्टेंट ही होता है अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन. भाई जब तक चार्ज नहीं होगा किसी बॉडी में तब तक कैपेसिटेंस होगा ही नहीं, उसकी कैपेसिटी को नापा ही नहीं जा सकता कि ये कितना चार्ज स्टोर करके रख सकती है. तो C को एज कांस्टेंट बिहेव कराएंगे. अब एक बार फॉर्मूला लेंगे, Q1 इज इक्वल C V1, और दूसरा फॉर्मूला लेंगे Q2 इज इक्वल C V2. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड. इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकेंड. Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल C V1 अपॉन C V2. C से C कैंसिल हो गया. आपको चार्ज लेना है, Q1 का चार्ज कितना है 300 माइक्रोकूलम को चेंज किया 10 की पावर माइनस 6 डिवाइड बाई Q2 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इज इक्वल V1 का पोटेंशियल V है, एज इट इज लिख दीजिए. V2 का पोटेंशियल V माइनस 100 है, एज इट इज लिख दीजिए. कोई प्रॉब्लम इसमें? 10 की पावर माइनस 6 0 0 0 0 सारे कैंसिल हो गए. हमारे पास बचा है 3/1 इज इक्वल V अपॉन V माइनस 100. क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 3V माइनस 300, यहाँ आ जाएगा V. ये इधर आएगा, ये उस साइड में जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर आके निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 3V माइनस V, और ये आ जाएगा 300. इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया 2V इज इक्वल 300. V की वैल्यू आ गई 150. ये बात समझ में आई? नहीं आई? तो बेटा V की वैल्यू कितनी है 150 है. बात समझ में आई? नहीं आई अभी. आपकी जो रिमेनिंग पार्ट यानी जो ओवरऑल आपको यहाँ पे पोटेंशियल यूज करने को मिल रहा था V1 में, वो कितना था 150 था, और 150 के अकॉर्डिंग आपके पास चार्ज कितना था 150 के अकॉर्डिंग आपके पास चार्ज कितना था 300 माइक्रोकूलम. तो आप इसकी और इसकी हेल्प से जो आपका कांस्टेंट था उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? आपको ये इक्वेशन तो पता है ना, Q1 इज इक्वल C V1. आप एक एक को उठा लीजिए. यहाँ आप लिखेंगे Q1 इज इक्वल C V1, और हमने यहाँ लिख दिया Q2 इज इक्वल
CV2। अगर आप Q1 की हेल्प लेते हैं तो यहाँ लिखेंगे 300 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इज इक्वल C, और V1 आपका कितना आया है 150, यही तो आपका V1 है। V1 आपने V सपोज किया था, तो इससे ये जाएगा डिवाइड में, तो C इज इक्वल 300 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइड बाई 150, 150 डिवाइड बाई आ जाएगा 2। C इज इक्वल, ये माइनस 6 माइक्रोफैरड बनाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, C आपका आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। ये बात समझ में आई नहीं आई? V2 आपका कितना गिवन है बेटा, V माइनस 100, और V आपका आया कितना है 150, 150 में से माइनस 100 करोगे तो एक्चुअल V2 कितना आएगा 50 आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं V2 इज इक्वल V माइनस 100, V2 इज इक्वल 150 माइनस 100, V2 इज इक्वल आ गया आपका 50 वोल्ट। अब आप अपनी सेकंड कंडीशन से मैच करा लीजिए कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। Q2 की जगह आप लिखोगे 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6 C, और V2 की प्लेस में आपने लिखा 50, फिर से डिवाइड में आएगा C इज इक्वल 100 डिवाइड बाई 50 इंटू 10 की पावर माइनस 6, कैंसिल किया 2 आया, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 आ गया अगेन 2 माइक्रोफैरड। तो ध्यान से देखो ये और ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, है कांस्टेंट की तरह, ना तो फर्स्ट केस में चेंज हो रहा है और ना सेकंड केस में चेंज हो रहा है। हमने आपको इसीलिए दोनों से निकाल के दिखा दिया। ये बात समझ में आई नहीं आई? अब इसके एक्सेप्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है, कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल V एंड कैपेसिटेंस। हमने V भी फाइंड कर लिया और कैपेसिटेंस भी फाइंड कर लिया। फिर उसके बाद कह रहा व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर इफ वोल्टेज अप्लाइड इज इंक्रीज्ड बाय 100 वोल्ट। यदि आपका कैपेसिटर का वोल्टेज 100 वोल्ट इंक्रीज कर दिया जाए तो बेटा हमारे पास टोटल वोल्टेज कितना है 150, इसमें अगर 100 इंक्रीज करोगे कितना हो जाएगा 250, तो 250 के अकॉर्डिंग अब आपको चार्ज निकालना है। उसने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 वोल्टेज increased in the कैपेसिटर, आपको कैपेसिटर में इतना वोल्ट इंक्रीज कर देना है। तो हमारे पास V की वैल्यू ऑलरेडी है 150 और V डैश इक्वल कह रहा है कि 150 में 100 वोल्ट इंक्रीज कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 250 वोल्ट हो जाएगा, और हमारे कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफैरड है, तो C इज इक्वल यहाँ 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फैरड। हमें टोटल चार्ज चाहिए तो Q इज इक्वल C V डैश, Q इज इक्वल C की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू यहाँ पे आएगा 250, हमारे पास ओवरऑल चार्ज हो जाएगा 500 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो हम इसे लिख सकते हैं 500 माइक्रोकूलम। नहीं आया समझ में? उसने जैसी जैसी कंडीशन कही